ಕೆಜಿಎಫ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್. So KGF Kings, after won the toss, they elected to field first. And the first match of the day 3 of this prestigious cricket tournament, KPL, KUDLA Premier League Season 10 2026 is now coming up live exclusively right in front of you between KGF Kings versus New Star Chokabit. I request the players to please start the match as soon as possible. The match starts within just a short while.
So good morning viewers and welcome to the third and the final day of this prestigious cricket tournament, KUDLA Premier League KPL Season 10 2026. And the first match of the day 3 and the final day of this cricket tournament is now going to start between New Star Chocobato versus KGF Kings. And news is here from the center that the captain of KGF Kings, after won the toss, he elected to field first, and because of that their fielders are now spreading out on the field, and the openers for New Star New Star Chocobato are now comes out to the middle. Rashid Baba and Ravi Salian Padayur, the openers, are now comes out to the middle, and the bowler starts the fresh proceedings is Riaz. And we are just waiting for the first ball of the day 3 of this prestigious cricket tournament, KPL KUDLA Premier League Season 10 2026. So the first ball of the day 3 of this prestigious cricket tournament is now coming up. Riaz to Ravi Salian Padayur. पहली गेंद, तीसरे दिन की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज रियाज तैयार, और रवि सालियान पडयूर और राशिद बाबा दोनों आरंभिक बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद, और पहली गेंद लेकर रियाज इस वक्त तैयार. द फर्स्ट बॉल ऑफ द डे इज नाउ कमिंग अप. रियाज टू रवि सालियान पडयूर. पहली गेंद हल्के से गेंद को ढकेल दिया कवर पॉइंट की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, एक रन यहां पर प्राप्त करने में सफल, और एक रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. न्यू स्टार चोकोबेटो का एक रन बिना किसी नुकसान के. आज इस श्रृंखला का तीसरा और अंतिम दिन, थर्ड एंड फाइनल डे ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट KPL सीजन 10 2026 इज नाउ स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट वाले गो. और इस बीच रियाज दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त रशीद बाबा जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और रियाज की यह गेंद इस बार रशीद बाबा का स्ट्रोक, और इस बार कैच लपकने में असफल रहे. जीतोड़ कोशिश जरूर की थी इस वक्त, लंगोन के फील्डर ने अपने आगे की ओर आते हुए गेंद तक पहुंचना चाहा, पहुंच भी गए, लेकिन गेंद को लपकने में यहाँ पर असफल. और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. इट्स 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी इस बार शॉट थर्ड मैन फील्डर अरशद का एफर्ट, लेकिन गेंद को लपकने में असफल, और 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 बेहतर गेंदें इस वक्त गेंदबाज रियाज फेंक चुके हैं, और रशीद बाबा एक बार फिर से स्ट्राइक पर मौजूद, सामना करने के लिए तैयार रियाज की गेंदों का. रियाज गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद रशीद बाबा के लिए ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ दिया इस वक्त, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में, मिड विकेट की दिशा में कहना पड़ेगा, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका. 1 रन एडेड टू द टोटल, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 4 ऑन द बोर्ड, yet to lose any wicket in the open number first in progress. और गेंदबाज रियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. रवि पडयूर जो कि सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. रियाज की गेंद रवि के लिए, यह गेंद उछालना चाहा, गेंद हवे में जरूर, लेकिन विकेट कीपर इरशाद गेंद तक नहीं पहुंच पाए. और जहां तक सवाल है, रशीद बाबा नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज काफी आगे आ चुके थे, एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है इस वक्त कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. रियाज अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त,
सीधे गेंद पहुंचे विकेट कीपर इरशाद के हाथों में, रन्स नहीं मिला। सफल ओवर की समाप्ति रियाज की और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त न्यू स्टार चौकोबेट्टू 4 रन बिना किसी नुकसान पर। It's 4 without loss after completion of first over for New Star Chocobetto after being losing the toss and put it to bat by KGF Kings in the match number 1 of the day 3 of this prestigious cricket tournament. They made a steady start, in fact, 4 without loss after the completion of first over. Planet Air STC will take over White Horse in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage for the signature procedure in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏರ್ STC ಹಾಗೂ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का अरशद बजाल इस वक्त सामना करते हुए, अरशद बजाल गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त, और रशीद बाबा सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ, और 4 खिलाड़ी इस वक्त, ऐसा कहना पड़ेगा 7 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। पावर प्ले के अंतर्गत सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। रशीद बाबा काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अरशद बजाल की गेंदों का। और अरशद बजाल बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज रशीद बाबा के लिए अपने जूते के फीते को बांधने के बाद अरशद बजाल ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज रशीद बाबा के लिए यह गेंद, रशीद बाबा का स्ट्रोक ठीक तरह से नहीं, बस लिमिट ऑन पर गेंद पहुंचे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। ऐसा कहना पड़ेगा मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया था। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन इस वक्त मिलेंगे 1। काफ़ी करारा प्रहार करना चाहता रशीद बाबा ने, लेकिन मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन जोखिम भरा 1 रन सुरक्षित हम पूर्ण करते हुए, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 5 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और इस बीच अरशद बजाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रवि पटाई और जो के सामना करते हुए इस वक्त तैयार, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए अरशद बजाल, और इस बीच तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, और लेग बाय का इशारा अंतिम अक्षर में। लेग बिफोर विकेट की अपील जरूर की थी अरशद बजाल ने, लेकिन अंपायर ने इस वक्त नकार दिया। और जहां तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त मिलेंगे 1। सो 6 विदाउट लॉस, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार गुड डिलीवरी दिस टाइम, pretty slow one comparing to the previous delivery, get some extra bounce at the last moment, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ गेंदबाज अरशद बजाल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रशीद बाबा के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए अरशद, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ रशीद बाबा ने, और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। काफी देर से रशीद बाबा ऐसे स्ट्रोक्स की कोशिश में थे, इस बार सफलता प्राप्त करते हुए। यहां पर देखिए किस तरीके से उछाला था, मिड लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछाल दिया, इनफील्ड क्लियर करते हुए, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए, इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के न्यू स्टार चौकोबेट्टू, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। और अरशद बजाल फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और चौका प्रदान करने के बाद देखना है कि अरशद बजाल अपनी अगली गेंद पर किस तरीके का कमबैक यहाँ पर करते हैं। तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग के नजरिए का, 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। शॉर्ट थर्ड मैन कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, और इस वक्त मौजूद ड्राइव किया खूबसूरत स्ट्रोक वाइड लंगोन के दिशा में, लेकिन वहां पर शायद फील्डर मौजूद है। 1 रन 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। प्रोटेक्शन मौजूद है इस वक्त वाइड लंगोन और डीप मिड विकेट के दरमियान, और इस बीच 2 रनों का इजाफा हो चुका है। Couple of runs added to the total, and with that couple run, the scoreboard moving up to 12 on the board, yet to lose a wicket. Match is now progressing here between New Star Chocobetto versus KGF Kings. और इस बीच अरशद बजाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ
राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी मच स्ट्रेट लाइन और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके हैं अरशद बजाल। कुल मिलाकर इस ओवर में रन्स बने 8 रन स्कोर्ड फ्रॉम दिस ओवर। Pretty good one in New Star Chocobitu's point of view game student. And 2 gone after 2 overs. New Star Chocobitu are 12 for none. This is the match number 1 of the day 3 and the final day of this prestigious cricket tournament is now started just short while ago. KPL KUDLA Premier League Season 10 2026 under the great leadership of Mr. Tilak Guru is now progressing along nicely in this lots of underarm cricket UCG URWA cricket ground. और निश्चित रूप से एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त दिया जा रहा है जनाब इरफान बेद्रा इनके सारथ्य में। और 2 सफल दिनों के बाद आफ्टर द completion of 2 successful days, the tournament is now moving towards to the third and a final day of this prestigious cricket tournament. और जहाँ तक सवाल है तीसरे दिन का पहला मैच इस वक्त प्रगति पर 2 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है। पावर प्ले खत्म हो चुका है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन टेकन ऑफ और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से अमन इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए और सपना इस वक्त करने के लिए तैयार रवि सालिया न पटाई और नॉन स्ट्राइकर पर रशीद बाबा मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त अमन गेंदबाजी शुरू करते हुए 4 खिलाड़ी अब 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। मिड विकेट शॉर्ट फाइन लेग गली और मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान एक फील्डर तैनात 20 गज के दायरे के अंदर। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद शॉर्ट टर्न की दिशा में और वाइड का इशारा अंपायर का। हालांकि रवि ने 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए थे रन के लिए लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए देखा कि गेंद को फील्ड किया जा चुका है। शॉर्ट थर्ड बैन फील्डर अरशद द्वारा कुछ मिसफील्ड के बाद और कोई क्षति नहीं बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार अमन ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई 2 कंसेक्यूटिव वाइड्स और निश्चित रूप से गेंदबाज अमन अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त प्राप्त करने की कोशिश करते हुए लगातार 2 वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं। और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 14 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट वाले गो इन द इनिंग्स। और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर 1+1 इन फैक्ट नाउ 1+1 2 runs added to the total. Really struggling out in the middle for searching his right length and line in this situation by the bowler Aman. और 3 वाइड लगातार इस वक्त फेंक चुके हैं। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 16 विदाउट लॉस विद दैट कपल रन इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। अब टीम के अन्य खिलाड़ी उन्हें कुछ समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए। और इस बीच देखना यह है कि अगली गेंद पर अमन किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। रशीद बाबा सामना करने के लिए इस वक्त तैयार और अमन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट KPL कुडला प्रीमियर लीग सीजन 10 2026 के अंतर्गत। और अमन इस बार रशीद बाबा के लिए ये एक बार फिर से दिस टाइम इट्स गॉन फाइन, इट्स गॉन वेरी फाइन दिस टाइम एंड इज जस्ट गॉट द बाउंड्री। इन फैक्ट द टीम गॉट द बाउंड्री so 5 I think so just we have to wait and see। और इस वक्त वाइड या नो बॉल है ये फरकने के लिए इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग किया गया है। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी गेंदबाज अमन ने। और देखना यह है कि यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं नो बॉल या फिर वाइड। तो इस वक्त जहाँ तक सवाल है रिप्ले पर दिखाया जा रहा है और इस बीच वाइड का इशारा। नाउ वाइड डिक्लेयर्ड बाय द थर्ड अंपायर सो 5 वाइड्स एडेड टू द टोटल। 5 वाइड उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन रन पंचक के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 21 विदाउट लॉस। अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए इस वक्त टीम के खिलाड़ी और एक बार फिर से अमन उनको गेंदबाजी से इस वक्त हटा दिया गया है शायद और गेंदबाज नासिर के हाथों में गेंदबाजी इस वक्त सौंपी गई है। तो इस वक्त
अंपायर कुछ पूछताछ करने के लिए इस वक्त प्लेयर्स डकआउट की ओर बढ़ते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज को बदला नहीं जा सकता है इस श्रृंखला के नियमानुसार। तो जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, अगर गेंदबाज चोटिल इंजर्ड होता है तो ही गेंदबाज को बदल दिया जाएगा, वरना किसी भी तौर पर गेंदबाज को बदलने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त, अमन एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और रशीद बाबा सामना करने के लिए तैयार। बिना किसी सही गेंद फेंके हुए इस ओवर में अमन 9 रन प्रदान कर चुके हैं। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त, अपनी पहली सही गेंद की तलाश में इस वक्त गेंदबाज अमन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, रशीद बाबा सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस, lofted, but that I think so it might be clear, it's saved and taken by the another fielder. So Rashid Baba departs, कॉम्बिनेशन कैच के तहत ये विकेट यहां पर गिर चुका है। और जैसे ही फील्डर ने भापा कि लॉन्गॉन के फील्डर ने कैच को इस वक्त ऊपर की ओर उछाला, गेंद को ऊपर की ओर उछाला छक्का बचाने के प्रयास में, और दूसरे फील्डर जो थे उन्होंने दौड़ कर आकर इस कैच को लपक लिया। रियाज और रियाज, तो रियाज अन्नम जिन्होंने कैच को उछाला था, और दूसरे रियाज जो कि गेंद को यहां पर लपकने में सफल दौड़ कर आते हुए, और पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है। 21 for 1, रशीद बाबा डिपार्ट्स। So Rizwan is now comes out to the middle as a number 3 batsman, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार अमन की गेंद को। तो 3 वाइड लगातार फेंकने के बाद आखिरकार एक ढीली गेंद फेंकी थी इस वक्त अमन ने, लेकिन सौभाग्यवशात उनको ये विकेट यहाँ पर इस ढीली गेंद पर प्राप्त हो चुका है। और इस बीच रिजवान नए बल्लेबाज सामना करते हुए, लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक रिजवान तैयार नहीं थे, और इस वक्त एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी के मार्ग पर जाते हुए, और गेंदबाज अमन इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाज रिजवान सामना करने के लिए तैयार। लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वही किस्सा यहाँ पर दोहराते हुए अमन लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी और वाइड का इशारा। इस बीच अरशद बजाल कुछ हद तक गुस्से में नजर आते हुए इस वक्त, इसको एंग्री इनफैक्ट, और इस वक्त कुछ समझाते हुए, कुछ जोर से उनको कुछ डांटते हुए कि इस वक्त किस सही लेंथ और लाइन के साथ उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए, ये इस वक्त बताते हैं कुछ जोर से। और जहां तक सवाल है इस वक्त अमन इस वक्त दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे रिजवान के लिए, और इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, गेन वाइड, आप ओवर द विकेट फेंको या फिर राउंड द विकेट, वही किस्सा यहाँ पर नजर आता हुआ। और जहां तक सवाल है स्कोर का, तो स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बार बार इस वक्त गेंदबाज अमन को दूसरे खिलाड़ी समझाते हुए सही लेंथ और लाइन के बारे में, और जहां तक सवाल है इस वक्त देखना है कि अगली गेंद पर गेंदबाज अमन किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं। और रिजवान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, अमन अपनी सही गेंद की तलाश में इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी, इस वक्त हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त स्टंप्स को कवर करने के बाद, और जब तक गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 24 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। रवि पडायूर इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा न्यू स्टार चौका बिट्टू एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त, और
इस वक्त अमन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची गली पर, 1 रन का इजाफा। अश्विन तमन्ना जब तक गेंद को फील्ड करें, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 25 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और 13 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं। 13 रन ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर, इन दिस इनकम्प्लीटेड ओवर। 3 गेंदे सिर्फ फेंके जा चुके हैं, 3 सही गेंदे। लेग स्टंप से बाहर, डिफ्लेक्टेड, एंड दिस टाइम आई थिंक सो ही फाइंड्स द गैप एज वेल। नो, इन फैक्ट फील्डर आउट देयर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। सिर्फ 1 रन ना, और ये भी गेंद वाइड होता अगर बल्लेबाज अपना बल्ला नहीं अड़ाते तो इस गेंद पर। तो जहां तक सवाल है, इस वक्त स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक लंबा ओवर इस वक्त अमन का यहां पर प्रगति पर। और रवि पड्डयूर इस वक्त सामना करते हुए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से नहीं, अंदर की ओर रोका गया है बेहतरीन तरीके से। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय द फील्डर एट डीप मिड विकेट। जो फील्डर वहां पर मौजूद है नासिर, गेंद को रोकने में सफल, खूबसूरती के साथ अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए। स्ट्रोक काफी दमदार था, और देखिए यहां पर किस तरीके से बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त रोका गया था फील्डर नासिर द्वारा। और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल, इस बार गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ। एक बार फिर से गैप में 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे। Once again, couple of runs added to the total. 30 on the board. Prolonged over came to an end from Aman. 18 runs came from this over. And now, after 3 overs, I must say, new star Chokobettu looking in a commanding situation. It's 30-1 after completion of 3 overs. Meantime, the next match, White Horse will take over Planet Air STC Jeppo, and because of that, I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately for the signature procedure in official chart. और अब काफी लंबी बातचीत चलती हुई केजीएफ किंग्स के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत इस वक्त जारी है, और बल्लेबाज इस वक्त पानी ग्रहण यहां पर करते हुए। और जहां तक का सवाल है इस वक्त चौथे ओवर का, तो देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त चौथा ओवर फेंकने के लिए आते हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अश्विन को इस वक्त गेंदबाजी पर लाया गया। अश्विन तमन्ना जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। और जहां तक सवाल है स्ट्राइक का, तो इस वक्त रिजवान सामना करने के लिए तैयार है। और तो अश्विन तमन को गेंदबाजी इस वक्त सौंपा गया है, और गेंदबाजी इस वक्त करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज रिजवान के लिए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात। डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर ठीक सीमा रेखा के पास एक फील्डर मौजूद लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में। और गेंदबाज अश्विन तमन्ना ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। रिजवान जो कि इस वक्त सामना करते हुए 30 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद। और इस बीच अश्विन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, शायद वहाँ पर फील्डिंग का कुछ हद तक जमा नहीं था, तो इस वजह से अपने रनअप को इस वक्त रोक चुके हैं। अब डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है दाहिने हाथ के बल्लेबाज रिजवान के लिए। और अश्विन ओवर की पहली गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकरा। इस वक्त जहां तक सवाल है इस वक्त विकेट यहां पर गिर चुका है। रिजवान स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चूके और क्रीज से कुछ हद तक बाहर निकले, और इसे देखते हुए तेजी के साथ विकेट कीपर ने विकेट यहां पर चटका दिए। तो इस वक्त रिजवान गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना विकेट खो चुके हैं, और यहाँ पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से चूके थे और रन के लिए दौड़ पड़े। इस वक्त 2 कदम आगे बढ़ाए, और इसे देखते हुए विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट यहाँ पर चटका दिए, और ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। रिजवान का दूसरा विकेट खो चुका है, और स्कोर है इस वक्त 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नजदीक के एंगल से दिखाया जा रहा है, देखिए किस तरीके से विकेट गिरा था रिजवान का। और अब जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, न्यू बैट्समैन प्रताप, द स्किपर ऑफ देयर साइड इज नॉट कमिंग आउट टू द मिडल। कप्तान है प्रताप इस वक्त, न्यू स्टार चकोबेट्टू के इस वक्त मैदान पर उतरते हुए नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से, और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज अश्विन तमन की गेंदों का। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर अरशद बजाल, और जो कि कप्तान है केजीएफ किंग्स के। और इस बीच अश्विन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, पैरों पर टकराई इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और जब तक गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 more run added to the total, and with that single run the scoreboard moving up to
31 for the loss of 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस वक्त एक रन इस गेंद पर मिला और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर। 32 नाउ। इस बार बाउल्ड आउट, बाउल्ड दिस टाइम बाय प्रताप। और जहां तक सवाल है इस वक्त अश्विन तमन की इस ऑफ कटर गेंद का, तो यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद कुछ ज्यादा टर्न ली थी अंतिम क्षण में, थोड़ी सी सफल होते हुए स्टंप्स एक्सपोज कर चुके थे प्रताप। और यहां पर देखिए एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टर्न टेकन बाय द बॉल एट द लास्ट मोमेंट। और इस गेंद के घुमाव को, टर्न को समझ नहीं पाए प्रताप और उनका विकेट इस वक्त उखाड़ता हुआ। बेहतरीन ऑफ कटर गेंद पर यह विकेट प्राप्त कर चुके अश्विन तमन और तीसरा विकेट गिर चुका। प्रताप कुछ ज्यादा अपने टीम के लिए कर नहीं पाए और आउट होकर पेविलियन वापस यहां पर लौटते हुए और एक और विकेट गिर चुका है 32 रनों पर। जबकि उनकी पारी का चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। एक बेहतर ओवर अब तक अश्विन का साबित हो चुका। पिछले ओवर में अमन ने 18 रन प्रदान किए और उस ओवर की बदौलत न्यू स्टार चुक्काबेट्टू इस वक्त बेहतर स्थिति पर नजर आता हुआ। और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। हर्षित नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल एज अ नंबर 5 बैट्समैन। और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अश्विन की गेंदों का। और अश्विन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद हर्षित के लिए, गेंद को स्वीप कर दिया इस वक्त। टॉप पेज पर गेंद टकराई, फाइन लेग की दिशा में गेंद निकली, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। couple of runs added to the total and with a couple run the scoreboard moving up to 34 for the loss of 3 wicket. रन्स इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए न्यू स्टार चुक्काबेट्टू के लिए और एक बेहतर स्कोर की और वो यहाँ पर अग्रसर होता हुआ। और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अश्विन ने यह गेंद कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, चूंकि ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती। बेहतरीन ओवर के समाप्ति अश्विन की और 4 रन सिर्फ इस ओवर में उन्होंने प्रदान किया, 1 विकेट प्राप्त किया। प्रताप का 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs scored by न्यू स्टार चुक्काबेट्टू against KGF Kings in the match number 1 of the day 3 of this prestigious cricket tournament, KPL KUDLA Premier League season 10-20-26 under the great leadership of Mr. Tilak Guru। और जहां तक सवाल है इस वक्त 5वें ओवर का, तो हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी शुरू करते हुए रियाज इससे पहले पारी का पहला ओवर उन्होंने फेंका था और अब पारी का 5वां ओवर शुरू करते हुए इस वक्त और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार रवि पड्डायोर। 2 ओवर का खेल बाकी, 12 गेंदें बाकी और देखते इन बचे हुए 12 गेंदों में न्यू स्टार चुक्काबेट्टू के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज रियाज और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रवि पड्डायोर के लिए, जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए यहां पर खेलते हुए। और जहां तक का सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, पहली गेंद का, तो रियाज तैयार। यह गेंद ढीली गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची इस वक्त थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 35 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 स्टार्टेड। और जहां तक का सवाल है इस वक्त रियाज का, तो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हर्षित के लिए। यह गेंद इस बार क्विकर गेंद थी, ऑफ कटर, विकेट कीपर इरशाद गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज 1 रन प्राप्त करने में सफल और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और एक बार फिर से रियाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए सामना करने के लिए तैयार इस वक्त रवि पड्डायोर। और अगली गेंद रियाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद। और जहां तक सवाल है इस वक्त रिव्यू का, तो शायद यहां पर रिव्यू इस वक्त लिया गया है और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी गेंदबाज रियाज की और देखना है कि गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गुजरी थी या नहीं, और तीसरे अंपायर इसका क्या निर्धार देते हैं परिशीलन करने के बाद।
तो इस वक्त तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए और देखते हैं यहाँ पर क्या निर्धार वो देते हैं। इट्स अ फेयर डिलीवरी। और जहां तक का सवाल है इस वक्त अंपायर, वेदर इट्स अंपायर्स रिव्यू और प्लेयर्स रिव्यू, प्लेयर्स रिव्यू, दैट मींस अनसक्सेसफुल रिव्यू टेकन बाय द प्लेयर, और रिव्यू इस वक्त जा चुका है। जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन्स बढ़कर रन्स वहीं पर रुक चुके हैं और स्कोर है 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज रियाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लॉन्ग ऑफ फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात करते हुए, लॉन्ग ऑन भी सीधा, और रियाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद परफेक्ट ऑफ कटर, गेंद को उछालना चाहता चूके, और गेंद विकेट कीपर इरशद ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज रियाज और अपनी अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज रवि पड्डायूर इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद ड्राइव किया, बेहतर फील्डिंग, फॉलो थ्रू में हाफ स्टॉप, लेकिन रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। खूबसूरती के साथ अपने पैर के जरिए गेंद को रोका था, फॉलो थ्रू में गेंदबाज रियाज ने। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त नहीं मिलेंगे। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 36 रनों पर। अमन के ओवर में 18 रन जब बने थे तब ऐसा लग रहा था न्यू स्टार चोकोविटो के बल्लेबाज एक लंबे स्कोर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी की अश्विन तमन ने, और इस ओवर में रियाज भी एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए और इस वक्त बल्लेबाजों को बांध कर रखने में काफी हद तक यश प्राप्त कर चुके हैं अंतिम 10 गेंदों में, और अंतिम 11 गेंदों में कहना पड़ेगा। और इस बीच रियाज इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और रवि जो कि इस वक्त सपना करते हुए, यह गेंद उछाला इस वक्त रवि ने, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके, और रवि सालियान पड्डायूर का विकेट यहां पर गिर चुका है। मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद को उछाला जरूर लेकिन उतना दमदार स्ट्रोक नहीं। और यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला गया था, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर जो खड़े हुए थे आखिरकार गेंद को लपकने में सफल, और इसी के साथ रवि सालियान पड्डायूर का विकेट यहां पर गिर चुका है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 36 for 4 after completion of 5 overs, and what a fantastic comeback made by the bowlers of New Star Chokabit in the last 2 overs, especially Ashwin Tamanna, and now Riaz bowled superbly, conceded just 6 runs in the last 2 overs. That means in the last 2 deliveries, and they captured 2 wickets. They shared 2 wickets, and because of this fantastic bowling performance in the last 2 overs, I must say the batsmen of New Star Chokabit were restricted by the bowlers of KGF Kings. और जहाँ तक का सवाल है अंतिम ओवर का, तो देखते हैं कौन सा गेंदबाज इस वक्त अंतिम ओवर यहां पर शुरू करते हैं। कार्तिक का इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ। सामना करने के लिए इस वक्त तैयार हर्षित। सिर्फ 6 गेंदें इस वक्त बाकी न्यू स्टार चोकोबिट की पारी में, और देखते हैं इस बचे हुए 6 गेंदों पर, इन बचे हुए 6 गेंदों में न्यू स्टार चोकोबिट के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। तो अगला मैच प्लैनेट एयर एसटीसी will takes over White Horse in the next match, and because of that I request once again all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और इस बीच कार्तिक ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार हर्षित सामना करते हुए। नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है, सिनन, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर हर्षित, विकेट कीपर इरशाद, और हर्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद, फर्स्ट बॉल कम्स, कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछाला हर्षित ने, इस बार मिड विकेट फील्डर गेंद को रोक नहीं पाए, बैकअप होता हुआ लॉन्ग ऑन पर बेहतर फील्डिंग, फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय
रियाज अपने आगे की ओर दौड़ कर आते हैं विद वन हैंड, गेंद को इस वक्त पिकअप किया उन्होंने और बल्लेबाज को सिर्फ एकमात्र रन प्रदान करने में सफल और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सिक्स्थ ओवर, सिक्स्थ एंड फाइनल ओवर इन फैक्ट। और सिनन्ना इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, नए बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार कार्तिक की गेंदों का और कार्तिक का इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सिनन के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार सिनन जो कि इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद लेग कटर गेंद थी, धीमी लेग कटर ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और अंपायर इस वक्त रिव्यू ले चुके हैं वाइड के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। तो जहां तक सवाल है इस वक्त धीमी लेग कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गुजरी थी इस वक्त, स्वयं अंपायर इस वक्त रिव्यू इस वक्त ले चुके हैं ये परखने के लिए कि क्या ये वाइड है या नहीं, और तीसरे अंपायर अब इसका परिशीलन करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। 4 विकेट इस वक्त गिर चुके हैं और स्कोर इस वक्त स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ 37 रनों पर 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट केपीएल कुडला प्रीमियर लीग सीजन 10 2026 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई। इट्स अ फेयर डिलीवरी, सही गेंद घोषित और जहां तक सवाल है रनों का तो कोई भी रन इस गेंद पर टीम को नहीं मिलेगा न्यू स्टार चौका बैटो को। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए कार्तिक दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सिनन जो कि इस वक्त सामना करते हुए अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिस्ट देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और इस वक्त गेंदबाज तैयार सिनन कुछ बातचीत वहां पर चलती हुई। तो कार्तिक इस वक्त तैयार और सिनन इस वक्त सामना करते हुए 4 गेंदें बाकी अब कुल मिलाकर उनकी पारी में। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए कार्तिक, यह गेंद उछाला वाइड स्लॉन्ग ऑन पर लेकिन वहां पर शायद कोई फील्डर नहीं और गेंद सी मारेगा जब हर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक ऑफ द बैक फुट, घुटनों के बल कुछ हद तक झुकते हुए गेंद को उछाला था इस वक्त। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, दिस एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक। पिछला पैर का घुटना कुछ हद तक झुकाते हुए गेंद को पुल कर दिया खूबसूरती के साथ, मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए वाइड स्लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दरमियान बल्लेबाज सिनन ने और बेहतरीन स्ट्रोक गैप भरपूर चुनते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन अ फैंटास्टिक स्ट्रोक केम फॉर द बैट ऑफ द बैट्समैन सिनन। और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए गेंदों का तो 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए अंपायर इस वक्त कुछ इशारा करते हुए प्लेयर्स डगआउट की ओर और शायद कोई खिलाड़ी इस वक्त कोई दर्शक सीमा रेखा के कुछ अंदर आ चुका तो उन्हें बाहर जाने के लिए अंपायर ने कहा और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। यह गेंद स्वीप करना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त लगभग जमीन के सहारे और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। तो विकेट कीपर इरशाद अपना काम तमाम विकेटों के पीछे कर चुके हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था, रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। तो एक और विकेट गिर चुका है। नाउ जस्ट 2 balls लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन एंड 5th विकेट डाउन, इट्स 41 for 5। Still 2 balls left in overall calculation in their innings और गेंदबाज कार्तिक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। न्यू मैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, मुस्तफा बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त कार्तिक की गेंदों का।
कार्तिक गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए मुस्तफा जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ऑफ साइड पर मुस्तफा के लिए 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त मौजूद है। और इस बीच कार्तिक का दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए मुस्तफा के लिए ये गेंद स्वीप कर दिया मुस्तफा ने खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर 1 रन का इजाफा। और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर। और यहां पर रनआउट का खतरा इसी के साथ ऐसा कहना पड़ेगा। तीसरे अंपायर के लिए एक बार फिर से मांग की गई है। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर वंस अगेन। और जहां तक सवाल है इस वक्त देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले थ्रो गेम। और जहां तक सवाल है इस वक्त यहां पर बल्लेबाज के लिए कुछ हद तक खतरा जरूर पैदा हो सकता है। तीसरे अंपायर के इशारे का इस वक्त इंतजार है। और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार यहां पर देते हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए थ्रो पहुंचा था गेंद को विकेटों पर लगाते हुए। और इस बीच जहां तक सवाल है इस वक्त देखना है कि बल्लेबाज तब तक क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। काफी नजदीकी मामला यहां पर। और इस वक्त तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहां पर करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। So the decision is still pending and now he's gone. In fact, he's back into pavilion. One more wicket fallen. So 6th wicket gone. It's 42 on the board for losing 6 wickets in the over number 6th and the last in progress in their innings. अंतिम गेंद अब बाकी उनकी पारी में 42 on the board. In fact 42 for the loss of 6 wicket. Now just a single ball left in their innings. अंतिम गेंद इस वक्त बाकी। देखते हैं यहाँ पर इस बचे हुए अंतिम गेंद पर बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। तो इस वक्त गेंदबाज कार्तिक का गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। मुस्तफा जो कि सामना करने के लिए तैयार और कार्तिक का गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार बल्लेबाज मुस्तफा के लिए नए बल्लेबाज अंसार इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर मौजूद। द लास्ट बॉल इज नाउ कमिंग अप। कार्तिक टू मुस्तफा राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा गेंद निकल चुकी है थर्ड मैन की दिशा में एंड इट्स गॉन वेरी फाइन बाउंड्री टू एंड देयर इनिंग्स। सो लेग बाय के रूप में चौका इस वक्त जुड़ चुका है। और यहां पर देखिए कार्तिक की गेंद थी गेंद को मोड़ना चाहा गेंद पैरों पर टकराई कोई शॉट थर्ड मैन नहीं और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। चौके के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर न्यू स्टार चोकाबेटू एंड 50 कम्स अप। इन फैक्ट द स्कोर इज नाउ 46। इन फैक्ट 4 short of a 50. That means 46 for 6 they scored in the stipulated 6 overs. And now the target for KGF Kings is exactly 47. They have to score for victory with the help of 10 wicket. The present equation shows for them. And as far as the required run rate is concerned, just under 8 runs per over, they have to score for victory. और जहां तक सवाल है स्कोर बोर्ड यहां पर दिखाया जा रहा है देखिए ऑल सिंगल डिजिट फिगर्स। रशीद बाबा 9, रवि सालिया 9 ईच, रिजवान 2, प्रताप 0 पर आउट हुए, हरचित 4 रन बनाए, सिनान ने 4 रन बनाए, मुस्तफा नाबाद रहे 5 रनों पर और अंसर नाबाद रहे 0 पर। 46 रन 6 विकेट के नुकसान। 46 for 6 in the stipulated 6 overs scored by New Star Chocobato. Now the target for KGF Kings is 47 in 6 overs. That means in the stipulated 30-60 over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं यहाँ पर KGF Kings के बल्लेबाज इस 47 के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस वक्त KGF Kings की पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे ब्रेक के बाद एक बार हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज पहली बार मेरे काबिल दोस्त मेरे लंबे समय के साथी सतीश के साथ जब अंग्रेजी में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ जब यहाँ पर KGF किंग्स की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
So good morning everyone, welcome to the last day and final day, even the decider day of the prestigious KUDLA Premier League 2026 season 10 and day number 3, match number 1, the battle between the two toppers of the points table, and two teams definitely has got a good 2 days of cricket tournament in this KPL in the league stage matches, being the toppers. This is going to be a fantastic opportunity for the cricket lovers to watch these two teams battling for the victory, and both the teams doesn't want to lose their winning track here. They wanted to continue their winning track so that they can be the toppers in the points table, the opportunity to get into the playoff round, not only in the playoff round but even they wanted to get into the qualifier number 1 if they've got the top place in the points table. So winning the toss, elected to ball first, team New Star Chakabetu. They are lucky to have that 46 because it never looks like they will going to get a 46. But big contribution from the extras, the 13 extras which is conceded in that 46, and because of that they got a 46 runs, a massive runs I can say in the morning in the 4 hours. But it's too early to say that it's going to be a massive total because against the formidable batting department of team KGF Kings, I think this total can be a small if this battle will going to lay the foundation, especially the batter Gabbar is definitely, if you were going to talk with this bat, it's going to be a testing time for the bowlers of team New Star Chakabeta. Altogether, we are just wanted to see these two teams will going to have a healthy battle between bat and ball. From the commentary box end, it's going to be a start of the over number first, and experienced bowler Sharan brought into attack to bowl the first over. The great bowler Sharan has got a fantastic career, and if you see his career, he's been always a very useful player for any team he represents. He's definitely going to be a kind of bowler who loves to handle the pressure, loves to come in that power play overs. And where is he? I will go into ball. The hero of the previous match, Harris, will go into face the first delivery. Again, driven that one down to log on region. Harris is certainly going to be one of the surprise package in this particular KUDLA Premier League as opening batters yesterday. The way that is grabbing that opportunity which is given by the captain of KGF Kings to go and play your natural game in the power play is absolutely grab that opportunities with his both hands, and the way that is strikes the ball, and Underarm cricket will going to witness one more big striker of the ball. That's for sure. That his ability, the potential of hitting the ball, clearing the ground. And the man who played for KFC Kodikal, Harris, certainly will going to take this tournament as a tournament for his career. And one without loss of any wicket. Here comes Sharan, second time in this over. Short fine leg, the fielder at short square leg. That's certainly the one fielder is being situated in the mid-wicket, one of the scoring zone of Gabbar. And the fielder down at long off is situated. And both are from the Bajal, of course, same area. And here comes right arm balls, beautiful. This is what Sharan is knowing for. Sharan and Bajal at one time they played for same team. Young friends URWA, they know each other very well. And now he's playing for Tarpados Khana. And this is going to be a very good contest between these two, isn't it? And wait and see who will going to win the race here. The first ball 1, second ball dot, it's going to be a third ball. Here comes Sharan away from us, past umpire Iqbal. At square leg, umpire Ashraf. Here comes, hitting him outside the line. This is a sure, and ball running down to third man. And even the loud appeal came from Sharan, not a bad appeal, but I think the ball hitting him outside the line of off stump. That was absolutely great decision. This is absolutely great decision, I want to tell you, because we see that Arshad Bajal is touching his front foot. If it's the initial moment, and whenever he try to play that slog sweep shot, you will see that his front foot is coming outside the line of off stump. That's, I think, the good technique for any batsman. If you watch, it make sure that he will going to be if you are going to miss the line of the ball hitting you outside the line of off stump,
That will going to save you from the leg before wicket. Even the save you from the ball to hit the stumps. And this is what the batters have to learn. And when you're standing in the middle stump, stretching your front foot in the outside the line of off stump, Sharan round the wicket he bowls. Once again, you can see the same stroke is attempted, the same line, but this time he's got bat onto that, but not enough bat what Arshad Bajal loves to get. Just a single, 4 without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Now just changing his angle, wanted to come over the wicket. 6 overs game, 36 balls, 46 runs, 10 difference, which is going to be the difference which is these two batters have to reduce in the power play over. Dries that one, doesn't get hold of that one properly, but good enough for him to complete the single. Sinan, the fielder at short mid-wicket region. It's been a fantastic morning here, and the weather condition is typical, the month of February. The bright sunny morning, but not that much of hot. And when time progresses, it's going to be hot here in Mangalore. And now it's almost less than 28 degrees Celsius in the morning. The good condition for the cricket. 5 without loss of any wicket. The morning itself, a good number of crowd is gathered in either side of the ground, enjoying this final day of cricket tournament. Almost drags it from the outside the line of off stump to pick the single down to mid-wicket region. The fielder down at deep mid-wicket, Rizwan fields the ball. Good over, tidy over. Once again, Sharan is showing his excellency and experience in this particular over. It's not so easy, isn't it? When you're having a batter like Arshad Bajal and Harris, two batters knowing for the destructive batting, keeping them quiet is always going to be a big challenge. But Sharan is once again leading from the front and got a very good start here. Quiet start, not a successful over, but as far as economical over is concerned, I will say this is the good over from Sharan to get a 6 runs. 40 needed now, 41 needed, correction, in remaining 30 deliveries. Now the difference coming up to 11 now between run and ball. But having this batter in the middle, I don't think it's going to be a huge difference. 2 big shots will go into change the game. But question raising here, in this condition, only few batters has got a success from the bat. But all we can see that 2 days of this cricket tournament is highly dominated by the bowler rather than the batter. Few of them got a success, of course. But this is not a cricket tournament. It's including of a huge runs, huge total, and even the less sixes and less boundaries. One of the big reason, the ball which is used for the particular tournament, and another big reason, which is how the pitch is reacting after 2-3 games, and this match may become a little bit horrible for the batters, and the bowler will going to use this condition very well. Ball is skidding, uneven bounce, and maybe that testing time for the batters. Dharma, one more talent from our neighboring state, Kerala. Brought into attack, they got a variation in his bowling. Now it's going to be a big challenge for him to how to bowl to this man. It's 6 without loss of any wicket. From the Manoj Shetty and Ashwin Pujari Chilimbian, round the wicket. Oh, I wanted batters. It is going to be a big challenge for the Dharma. And this has been outstanding struck. Can you believe this stroke? Do you think anything wrong with that line of the delivery? No one can think that it's going to be a 6 for that particular line. Almost outside the line of off stump, and how well he managed to drag it, and how quickly he's getting that one into his bat. Absolutely perfect bat speed. The timing is exquisite. Why is Main called as a killer of the ball? This is one of the biggest reason I want to tell you. It's not so easy for anyone to come and bowl to this man. Once he is in form, it's unstoppable. 12 without loss of any wicket in the over number. Second is in progress. Second time in this over. Once again drags it, but lovely line there. Oh, this is going. Harris wants a run. It's absolutely suicidal. I don't know really actually why Harris is wanted that run. Of course, maybe if there is a run, if the striker will go and respond. But do you need to see that
Striker almost is in his knees. He wanted to play that across the line, almost is stuck in the crease. After you are trying for the run, you're going for the straight shot, getting up and going for the run. It's not so easy. This is what the simple thing what the non-striker have to watch. If anyone there, of course, in place of Arshad Bajal, definitely is going to be run. But I already mentioned about he's almost stretched his front foot, almost his bend on knees, and getting up and going for responding for the run. I don't think it's going to be a smart thinking. This is where the things really need to be noticed. Where you actually don't watch the ball, you watch your partner. When the ball is going in front, it's always the striker's call, not the non-striker's call. So losing the batter like Harris is in an absolutely terrific form. Definitely it's going to be a big blow, and the opposition team definitely going to enjoy this dismissal of Harris. Dharma, third time in this over. Pass on for Ashraf. Around the wicket with balls. This time, it's square off the wicket, but ball which is not going to travel to full, but a one bounce into the fence for 4 runs. Once again, he's choosing that area, which is one of the safest area to play. And once again, have a look at that, where he was getting the ball. Too far outside the line of off stump. Too far outside the line of off stump. Dharma even trying for delivery, which is out of the reach of the batter, but still Arshad Bajal reaching to the delivery and drags it from the outside the line of off stump and picks it away down to deep square boundary for 4 runs. This has been outstanding struck. 16 for 1. The second over of Dharma, what you call in Kannada, Dharma the A2 from Arshad Bajal. 16 for 1. It's a little margin for error, but not a margin error. I don't think there is anything error in that line of the ball. But all we can see that this man is absolutely very, very destructive. Here comes Dharma. Oh, this has been a disaster. This has been a disaster. Umpire, a little bit of confusion in the mind of umpire. It's called it's wide, but it's taken the decision back. It's a bye. It's a bye for. That shows, I think, even umpire is also enjoying the game of Arshad Bajal. He is not in the presence of mind. He's only watching how the Arshad Bajal is hitting the ball. It's all happening in cricket. It's quite understandable. It's 20 for 1. This is absolutely disappointment here for the fielding team. By 4 runs. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂಥ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏರ್ STC ಹಾಗೆ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮ. Oh, this has been a really lucky escape for Dharma, and he's called it wide. Ashraf. Now they wanted to take the review. The fielding team wanted to take the review. Umpire is given a wide. Now it's going to be a very interesting review, and Dharma quickly saying that, definitely it's a punishable delivery. It is absolutely in the arc of Arshad Bajal loves that line. It's a fair delivery. The right call. The ball is just passing, isn't it? I'm just observing, but sometime confusion for the umpire. And review is successful, so that they will go to retain the review. They will go to retain the review. Review which is successful 1 year from the fielding team. 20 for 1. Here comes Dharma. This is turning out a big over. Only 10 runs came from this over. Big over since and 2 big shots. That's enough. 4 and 6. And 1 run out taken place. That's very important. The wicket of Harris. Dharma round the wicket right now. Swings and miss. Very close to the off stump. This is turning out to be a good over. The comeback over for the KGF Kings. 2 overs gone. 20 on the board. But you need to appreciate Dharma. He came back very strongly with some dot ball in this over.
It's 20 on the board. KGF Kings are chasing 47 to win this match. And if you see that, the equation, then 27 needed from 4 overs. Now, the equation suddenly it's going to be favoring the chasing team. 24 ball, 27 needed for the victory. The experienced campaigner, Riaz, came into middle as a number 3 batter. Missed out yesterday the matches for KGF Kings. Such a successful and colorful career what Riaz Gori has got. And most probably the man who got a very success by playing for when he playing for the Gori young boys. The man is from Kannuru. But most of the success, but he's been recommended by the cricket lovers by, yes, only the name of Riaz Gori. Whichever team he will go into play, that's a secondary. But he's been identified by the name of Riaz Gori. That's for sure. Again, played it very nicely. Down to cow point region for a single. The 21 for loss of 1 wicket. And I just got information that he started his career when he was playing with the big teams in Mangalore. He played for young friends URWA in the beginning of his career. He started his career for playing for young friends URWA. Then a long career in playing for Gori young boys. And afterwards he played for Team Matrix for 3, 4, 5 years. Team Elegant. And then, of course, now he is a player of KFC, Kodikal. Pratap brought in attack to ball the third over. After that, his field is being spread out. Just like a left-hand batsman going for the slog sweep shot. How quickly he's getting the position. And didn't got that much of enough bat onto that. Trying for the reverse sweep. Picked up a single, 22 for 1. Oh, lovely delivery, beautifully bowled. It is the wrong one there from Pratap coming into the batter quite hardly. Riaz managed to get a bat onto that in the last moment. 23 for 1. Arshad Bajal. Once again, he wanted to go for the switch. It missed it completely. Good thinking there from a bowler's point of view. You know exactly what the batter is trying to do. You know exactly the batter trying for the reverse sweep. So just changing the line cleverly. Bowled along the leg stump, outside the line of leg stump to defeat the bat. But I'm really inspired to see that Naushad is a man who really missed out the big tournaments in a small format of games. He's been added because of his excellent performance for KFC Kodikal in 30 over format of a game. But he's grabs the opportunity very well as a bowler. Once again, shuffled across the line of the delivery. And umpire will going to call that wide. They got a 1 review. The fielding team got 1 review because 1 review which is gone successful. If you want to take the review, they can take the review. It's a wide ball. They doesn't want to take a review. They know exactly the ball is going down the leg side too far. It's 24 for the loss of 1 wicket. Iqbal has done a great job so far in this tournament. As umpire got opportunity to officiate this prestigious KUDLA Premier League. But he's been outstanding. One more switch it is attempted. One more dot ball. So the captain doing the job here for the team. And being the captain, you know exactly Pratap is experienced campaigner. Ball him! Clean him up. Just have a look at the celebration. The captain of the side know exactly what to do here. If his team wanted to back in the game, they have to get this man. They have to get this danger man quickly. And this is what the frustration. This is what the frustration after playing the 2 dot balls in this particular over. He just wanted to break the juggle, but choosing that incoming delivery, the lecture of the bowler, Pratap
I'm really seeing that it's a leadership quality, Pratap, in this particular KPL, leading that new star Chakapet very successfully. Every time he's coming into attack or coming into bat. It's not an easy condition, but he's absolutely did a great job as a captain. Now, the wicket of Arshad Bajal will go into do something special in this match. The danger man departs after scoring 13, and this is the one figure I want to tell you. The batsman always need to be very careful. When you are 13, you need to try to get past that figure. This is not in, if you see the history and the cricket, the most of the batters got out in that 13 figure. Something there is in this, the believeness, what you call it, maybe superstitious believeness, numerologically. But sometimes it's happening in cricket regularly. The 13, the number, is considered to be one of the most unlucky number. It's 24 for 2. Riaz, the man, came into bat, the costliest player of the KUDLA Premier League, with the 30,000 in it to justify. Ansar balls outside the line of off time too far. The wicketkeeper missed it. 1+1, the couple of runs added to total. This is a bonus run. When the things are going against the chasing team, giving extra runs, giving extra deliveries is some kind of comeback here for the chasing team. It's 26 for the loss of 2 wickets. Over number 3 completed. Another 21 needed for the victory. The match is evenly poised, even though it looks like the chasing team will go into be the little bit driver's seat. Now Riaz have to play the shot, isn't it? No other excuse. He's already committed himself for the reverse sweep. And Ansar bowled a very good line, the batter, but nevertheless he can't leave the ball. You have to play the ball just like a left-hand batter pushing the ball. Picked up a single. Drives that one down to long off region. Riaz knows that no need to panic at all. The ball-to-ball run required. And one cricketing stroke is good enough to get them into the target along with the single. 28 for 2. They're looking for the improvisation. Shape shot. Leg by call by umpire. Ansar bowled a very good delivery in the occasion. He's not happy with himself because you know exactly this is the one delivery can be a little bit effective to get Riaz back in the pavilion. It's 29 for 2 in the over number 4 is in progress. Driven. Mustafa, the fielder at extra cover. One more experienced campaigner. This is over is turning out to be the over of the singles. 1 wide. Altogether 5 runs came from this over. 17 needed. Reverse sweep catch, it is a call wide of Rashid Baba. After a long time he came into the picture. Picked up a single. 31 for 2. 16 needed for the victory. And 13 balls remaining. Here comes Ansar. Riaz drives, beautiful shot, up and over, he got the distance. Well, just have a look at the dugout of KGF Kings. This has been unbelievable struck. This is an unbelievable struck there from Riaz Gori. Now, even though this has been outstanding struck, beautifully struck, just have a look at that, transferring his weight onto the back foot. Played it exquisite extra cover in the morning. In the morning only you can get that distance in that region, cover region, because the wind is flowing in that direction. If you get one little bit timing in the shot, and Riaz played it exquisite extra cover drive. Now Anif straight away, the all-time 12th man, now comes into the picture with the water for Riaz. It's 37 for the loss of 2 wickets. Now equation is certainly favoring KGF Kings. 10 needed from 12. Riaz, KFC, definitely enjoy that stroke. After a long time of watching the kind of
confident stroke there from Riaz. 10 needed from 12 deliveries. Oh, this has been a disaster. This has been a disaster if the run not going to take place. Because ball went straight to the hands of fielder, but not a good work done by the fielder in the point. And Mustafa need to be a little bit quick enough to make the run out because ball went straight to the hands of fielder. Riaz absolutely, they wanted to pick the single by pushing the ball to the point region. Net need to have this, grab this opportunity. The fielding team, if they wanted to back in the game, they have to get one more wicket here. Get the new batter in. Once the new batter in, the condition always suitable for the fielding team to tighten up the screws. 38 for 2. This time a little bit hesitation for the run, and directed might be the curtain in the innings of Riaz. Directed certainly the curtain in the innings of Riaz because he's almost struggling to reach his home. This is what today morning the crowd which came in a big number. They know exactly this is the last day of this cricket tournament and the champion decider day, and everyone came here. This time it's going to be one more delivery where umpire will going to. Yes, they wanted to check the wide. This is umpire's call. This is umpire's call, please note. And 1 run added anyway. But whether it's going to be one more extra, we're going to add it here. Wait and see. It's a fair delivery. It's a fair delivery. Ball is passed inside the line. It's 39 for the total of two wicket. Again, going to be a wide. One more extra. One more wide. 40 on the board. Now, just 7 needed for the victory. 41 correction. 6 needed. Pratap lost his concentration over the line. Rehman catches the call but played it in the gap. Into the cow corner. They will definitely going to come back for the second, and they made it quite easily in the end. Lovely placement there from Riaz, playing a very good knock, sensible knock so far from Riaz. Scored 11 valuable runs in just 6 deliveries. This time swings it away, but fielder is underneath it. Rizwan, the fielder, making no mistake at all. Riaz wanted to finish off the things quickly by hitting a big shot, but didn't got that much of proper connection, and even the timing which is missing altogether. The Rizwan is the man, is the safest pair of the hand in the deep square leg region, making no mistake at all. But still, the runs which is 43, 4 needed for the victory. But Riaz will going to get a standing ovation here. Why not? He played a very good knock. The good innings under pressure. Justifying that number 3 position in the batting order. 43 for 3. The new batter in. Came into the middle. Just 4 needed from 7. Again wanted to go for the safe shot. Dot ball. Now the match is not yet over. The 4 needed from 6 ball. Azim, the new batter in. And it's not an easy condition. I've already mentioned if the bowlers bowls good line and length, it's always a testing time for the batter of any team. His bowlers are really dominated in this tournament. For the next match, captain of White Odds won the toss against Planet Air Travel STC Jaipur. And now this is going to be a very interesting move.
This is going to be very interesting move there from the captain of the side to bring Naushad, the very successful bowler. Played it nicely into the cover point region for extra cover for a single. Now it's going to be a great contest. The new batter, Azim. Wait and see how he'll going to take this man. Naushad. It's gone. Plum in front of wicket. Now, this is what I'm told that whenever the new batter coming to the middle is not an easy condition for any batter. Little 3 runs required for the victory, but you have to battle hard for that. Because you are facing Naushad, the man who really got a plenty of wickets in the 30 overs format of a game, the RRP Memorial Trophy, UFC Trophy. The success behind the KFC KUDLA in the bowling department. Naushad not really given up this match. It's 44-4. All Nelson. We can see in scoreboard. Altogether 4 fours in the scoreboard. Ashwin, the new batter in. It's going to be a good contest between 2 very good bowlers. Of course, Ashwin knows for his batting as well. Now 4 ball 3 needed. Oh, wicketkeeper missed it. This is a big miss. This is a really big miss. Why I'm telling this big miss? Because Ashwin is out of the strike and Riaz back to the strike. You can't do the mistake of doing that. Of course, difficult one for the wicketkeeper when the batsman going for the reverse sweep. The visibility which is not easy for the wicketkeeper to gather against the turn of Naushad is always a big challenge. 2 needed. Now Riaz got a batter to that. It's good enough for him to come back for the second. No one there in the square leg. And KGF Kings winning this match. KGF Kings winning this match at last by 6 wickets. 2 deliveries to spare. This is a couple of runs, I will tell you, umpire. This is a couple of, they completed 2 runs. So there is no boundary. Please note, this is a league stage matches. Each and every run going to be counted because net run divisions comes into play. No, 2 runs they completed, so only 2 runs will be given. So KGF Kings remains unbeaten in this tournament, and the first time the new star Chocobeto they lost their first match in the league stage matches. They lost 2 matches altogether. They lost 2 matches in fact. Now this is what the points table you can see in. KGF Kings are in the top in the points table, winning 5 matches out of 5. The Renwick's Rangers are really they're unbelievable comeback there for Renwick's Rangers. After losing 2 matches, they back strongly with the 3 winning. New Star Chakravarti is also in the 3rd place, winning 3 matches. And Planet Air STC Japo, they 1 match to play. They lost 2 out of 4. They won 2. And United URWA is also same position and even Surabhi Cycles. So this is what a competition between 6 teams here to came into the playoff round of this prestigious KUDLA Premier League 2026 Season 10, which is proudly presented by Friends who are registered under the great leadership of Tilak Guru. So time to change in voice and for the next match, the match number 2 of day number 3. It's warm welcome for Asim, and the first time in this KUDLA Premier League for the final day of this cricket tournament. And welcome Asim and good morning to you. And so time to announce the Man of the Match award, which is the Man of the Match, which goes to a man who came in a very tense position, handled the pressure and scored 13 runs from the bat. Riaz will going to be the Man of the Match, and that Man of the Match will going to present after
3-4 matches. Yes, we are going to call upon the name. Thank you. It's a time for Asim to take over the microphone. Thank you. Thanks, Mr. Satish. We're going to have another great game of cricket between the two great sides. It's been great to be here in the first place, right? And the KUDLA Premier League 2026. An amazing feeling to be here at the URWA cricket ground and to be commentating, to talk about cricket. First and foremost, I'd like to thank Mr. Mohammed Hanif, the Vice President of KFC Krishnapur, for inviting me down here, and it's been great. It's been great to be here. It's a magnificent spectacle. It's a ground that every player loves to play, and it's a perfect condition. If you look at the weather conditions, I think it's a perfect conditions to play cricket. I think also might just get a little bit hot later in the day, but I think if you look at the conditions now, perfect conditions to play cricket. White Horse have won the toss and they've decided that they're going to field. It's a 6-over match where 2 overs of power play and 5 bowlers to be used, which means I think one bowler can bowl 2 overs. That's the max. It's a great game of cricket, right? Talented cricketers, really titanic moments, really, and gotta wait and see how things pan out in the first couple of overs. So these batters will be trying to make the use of the first 2 overs and put pressure back on the bowling side, and that's the suit actually. When you win the toss, or when you're winning the toss batting first, or when you're being put into bat first, the opposition. The suit is the same generically, because you know what, realistically speaking, when batters generally go out there to express themselves, especially in the power play overs, they want to take a bit of attack straight away and probably put some runs on the board, probably say about 20 on the board in the first 2 overs, and that will put them in a good position to try and go for the acceleration right at the back end of the innings. But the key in a 6-over match like this is going to be a partnership that's just going to play a big role. Sharkey and Navaz are the 2 batters are going to start. And Naufal to start the proceedings for the first time. First ball of the match to Sharkey on strike. From the com box end, going to bowl to the right-handed batter. Sort of wide, packed offside field, a packed leg side as well to a degree, but there's a lot of vacant space on the onside, so the batters would love to leverage that part of the boundary. They'll probably get a couple of boundaries and then put runs on the board. First ball. Got it away towards that square, got it into deep square for 1. Strange people. Got on the mark with that single. Navaz, one of the 2 top-notch players in Underarm. In the air, is it going to be taken? No, just short of the fielder. Just for a moment, I thought that it might just go straight into the hands of the fielder, but there was no shot mid-off. There was no mid-off in position, so they got 1 more to the total, 2 to the cards.
Right, 2 on the board now. 2 prominent underarm cricket players who have made big name in underarm cricket. Sharky and Navaz, gun batters and can play big shots, can really turn things around in a nick of time, in a shot block of time. They can do that, but they want to start in a cautious way. Don't want to really risk themselves to play big shots really up front. Goes for the big one. Does he get the distance? Got to wait for the umpire's decision, though. That's going to run away to the boundary. First boundary of the innings coming from the batter, Nawaz. Got it from the meat of the blade. It is a fearless batter. It doesn't really care much about the conditions. It doesn't care much about whether it's power play or not. It just want to take leverage of that open space area. So that's that long gone area. A lot of space over there. And he was able to use that space to great effect. Almost like a sort of pick-up shot for 4. And that will give him tons of confidence now. After getting that kind of a boundary, especially hitting a bit across the line. In the air, is it going to be taken? No, just falling safe. This time the fielder's over there. But they've got enough time to get back for the second. 2 runs taken now. Nawaz cutting loose at the early stage of the game. Doesn't want to hold back. Because he knows that if they can get 20 in the first, I think they put themselves in a very good position. Probably then, you know what, I think anyone who follows next, number 3, number 4, number 5, number 6, any batter who walks in out there will feel a bit of a comfort, really try to play some shots. And that's the kind of framework and the structure that they got to try and draft in. Carved away straight to the fielder. Great bit of fielding there. Excellent fielding. Saving the certain boundary. If he had defeated that man over there, he could have run away to the boundary because there was no protection. So end of over number 1. 9 for none in the first over. Perfect start. After being put into bat first, generally expect the bowlers to pick up some wickets, but that's not been the case here. The batting team, I think, is getting a bit of an advantage. And I think always in a ground like this, when the toss, elect to bat first, put runs on the board, I think you're going to be on the driver's seat most often than not. Not to say that chasing teams don't win, but generally I think in a ground like this, it's not a sort of big ground. But again, boundaries of 6 is not easy to come by as well. Got to be your absolute best. And the captains and the coach and the think tank and the back end of White Horse got to think about what type of total are they backtracking. Because if they backtrack a total, they feel that they can really try and defend. Right, and that's what they got to really try and chase behind. And they can do that. Planet Air SDC Jaipur, led by Ajmal, keeping the stumps. Played away fine, got it away. I think that will run away. Yes, it's going to go all the way to the boundary, using the pace to good effect. Excellent thinking there by the batter, not using the force, rather using the pace to a greater degree to try and guide the ball through. And he was able to get that bound. But that's bad bowling, really. Terrible stuff from the bowler, because he can't bowl there, especially when the fine leg's up inside the ring. You cannot do that as a bowler. That's a lot of risks, actually, bowling down the leg side. It's always going to be taken for the boundary. For his caliber as a batter, he would never miss out on that one. Launched it over towards the mid-wicket boundary. Going to be a couple of runs if they run hard. And they do run hard for a couple. 15 on the board. Sharky is also gaining a bit of a confidence after Nawaz left. He actually scored some quick runs. Goes over, and that's going to go all the way to the boundary. And I think it's been pulled back. Just the one looked like it went all the way. No, it's been pulled back beautifully by the fielder over there, tracking back. Good shot, really good off drive
to get it over that field. That's one of the shots that you love to play as a batter. Probably get that, you know what, get it over the infield. And that's one of the shots that you love to play as a batter. You love to do that in a ground like this where you're going to get a lot of leverage, a lot of benefits, advantages. Right, Nibras back on strike. He's in one frame of mind. That is beauty. That is an absolute ripper of a delivery. Bowling round about that leg stick channel, fourth stick channel, probably trying to fire that ball. And he was able to get that line right. Therefore, 1 run resulted in the form of leg buys. Brings Sharky back on strike. It's been a good bit of partnership developing here between the two. Got a bit of bat on a thing. Direct it. No direct hit there. It's going to be another run. Buys in the form of buys. They do get 1 to the total. Runs are coming thick and fast now. They got to find a way here. As DC got to find a way to try and stop the flow of runs. And if they don't do that, it's a sort of time, it's a block of phase of time where I think you score quick runs. You're going to run away with the game, and that's exactly what Whitehorse will be thinking at this stage. You know what, I think we're going to get to that stage of probably 30-35 in the first 4, and then we can launch it right at the back end with the power striking abilities. But got to think in a strategic way, the bowler got to. Tries to go for the big one, not from the meat of the blade. Got a bit of edge on that one. Just the one there. End of over number 2. 19 for none. Both Sharky and Nibras are stitching in a very good partnership. They know that. It's been good 2 overs, I'd say. After the end of 2 power play overs, they look at this and they'd say that, you know what, 19, a very good total, very good score accumulated. Because you know what, exactly 9.5 per over is what they've been able to achieve so far. And they want to go stronger. They want to go from strength to strength and probably get to that total where they can feel that they can defend. New bowler. Nizam. Nizam is one of the star bowlers in underarm cricket. Won the man of the best, I think, man of the series award at KFC. Not sure about that though, but he's got a lot of awards bagged under his belts. Right, sir. He was man of the series at KFC. No, I don't think so. He was best bowler. Right, anyways. First ball from Nizam. And that's going to be launched into the leg side boundary. Is it going to be taken? Yes, it's been taken. That's the first wicket. And this is what I talked about. Nizam's got the knack of picking up wickets in quick successions. It just came in and delivered the goods for his side. And I think it was a very clever bowling really by Nizam on that occasion. He was able to bowl a little bit slower actually, and was able to get a bit of turn off the surfaces, almost like a cutter. And he was able to get that first wicket. Nawaz has got to go back to the hut. He doesn't mind because he believes that he's done the job for his side. It's all down to now number 3 batter. He's got to go there. And now Nizam is a type of bowler. He bowls 90% of the times cutters, and these cutters can be problematic for the batters to try and deal against. Hayaz, the new batter, walks in at number 3. He's a good batsman, sir. He's a good all-round cricketer as per Mr. Satish. Just got to know a little bit about these players because I'm not sure much about these players. Mr. Satish has got tons and tons of experience in underarm cricket. Mostly knows these faces very well, and surely knows I think did play cricket and knows these people and commentated in a lot of those events. Got it away fine, and there is third man in position for 1.
gets off the mark straight away. Doesn't want to lose that momentum. It's very important that any batter walks in out there. Want to take a bit of time. Doesn't want to take any amount of time. Doesn't want to get on strike, get a single, get to the other end. Launched it, and that might go all the way for 6. That could be the first 6 of the innings. Wonderfully struck shot. Backing away and got it in his arc. And dispatched it into the square leg boundary for a massive 6. Great pickup shot once again by the batter. Sharkey loves playing that shot. Loves that part of the boundary. And he was able to get himself a magnificent 6. Runs are coming now. Runs are coming at a very good pace. And the captain's got to find a way to try and drive the runs. Try to sweep it. Oh, just. Good comeback this time around. Pulled his length back a little bit. Nizam knows that. He's got tons and tons of experience, Nizam. And he's very good at using his repertoire, his armories. He's got a lot of armories in his repertoire. And slow balls, slow type of ball is one of them actually that he bowls. Some of them are cutters down the leg side. Try to reverse, so it's almost like a switching stance and hitting over that third man or sort of extra cover, deep extra cover position, but not able to get bat on ball. But it's just got one way to bat, I think. They're not thinking about holding back. They just want to play shots, get as many as they can, probably get 1, 2 big 6s. That's going to really be useful for the batting side. Got it fine. This time there is that fielder. Will just be one thinking about, no, they won't think about the seconds. It's the 1 to the total. Takes the scoreboard now all the way to 27 now after the end of over number 3 for the loss of 1 big wicket of Navaz. So this is the ideal position. This is the ideal scenario actually for someone like Hayas to go in there and steady the ship a little bit and then probably spend a bit of time over there, probably get just 1 big 2 6s and his partner is going from strength to strength. And that's the way that they got to now try and go about. And from SD's perspective, there's a lot of discussion going on over there. Suragiri strikers players, please come down to the comm box for signature processes, please. Suragiri strikers, all the players, please make sure to come down to the comm box for the signature processes immediately. Right, STC got to do a lot of thinking. They got to try and dry up the flow of runs, really. The flow of runs has been really doubling down now. Try to play, and they've got 9 wickets intact. They want to try and play those big shots, probably get to that mark where they can think that they can really leverage when they come out to bowl. Rakshak, the new bowler, is going to bowl to the right-handed batter. Sharkey on strike. Hayas at the non-striker's end. Going to find that way. You can find that deep extra area. It's almost like a vacant space there. If you can just open up the offside field and lifted it over that place, going to get a boundary to that part of the boundary. Sweeps it. Doesn't come from the midst of the blade, just for 1 there. Hayas back on strike. Interesting to see how Hayas goes about his batting. Is he going to play big shots? Is he going to try and nudge around, cut around, pull around? Just got to find that and see that one. That is an excellent delivery. That is the secret of that delivery is that he was able to pitch that ball in the good length area. He was able to take the ball away. It's almost like a traditional cutter delivery. Indeed, it is a cutter delivery. Raksha. Gotta come back and strike here. Strike big for his side. Probably get 1, 2 wickets for Ajmal. Ajmal searching for that breakthrough. He wants to get through. Probably get 1, 2, 3 wickets at this stage and probably get to that. I think that's what they gotta backtrack here, if they gotta get back. Because you know what? When you get to that stage where you get 50, 54, thereabouts, I think it's gonna be difficult for the bowling side. SDC when they come out to bowl. It does look all good and great and green and
fantastic at the moment. When you got to chase a total, there'll be a lot of pressure, and that's why you got to take that, got to have that right strategy, right mindset to try and go for that chase, and that's why you got to try and limit the number of runs that the opposition can score. Raksha got it away, almost like a sort of dab to the fine leg area. They'll push hard for the second they do it. It's not good fielding, really. They could have gone for that third run. This is a big, big mix-up. There was no run third. They could have gotten the third run if they didn't hesitate to go for that third run. There was a lot of confusion to go for that third run. Eventually got the run out. 2 runs, and Hayaza's got to go back to the hut. Should have ideally stayed for his side, but they've got just one way to bat. One way, that is just to go out of the park. Three balls have been done and dusted right now. 30 on the cards. 2 wickets are back in the hut. These 2 batters got to find a way to get in there, stay in there. Still they've got 2 more overs to go after this. So they've got plenty of time, but all they got to do is that stay in there and then try to play some shots, or probably take those calculated risks and put yourself in a commanding position. From bowlers, from batters' perspective, actually, from Whitehorse's perspective, right. Just got it away for 1. Into the 30-yard circle. So it was almost in a sort of two-minded scenario. The batter actually finally bailed out to play that sweep shot. Sharky back on strike. Immense talent Sharker is. Superb delivery, that is. Exceptional from Raksha. The way he's bowled in this over has been truly exemplary for a lot of the other bowlers, actually, who look at that. I think this over in particular has been able to produce some superb deliveries. Picked up wicket as a wicket, I think, wicket going down in the form of run-out, but the way he's been able to bowl and, you know, try and put the batter in a bit of trouble. And there's the example. And this time, surely he's going to have a no. He's not going to have a wicket. How unlucky the bowler is. Just when I thought about his wicket less. Could have got a wicket here straight away. But not to be the case there. And that's the end of over number 4. 32 for 2. Whitehorse find themselves at STC. Just a little bit coming back, and they got to do that now in the coming 2 overs. If they got to try and restrict the opposition side, and they got to find a way to do that, they got to find a strategy to do that, and they got to pick up wickets. Someone like Sharky is going to be the key there, because if he gets going, if he bats right till the end, be a big score on the board for sure. Plus the fact that you've got another batter walked in, Ajay. Tremendous striker of the ball. Ajay is got great ability to hit the ball out of the park. Sharker and Ajay played against a lot and played with each other a lot as well. Interesting to see how Ajay can go now here. Is he been given the license to go after the bowling? Is he going to play some shots? Is he going to take a bit of time? It's not a lot of... Still got some time, I think I'd say quite some time actually, 12 deliveries. So if they lose 1, 2 quick wickets here, 1, 2, 3 wickets in a small block of time, that could be a big, big, big blow, really. And that's why they've been a little bit too circumspect at the moment. And the bowler, now the new bowler walks out. Raghavi is going to bowl from the com box end. He's going to bowl to the right-handed batter. Well set. Sharky is well set. He's going at a good pace. He's not taking it's not taking any amount of time, and gratuitously not even having a dot ball conceded as well. Just going at a good pace and also try to put runs on the board as well. Right, first delivery, Raghavi.
Launched it into the leg side boundary. Plenty of vacant space over there, and that's going to run away to the boundary. The fielder overrunning just a little bit, couldn't control. Beautiful execution at that shot. Picked it up beautifully from outside the off stem. It was almost like a cutter delivery, but that's what I said. Shark has been in there for some time, and he's got experience. He's grown in confidence now. He's been able to put good balls under a bit of pressure, good balls into the boundary. That's not a bad ball by any stretch of imagination, but he was able to pick it up beautifully and launched it into the leg side, almost into that cow corner area to find the boundary. But that boundary takes the scoreboard now to 36. Sharky going from strength to strength. He's finding those areas where he can score boundaries. Not thinking about big shots, he's thinking about boundaries. Could have been surely out with no bat and whopper, not to be the case. Could have been plumb in front. That's the risk of playing that shot. But got it away for one. Brings Ajit back on strike. Surely he's going to be thinking one way, just going to play shots, just going to get some boundaries to sixes here. Probably, try and accelerate it. Shoot the run rate up. Got it away fine. Is that third man fielder. Nizam does the tidy up work. Will just be one. Ajay. Got it away for one. Now Raghuwe into his fourth. Is going to bowl to Sharkey. Got it away. Could be called a wide here down the leg side. 1+1 to the total now. Runs are coming at a very good pace. This is the over where they should have pulled the trigger, and they do pull the trigger, and they've been successful. It's because they bat deep. They've got gun batters. They've got aggressive batters who can really turn things around. And they bat deep, and they're able to put runs on the board at will, get boundaries at will as well. This is good. Good bowling, really. Got outside off a little bit, just the one onto the board. 41 on the board. 2 balls to go. Sharky back on strike. Will he get another boundary this over? Just try to sweep, but looked like an awkward sweep. Not trying to read the line of the ball, length of the ball rather, because it looked like a nothing shot in the end by Sharky. Just going to play riskless cricket. Just not trying to play big shots by taking full risk. Nicely played away. Is he going to find the fielder? Got the right connection, but straight into the fielder over there. Will just be one. That's the end of over number 5. 42 for 2. White Horse find themselves at. And they now will be tracking another 10 runs in the last over if they can get it. And that will be a massive, massive total in my view, in my opinion. I think for sure it's going to be a great, great total. And when SDC Jaipur come out to bat later, I think Jake is just going to find it difficult. They're going to bat one way. They're going to just throw the ball at everything to try and get to the proximity of the total. We've seen that slow burners as 30 play 30 or 36 play 30 becoming more problematic than 54 play 36 becoming more problematic actually. Just going to give you a bit of a ranging of scores so that you can understand a little bit about that. Nizam Boliar is going to bowl his first over. He's bowling second over, right? Second time, sorry, Nizam to bowl the second over. And he's going to bowl to Sharkey. Still there batting superbly. Got it away. Almost like a walking sweep shot. Strange shot, it really is. Just works well in underarm cricket. Timed out as well. One fielder's got to be inside the 30-yard circle if... Just the one fielder's got to be inside the 30-yard circle. That's the brand new rule of cricket. And that's a good idea because can't afford to take more time.
Can't be wide because of the trigger movement. Surely that sloppy running, that is just, I think, gratuitous running. In my view, that is just bonkers of running between the wickets, I feel. In the end, it's got to go back to the hut. I felt there was no need. I think he probably wanted to charge back to take the strike. Sharkey. But sometimes you've got to also believe in your partner. When your partner is a good striker of the ball, you've got to believe in him. You've got to have that trust and conviction in the non-striker as well. But Sharkey there, in the end, Ajit's got to go back to the hut by sacrificing his wicket. New batter. Altaf, a well-known name in underarm cricket. Can play big shots as a powerful striker. He's a big striker of the ball. And he does want, he's coming in as a finisher right at the back end, which I think is a good idea. In the air, just going to fall safe just for one. Surprising to see why Altaf didn't take the option of trying to play big shots, although it's the last over. Probably wanted to get that ball fine, could have got on the boundary, probably run hard between the wickets, or probably get Sharkey back on strike. Wide down the leg side, it's going to be an extra to the total there. 1 to the total. .46 on the board. And that's going to run away to the boundary. Well struck. And this is what I talked about, Altaf. He can play big shots. He can do that in a nick of time. And he doesn't want to take a long time to settle in. He just knows one way to bat. That's to throw his bat at everything. 50 up for Whitehorse with that boundary. In the air, it's just got off the pads for no runs, for 1 run, 1 bye. SDC being put into bat first by the opposition. Scored 52 on the board. 53 will be the target for Whitehorse to chase it down. I think to tell you a little bit about Asdiz's batting, it went very well. They had a good partnership. Sharkey and Nibras led the way. Sharkey scored. How many in the end? 1 more. Just to summarize. .25 individualistically that he was able to bag for himself, and that laid the foundation. And then Altaf right at the end, giving a bit of an acceleration right at the back end of the innings to try and take that total to a good one. And now 53 being the total, I think they'll take it. They'll take it to try and defend it. But Whitehorse has got some outstanding batters, and I've seen some of the big names like batting in that batting lineup, and they can really execute a chase perfectly. So we're in for a magnificent chase, and we got to wait and watch about it. And to tell you more about the chase, to tell you more about the execution of the chase and the blueprint that they've got and the
chasing side. We've got with us one of the most experienced commentators who's been in the comm box for about almost two and a half a decade. Mr. Gopi is going to take over from me. He's going to give you a bit of an explanation about the game plans. Over to you, Mr. Gopi. Thank you, Mr. Hashim, for your wonderful explanation in English. एक बेहतरीन आंखों देखा हाल आपने सुनाया जनाब हाशिम। एक बार फिर से आपका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। तो मैच की ओर लौटते हैं इस वक्त। तो जहां तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य का, द टारगेट इज 53। फर्स्ट बॉल ड्रिवन दैट वन टर्न टू लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल, और एक रन के साथ इस वक्त रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है व्हाइट हॉर्स का। और जहां तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य तक पहुंचने का, 53 रनों का लक्ष्य, और नौफल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। आरिफ अपना खाता खोल चुके हैं पिछले गेंद पर। गेंदबाज शाकिर जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, 25 रन उन्होंने बनाए थे। 25 रन स्कोर्ड बाय शाकिर एंड विद हिज हेल्प एसटीसी जप्पू स्कोर्ड फैंटास्टिक टोटल ऑफ 52 रन। नाउ द टारगेट इज 53 फॉर देम। और शाकिर अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद शेयर किया और गेंद सीधे स्लिप कॉर्डर पर पहुंच चुकी है, ऐसा कहना पड़ेगा गली पर पहुंच चुकी है। स्टीयर किया था लेकिन गेंद को जमीन पर रखने में सफल। फर्स्ट बॉल गोल्डन टक डिसमिसल फॉर नौफल। गली फील्डर ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, नौफल डिपार्ट्स फॉर गोल्डन टक। तो इस वक्त जहां तक सवाल है और जहां तक सवाल है नौफल का विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त दबाव स्ट्रेट अवे व्हाइट हॉर्स के ऊपर और नए बल्लेबाज इस वक्त तैयार। निजाम इस वक्त सपना करते हुए, शाकिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर निजाम ने गेंद को मोड़ा, इस वक्त वाइड स्लॉग ऑन पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान। पॉइंट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर व्हाइट हॉर्स। और आरिफ बैक ऑन स्ट्राइक। और जहां तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य तक पहुंचने का व्हाइट हॉर्स के, तो 53 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक बेहतर शुरुआत उन्हें उनके बल्लेबाजों को यहां पर देनी होगी। और शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। Swings and this time he finds the gap. It's gone many a miles. It's a big A in a flatter version. Outstanding struck came from the bat of Arif. और यहाँ पर देखिए, have a look at this in the replay. He picked that one from the right spot and lofted that one in a style just wide of a fantastic stage. We are watching here right side of our ground. This is a magnificent struck. Picked that one perfectly and lofted that one in a style for a maximum. और छक्का इस वक्त आरिफ के बल्ले से लग चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। लक्ष्य से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई है। रन लेना चाहेंगे और ले चुके हैं यहां पर। मिसफील्ड इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा। वाइड का भी इशारा। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। और व्हाइट हॉर्स के बल्लेबाज शाकिर, माफ कीजिए, व्हाइट हॉर्स के बल्लेबाज आरिफ इस वक्त जान चुके हैं कि एक विस्फोटक शुरुआत इन 2 पावर प्ले ओवर में उनको देनी है। दाहिने हाथों पर द विकेट शाकिर। ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बाय द फील्डर।
by the batsman, in fact, and the batsman crossed over for the single, and with a single run, the scoreboard moving up to 11 on the board. निज़ाम ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और हरीफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज शकीर दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में निशु इस वक्त गेंद का पीछा करते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर यशस्वीतम पूर्ण करने में सफल. Couple of runs added to the total, and with that couple of runs, the scoreboard moving up to 13 on the board. This is an absolutely fantastic start for White Horse. Just chasing the victory target of 53 in 6 overs. They managed to score 13 runs on the board, except they lost their wicket Nofal in the second delivery of their innings for Golden Duck. And they managed to score 13 runs on the board. And fantastic struck came from the bat of Arif in the previous over. He just hit that one for a 6, just wide of the stage of our ground. और 13 रन बेहतरीन शुरुआत, exactly 40 runs required in remaining 5 overs, and the required run rate is now straight away coming down to exactly 5 runs per over. 5 रन प्रति ओवर के औसत से रन्स बनाने 40 गेंदें बाकी हैं 30. और गेंदबाजी पर इस वक्त उतरते हुए हमसे दूर वाले छोर से यानी मनोज शेट्टी और अश्विन राज पुजारी एंड की ओर से अयाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. सुबह का वक्त लगभग 11:43 यहाँ पर बज चुके हैं. इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई, सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई. और ओवर की पहली गेंद लेकर अयाज, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लंगोन के ऊपर से, और लंगोन के फील्डर जो खड़े खड़े रह गए और गेंद को देखते रहे कि गेंद उनके सिर के ऊपर से किस तरह गुजर रही है. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है. इस वक्त बल्लेबाज जो छक्का इस वक्त लगा चुके हैं निजाम, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर. तो निजाम और हरीफ दोनों इस वक्त गरजते हुए यहाँ पर, और व्हाइट हॉर्स एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ. तो छक्के के साथ इस वक्त गेंदबाज अयाज का स्वागत किया निजाम ने पिछले गेंद पर, और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. अयाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, लंगॉफ और वाइडिश लंगॉन, और गेंदबाज इस वक्त तैयार था हाथों पर विकेट. फैंटास्टिक डिलीवरी, दिस एन आउटस्टैंडिंग वन, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा शायद गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाई थी, और निश्चित रूप से यहाँ पर बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं. लेकिन बेहतर गेंद थी इस वक्त अयाज की. छक्का प्रदान करने के बाद एक बेहतर कमबैक करते हुए बल्लेबाज को मुश्किल में डालने में सफल पिछले गेंद पर गेंदबाज अयाज. और इस बीच फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अयाज सामना करते हुए इस वक्त निजाम दाहिने हाथों पर विकेट उछाला, लंगोन पर गेंद जाती हुई और गेंद शायद रोक ली गई है. फैंटास्टिक फील्डिंग, और सिर्फ एक मात्र बल्लेबाज को मिलेगा. अजीत जो फील्डर थे लंगॉफ पर, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका, इस वक्त लंगोन पर अपनी लंगॉफ से बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद को अंदर की ओर ढकेलने में सफल, और दूसरे फील्डर शाकिर गेंद को फील्ड करने के बाद जब तक थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 20 ऑन द बोर्ड. अगली गेंद अयाज, ये गेंद आरिफ के लिए, गेंद को उछालना चाहा चूंकि इस वक्त नॉट कनेक्टेड दैट वन फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट, और विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते हुए अपने दूसरे प्रयत्न में विकेटों के पीछे रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. 20 for the loss of 1 wicket. The scoreboard stays at in the over number 2 in progress. अयाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त डिस्पैच किया है खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. तो छक्के और चौके की बौछार यहां पर लगाते हुए, और इस बार गेंद को जिस तरीके से पुल किया था शायद मुझे भी एक बार ठीक से पता नहीं लगा कि गेंद कहां पर गई है, और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए इनटू द गैप एज वेल. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर. 24 ऑन द बोर्ड. दे आर रियली प्रोग्रेसिंग along nicely in this situation. अयाज निजाम के लिए, ये गेंद इस बार जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन, मिसेस. हरीफ जो कि बल्लेबाज थे स्ट्रोक्स खेलने में चूके, और गेंद जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 25 now for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. First over cost 13, second over cost 12, and now they are looking in a commanding situation. In fact, it's 25 for 1 after completion of 2 overs scored by the batsmen of White Horse. Really, they are looking in a commanding situation. ಸುರಗಿರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಸುರಗಿರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो पावर प्ले का भरपूर फायदा यहाँ पर उठा चुके हैं बल्लेबाज व्हाइट हॉर्स के. 25 रन बटोरने में सफल. पहले ओवर में 13 रन बने, दूसरे ओवर में 12 रन बने और अब 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और देखना है कि अब बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यानी बैटिंग यहाँ पर अपनाते हैं. पावर प्ले के बाद गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त कार्तिक और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार आरिफ. 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद. 27 रन अब चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी है यहाँ पर 24 और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त कार्तिक तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर चूके और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल. 22 के रूप में 28 ऑन द बोर्ड, दैट मीन्स 26 ऑन द बोर्ड, दैट मीन्स 27 to get for victory. 23 balls left in overall calculation in their innings और गेंदबाज कार्तिक का बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद swings this time into the gap as well. He's got at least couple for that. It might been cut off just inside the fence और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्विंग कर दिया था वाइड इस लगा और डीप मिड विकेट के बीच और काफी लंबा दौड़ लगाते हुए गेंद को जब तक डीप मिड विकेट पर फील्ड करे सीमा रेखा के अंदर फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. और कार्तिक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. यह गेंद इस बार उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, अपील लेकिन गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाते हुए और कुछ हद तक लेग से बाहर की ओर गुजरते हुए रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 28 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर प्रगति पर और गेंदबाज कार्तिक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को पुल करना चाहता लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट. Has got a single and with that single run the scoreboard moving up to 29 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Fantastic progressing here and a fantastic opening, fantastic second wicket partnership is now building up here for White Horse between Nizam and Isbar. Top edge and this time I think it fell in the wicket area. तो जैसा कि मैं फरमा रहा था fantastic second wicket partnership is now building up here between Arif and Nizam. और इस बार गेंद टॉप एज पर टकराए थे गेंद लेकिन खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए रन का इजाफा 30 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट. और कार्तिक एक बार फिर से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए निजाम के लिए ये गेंद टॉप एज. इस बार मौका जरूर है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फीडर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल एक बेहतरीन जजमेंट के साथ. इस बार थोड़े से सफल होते हुए देखिए इस वक्त किस तरीके से स्ट्रोक्स को उछाला था. टॉप एज पर गेंद टकराए थी और हवे का रुख काफी हद तक कम इस मैदान पर. अगर हवे का रुख कुछ हद तक तेज होता तो शायद गेंद सीमा रेखा को पार कर सकती थी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से. तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है. द मैन डिसमिस्ड इज निजाम आफ्टर प्लेइंग अ गुड नॉक फॉर द साइड इज बैकिंग टू पेविलियन. और रिप्ले पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से इस कैच को लपका आसानी के साथ फील्डर ने. 30 for the loss of 2 wicket over. 3 overs completed और जहाँ तक सवाल है जस्ट 5 runs came from this over from कार्तिक और पहला बेहतर ओवर इस वक्त कार्तिक फेंक चुके हैं. 3 ओवर के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा व्हाइट हॉर्स लुकिंग लाइक अ कमांडिंग सिचुएशन. 30 रन्स स्कोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट. 3 over to go and 23 to get, that means 18 balls remaining, 23 runs more. Now they have to score for victory with the required rate of exactly 7.66 runs per over. और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और देखते हैं यहाँ पर व्हाइट हॉर्स के बल्लेबाज बचे हुए 18 गेंदों पर 23 रन बना पाते हैं नहीं तो इससे पहले के चौथा ओवर प्रारंभ हो. आगे का आंखों देखाल सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा. आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू. KGF Kings ಹಾಗೆ ಸುರಗೇರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ KGF Kings ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ ನಾನು ಜಿಪಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸುರಗೇರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. So thank you so much, Gopi. And White Horse Mangalore chasing the huge total of 53 runs to win this match. They're very much on the target and very much on the right track of winning this match. Santosh Japu brought in attack, lovely delivery just around the legs of the batter, chance of run out, and this is going to be disappointment and disaster for the team. Again, they couldn't manage to defend this total, means it's absolutely it's going to be a more disappointment factor. And Planet Air STC Japu after got a 52 huge runs in this
day number 3. And can you believe this? The way that the team is absolutely chasing this total. And this man is responsible for that. And he will going to get the distance. It's absolutely misjudgment by the fielder in the deep cow point region. Mansoor, the man in the deep cow point region, it absolutely came in a catchable height. But have a look at the stroke there from Harif. He's really looking so good so far in this match. Up and over and just a little bit misjudgment. At least if you're not able to get the catch, you have to save the runs. It's not necessary that you have to take the catch, but sometimes the presence of mind is so important. At least he wanted to save this 6 at least, but that 6 will going to give a lot of comeback here for the team. Top edge opportunity. Who will go and take one? And Nishu there in the deep long on, making no mistake at all. The entertainment innings which is comes in and here from Arif. Really played a good innings. The match winning innings, one can say, if they were going to win this match, because match which is not yet over. The cricket is game of glorious uncertainty. One wicket can make a game a little bit either way, take the match either way. It's 38 for 3. But very good innings which is comes in and Santosh Japu has got a breakthrough. I'm just imagine if the fielder in the deep cow point will going to get that one. It may be that opportunity for the team to back in the game. The hero of the previous match, of course, even he played a heroic innings, but is ended with the losing side. This is going to hurt him a lot in the previous match for the White Horse. What a strike, what a game he played for his team, but without completing the job. This is what I'm always mentioning about. Once you get the game into your side, you have to take that one until the end. And it's 38 for 3. Again across the line, Rakshak loves to play the big shot. Played down to deep square leg region for a single. With that single score, but moves on to 39 for 3. It means 14 more runs required for the victory. 14 balls and 14 runs. The ball-to-ball run required here for the team White Horse. Oh, now this is asking for trouble. Why? Why? This is once again is a poor piece of judgment of the run. When you are having a fielder like Shakir behind the stump, almost in the short fine leg, is very fine. It's always asking for trouble. It's always asking for the trouble. He's a very good sharp shooter. No way to Rakshak to survive from the throw from Shakir. Now, the 2 wickets in a quick time will going to give the comeback here for the team. Flying at air STC Jaipur. Santosh is giving everything here. 14 needed still from 13 balls. This is what sometimes the beauty of the cricket is all about. A very important match here for the White Horse. After getting such a good position, nevertheless, they doesn't want to lose this opportunity to win this match, because they have to win each and every matches here onwards. Some exciting eyes in the spectators gallery, observing the match, enjoying each and every moment of this KUDLA Premier League 2026 season 10. It's something special. And we are watching here is Shai Kishore. So excited to watch the result of this match. Oh, lovely delivery. This is what the speciality of Santo Japo. Now he brought back this match to the little bit for the team. Excluding that 6 in that over, but he bowled brilliantly. No doubt at all. We are watching Nizam and Naufal having some good chat. And but the good chat, what they are just looking for the next match. The particular match is going on here. They are very excitingly watching here. This is the water dugout. This is the water dugout is so excited to see the result of this match. Both the team, of course, White Horse wanted to win this match. 14 needed from 12 balls. Match is evenly poised. The danger bowler, the Karthik, brought into attack. Now all up to this gentleman in the middle. Ajmal, the experienced campaigner, and Preetham, such a quality batter. Very energetic and young. Fantastic
player have to do the job here. The 14 to get from 12. Not only the we are watching here is senior citizens, children's, everyone excited and watching this penultimate over. And now there's some students I'm watching. I'm sure that they are not bunked the class. Again, played it nicely into mid-wicket region. One more single, a lot of uniforms you can see here. They're watching their mobile. Maybe sure that they're watching live telecast of Bedra Media. That's a sure. That's a sure. 14 needed. Oh, this time hitting him outside the line. They will going to get the single for that. Leg by call by umpire. 40 for 4. Of course, even we are talking about only students, but someone is bunked the office as well. And tomorrow they have to write the leave note. One of the specific reason which is headache and cold. It was surely in our college time we are having experience of doing that. And one more big one is my grandmother is passed away. So many times. So many times the grandmother is passed away. This is what the uniform we're watching, the red color danger man. Enjoy the game of cricket. So shy, and here comes the next delivery. Again, played it very nicely into square leg region for an easy single. I'm still remember the principal asked how many grandmothers you have got. Now here comes the big man in the picture. Bandi Abhimani Balaga. Beautifully bowled. Fantastic delivery. Now it's going to be so excited. Very important dot delivery of Karthik. Left arm round the wicket balls. Loved it! Straight down the ground. High! Will it going to be a handsome? No, it doesn't. Nisha underneath it. Huge wicket. Now we can see that how the game is changing here. White Horse can't believe that once they are cruising towards the victory and they just lost the momentum. Once they lost the wicket of Harif, they lost the momentum. 25 runs scored in 2 overs. 25 runs in 2 overs. Can you believe it's now 43 for 5. Now the last over remaining. 10 runs required for the victory. So as you can see there's some sad faces, maybe the supporter of White Horse. They are really not expecting that there's going to be this kind of changes in the game. Some small children's kids are enjoying the game of cricket along with their parents. Loves to come here because UCG, the one particular cricket ground, is always enjoyable cricket ground. Under the shelter of huge streets. Is always one of the greatest feeling for any cricket lovers to come and watch. There's a 10 required from 6 ball. Now Sunil will go into ball that last over, the very, very interesting over. Now we are seeing is, of course we are watched in that banner, but now is a real Bandi. Gautam Bandi is absolutely the big man in the picture. Lovely pick here. The cameraman always is searching for this man, but very easy for search him, isn't it? And behind him, Chetan Barke. Very good combination. Outside the line of off time, beautifully bowled. 5 balls, 10 runs required for the victory. Five balls, 10 required. Pritham have to deliver one big shot here to come back this match. Sunil. Rehman, nicely in the mid-wicket region, right in the gap. At least a couple of runs here. This is a very good contest. The two players playing for the same team, Pritham and Sunil. Now it's going to be very interesting. 4 balls, 8 runs required for the victory. White Horse desperately wanted to win this match.
Even STC Japu. Oh, edging it down, but not more than a single. Shakir is so good in that region. He will not go to give the. Oh, they wanted to desperately wanted to come back for the second. The Preetham desperately wanted to come back for the second, but Raghu is saying that I got the potential of doing the job. You stay there in the non-cycle, I will try for the big one. Wait and see. Experienced campaigner Raghu got the ability of hitting a big shot. Even he's a little master, but he got the potential of doing the job. Experienced campaigner. Now cameraman covering some familiar faces. Kishore, Sai Kishore, the man did a lot of hard work behind this cricket tournament, KUDLA Premier League. Here comes next delivery. Rehman upishly, but safely. Will it go and come back for the second? Preetham will not going to get a couple of runs. You know exactly now. This is the three important deliveries remaining here. 6 needed from 2 balls. Now we can see some auto drivers also. They're not bothered about their auto rickshaw, but they wanted to enjoy the game of cricket. Oh, missed it. Now Sunil Binwell standing in this over. The 6 needed from last delivery. This has been a final delivery. Preetham have to deliver one big shot. No other excuse. Preetham did it in the previously several times when they needed some big shots. He's such a good striker of the ball because they have to do the job. The do or die situation for White Horse if they wanted to remain in the competition. They have to get the one maximum here. 6 needed from 1 ball. Here we go. Miss it. Sunil did the job. Unbelievable victory for the team STC. Planet Hair. They won this match by 5 runs. 25 runs in 2 overs. Harif takes a match away from the opposition, but once he away from the ground, the match is also gone away from their side. This has been a hurting point, hurting factor for the White Horse. Even they got such a good position to win the match, but still they are ended in a losing side. This is what the cricket is all about. But STC are definitely going to enjoy this victory because they nevertheless, they were nowhere in the picture at one stage. So congratulations. Now the points table. KGF Kings 5 out of 5. The top. Planet Justice is now jumped into second place. Planet Air STC jumped into second place. Now Red Wings Rangers are in the third place. New Star Chocobeto in the fourth place. And United URWA is in the fifth place. Now competition is going to be very, very important and very exciting. Sluggish Strikers also in their competition. They another 2 matches to play. Man of the match, which goes to the man who scored more than 50%, almost 48% of the runs from the bat. Once again, Shakir is a player will going to receive the man of the match and is responsible for the 1 run out. The direct hit which is hit the stumps and here we go. I request, Shakir will be the man of the match of this match. It's time to change in break, time for break. And after the break, once again, Asim will going to take the microphone, the first 3 over of the first innings. Thank you.
Thanks, Mr. Satish. Another big game coming up, actually, between two good teams, actually. Just got to find out who plays who. KGF Kings, tabletop are taking on Suragiri Strikers. Big game, really is. Big game for KGF as well, although they are into the qualifiers, but can't take things lightly. They gotta get more. They gotta get another win. That would be 6 on the bounce, on the trot. Suragiri Strikers are gonna really try and think about their game plans, and they gotta execute those. KGF won the toss, have elected to field. Yeah, they've elected to field first every time, and they've been victorious that way. First ball of the game. Who is the bowler? Riyaz. Riyaz to start the proceedings, one of the renowned bowlers bowling first up. And that's out, plumb in front, no. Might be unsighted, the umpire's unsighted, but looked very, very close, really. But in the end, 1 run taken. Right on the money, Riyaz. First delivery, bang on target. Harshad Bajjal's also behind the stumps, is trying to nip and tuck the fielding a little bit. Just got to try and make sure that the fielding is well set. The second delivery now. Goes for the big hike. Over towards long on, just for 1 there. Just gets off the mark with that single. 2 runs. The caught, 2 balls have been bowled out. 6 overs match, 2 overs of power play. It's all the same, nothing much differential about the game. Try to reverse it. That got it away. No, straight into the hands of the fielder. Just got it right or left of the fielder. Could have raced away. Good bit of fielding there. Good pick-up, good throwing. But the batsman's back. Naushad and Tawfiq are the 2 batters out there. Tawfiq, one of the strong strikers of the ball. Big ball striker. We all know about it. Naufal at the same time. Naushad, sorry, is also carved away over extra, just got it away. Just for a moment, he's tracking back for the second. He's going to get a couple runs there. 2 runs to the total, takes the scoreboard now to 5. Suragiri Strikers got to try and score runs here. Got to put KGF on, in a bit of bother actually early stage. In the air, that's going to go the distance, looks like. Yes, that's the first 6 of the innings coming from the blade of Tawfiq, and this is what I talked about Tawfiq. Tawfiq can play big shots. He's a terrific timer of the ball, terrific striker. He gets one in the middle, it's going to go out of the park. But the execution of KGF in the tournament is something that I got to talk about. It's been absolutely magnificent. Goes big again. Does he get the distance this time? No. Just short of the fielder, thinking about the second. No, just the 1. Good bit of fielding there at long gone. 1 over done and dusted. Suragiri Strikers 12 for none. Good start really is after being put into bat first by the KGF.
And they know that KGF have got some outstanding batters, and their picks have been top-notch, really, and that's one of the reasons why they are in the top of the table. 5 wins back-to-back, and that will give them psychological advantage to track further in the tournament. Suragiri strikers, they're going to find a way to win the games. Never easy against the KGF big boys, because they played some sensational cricket right since yesterday, and they're doing everything right. They're not putting a foot wrong here in the tournament so far. And I had a conversation with Mr. Hanif, one of the think tank strategists in the back end of KGF. He's very happy about the results. He's very happy about his team performing at the highest level. A very good cricket passionate, and also one of the top-notch authoritarians at the KFC, Krishnapa, also had shared a very good conversation with me at the, and that might be now going down the leg side. At the com box, coming back to that discussion that I had with Mr. Hanif, a very passionate person, brings a lot to the team with his ideas, with his innovations. A cricket lover, always takes cricket as a challenge, buds the young talents. One good thing about him. And that might go all the way. Yes, it does go all the way. It's gone all the way for a 6. Superb ball striking. That is came from the meat of the bat of Nausha. Like I said earlier, these two are gun strikers of the ball. If they get something in the midst of the blade, and that's going to travel out of the park for a superb. That's going to travel out of the park for a 6 anyways. Harshad Bajal bowling from the Manoj Shetty and Ashwin Raj Pujari end. Sweeps away. Beautiful batting. This is Nausha is on song. Is batting brilliantly, is taking the bowlers on, is taking someone like Harshad Bajal, is a smart operator and best in business. But no respect for Harshad Bajal whatsoever. Has been taken Harshad Bajal into the cleaners. Nausha, dominator in the game. What a dominator has been so far. That's good bowling, smart bowling there. Good bit of work from the back of the hand. Harshad, not easy to get away with. Harshad has got plenty of armories in his repertoire. Has been one of the top-notch, underarm dominated players for a long, long time, for about a decade now, I think. What a player, what a cricketer has been. At once, across the line, not sure what. Right, this might be going down the leg side, is it? With the angle, I think, with the angle that Harshad's bowling wide of the crease, I think generally gets the ball to... It's very hard in underarm cricket to rule the LBW with 100% precision. That's the challenge that the umpires have gotten in general. Taufik back on strike. Taufik is a tremendous ball striker, like I mentioned earlier. Goes big. Harshad in action. He wants to take that catch. Will he take it? No, he on the second attempt has taken that beautifully. He lost it for a while. It was in the hot sky. And takes it beautifully. Taufik's got to go back to the hut. Difficult catch there was. I think he misjudged to a little bit, to a certain degree, I think, but he was able to keep the eyes on the ball, and he was agile enough to take it back on the second attempt. 24 for 1 after the end of over number 2. Harshad Bajal is done in his first and given away 10 runs in his first over. 6-over game, power play done and dusted, and they've been able to leverage the power play. The KGF think tank will need to act very quick. They've got to try and restrict. Like I mentioned in the last game, Whitehall struggled to get to that chasing mark, despite of chasing it brilliantly right up until that 4th over. In my view, Ajmal had to stay there in the end, but he gave it away. One of the most experienced batters not chipping in for Whitehorse, and they lost that game in the end. Right, get back to this game now.
Beautiful bowling, good bowling. That is good bit of slow delivery from Ashwin. Ashwin's a very good bowler, actually bowls with a lot of plans, a lot of strategies, brings about new repertoires, new dimensions, new varieties. Got it away, just out of reach, just falling in front of the fielder. Top edging that one now, should almost, but it's good bowling really. This is the over where they got to pull things back. They got to try and make sure to limit the run scoring pace actually. Gitesh, new batter in. Partnering now should pull away. Right into the deep square leg area. Will just be one. Not thinking about the second, rightly so. Just the one. Overthrows here. That is sloppy. Absolute sloppy from the fielder. And also the wicketkeeper, Harshal Bhatt, should have collected it. But in the end, not sure whether the batter has actually gotten away. But got to wait for the umpire's decision there. The umpire thinks that there's no extra run there, I think, because the batsman got away in the middle and on the way when he was collecting the ball. Just the one. Good decision made by the umpire, because the umpires have a very good view and they make the judgment. Excellent, excellent delivery. Superb delivery. They got to do that for a longer time now. Ashwin is bowling with a plan. He's bowling slowly. He's not giving that pace to Nosh. Nosh loves pace on ball, actually. Another good delivery, that hitting outside the line. Safe shot to play, actually. Just the one run. 26 for 1. 2.4 overs have been bowled out. And I think they're going good at the moment. 27. 27 for 1. 1 run, you got it. 27, 1 run deducted, no worries, subtracted. Beautifully played down towards the mid-wicket region. Will just be one. Thinking about real sloppy. That almost cost them a boundary. Hanif in the dugout is not happy at all. Is not happy about, not sure what was that, but anyways, is not happy. The fielder's done a big lapse there. 3 overs done and dusted. 30 for 1. Surrogate strikers find themselves, so they're going to get a good pace. They've got to try and pull things back here, KGF, if they've got to get back into the game. Because you know what? If they can get to that 50-55 range, it'll be very difficult to chase it down. To tell you more about the next 3 overs, we've got with us Mr. Gopi, who's going to give you a bit of an explanation in his beautiful Hindi explanatory ways. Thank you, Mr. Hashim, for your wonderful explanation in English. And we're straight away coming back to the 4th over. And the 4th over, New Star Chokabettu versus Eastern Avengers. The match played between these two teams, next match. And because of that, I request once again all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. This is the match number 23rd. This is the match number 22nd of this prestigious cricket tournament, KPL, KUDLA Premier League Season 10 2026 is now progressing here. First ball of 4th over is now coming up. पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त कट करना चाहा, चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। तो गितेश इस वक्त सपना करते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, अर्शद बजाल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, गेंद पैरों पर गेंद टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। बैक लेग पर गेंद टकराई थी गितेश के, और आखिरकार यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था। लेफ्ट आर्म गेंदबाज अर्शद बजाल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट उन्होंने गेंदबाजी की थी। गेंद इस वक्त लाइन पर टिप्पा खाई, बैक लेग पर टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित, और गितेश की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। नाउ सेकंड विकेट लॉस्ट, गितेश डिपार्ट्स, नाउ इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स का जहां तक सवाल है, कम से कम 50 के आंकड़े को यहां पर उन्हें पार करना होगा, क्योंकि केजीएफ के पास न सिर्फ सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है बल्कि बलाढ्य बैटिंग लाइनअप भी है। तो इसके खिलाफ अगर उनके गेंदबाजों को गेंदबाजी करनी है तो उनके बल्लेबाजों को इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर यहां पर खड़ा करना होगा। और इस वक्त जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो अर्शद बजाल
गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए आतिफ जो कि इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अरशद बजाल फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट स्वीप करना चाहा, गेंद इस वक्त विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे, लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाज को रोक नहीं पाया और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। और यहाँ पर मॉनिटर पर देखिए जनाब बशीर साहब जो कि KGF फ्रेंचाइजी के ओनर है, मालिक है, इस वक्त मॉनिटर पर नजर आते हुए हल्की सी मुस्कान चेहरे पर KGF किंग्स टीम के मालिक श्रीमान बशीर जो कि हम इस वक्त मॉनिटर पर हमने देखा, इस वक्त हमारे साथ कमेंटेट बॉक्स में विराजमान है। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, जस्ट कॉन फॉर अ माइटी हैव नॉट सक्सीडेड, और गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर और एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और गेंदबाज अरशद बजाल गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए आतिफ के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद स्टंप्स पर टकराई। आतिफ खुद ये समझ नहीं पाए कि गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए किस तरह से स्टंप्स पर जा टकराई है, वहीं पर खड़े रह गए। 3-4 सेकंड उन्होंने सोचा भी कि गेंद कैसे उनके थ्रू इस वक्त जा चुकी है, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, क्विकर गेंद थी और आखिरकार आतिफ के बल्ले को वंचित करते हुए मिडल लेग स्टंप पर जा टकराई, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। और 3 विकेट गिर चुके हैं, 32 रन इस वक्त स्कोर बोर्ड दिखाई देता हुआ। और जहां तक का सवाल है ओवर का, तो चौथा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। फयाज नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और अरशद इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, खूबसूरती के साथ तेजी के साथ उनके लिए दौड़ पड़े और एक रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे फयाज और आखिरकार एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं, स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 4 overs has been came to an end and now still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in their innings. ईस्टर्न एवेंजर्स और न्यू स्टार चोकोबेटो के बीच में अगला मैच खेला जाएगा, तो इसलिए एक बार फिर से मैं दरख्वास्त निवेदन करता हूँ दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन न दर्ज करने के लिए। और जहाँ तक का गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए 5वां ओवर शुरू होता हुआ सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स की पारी में, माफ कीजिए सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स के बारे में। और इस बीच गेंदबाज तैयार नहीं और की पहली गेंद लेकर फयाज जो कि इस वक्त सामना करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र अक्षर में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दर्शकों की ताजाद मैदान पर सुबह से ज्यादा इस वक्त नजर आती हुई। और आज इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का तीसरा और अंतिम दिन है और 8 लीग मैचेस, 3 प्ले ऑफ मैचेस और एक मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले आज रात को यहाँ पर खेला जाएगा। कुल मिलाकर 12 मैचेस आज खेले जाएंगे और ये मैच नंबर 3 इस वक्त प्रगति पर। और कार्तिक का इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए फयाज सामना करने के लिए तैयार, कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज का, तो कार्तिक ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद, यह गेंद स्वीप कर दिया हल्के से गेंद को इस वक्त फयाज है। गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा हो चुका। 1 run added to the total and with a single run the scoreboard moving up to 34 for the loss of 3 wicket at the start of the 5th over। और सामना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज नौशाद और इस बीच गेंदबाज तैयार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। 1+1 2 runs added to the total और वाइड का इशारा अंपायर का हो चुका, 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और गेंदबाज
अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकली शॉर्ट थर्ड मैन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। पांचवा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। यह गेंद पैरों पर गेंद टकराई नहीं गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से शायद बाहर की ओर निकलती हुई अपील को नकार दिया इस वक्त बल्लेबाज ने। और जहां तक सवाल है इस वक्त लेग कटर गेंद थी अंतिम क्षण में ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलती हुई हालांकि गेंद लाइन पर टिप्पा खाई थी जरूर लेकिन टिप्पा खाने के बाद आफ्टर पिचिंग अपने दिशा को बदलते हुए और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त रनों का तो रन्स मिलेंगे एक 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार कार्तिक का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट फयाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद फयाज के लिए हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ फील्डर काफी पीछे तैनात 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल इंटेलिजेंटली स्वेप्ट अवे बाय फयाज इन दिस डिलीवरी हल्के से गेंद को मोड़ दिया था ये जानते हुए कि गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर जो है काफी पीछे है और चतुरता के साथ क्लेवरली 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 40 रनों पर 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद इस बार हल्के से एक बार फिर से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त इस बार मिलेंगे सिर्फ 1 रन क्योंकि फील्डर पहुंच चुके हैं इस वक्त स्क्वायर लेग पर गेंद पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 41 रनों पर 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड दिस द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर नौशाद आरंभिक बल्लेबाज की तौर से मैदान पर उतरे थे अभी तक क्रीज पर डटे हुए और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार गेंदबाज की गेंदों का ये गेंद इस बार गेंद को उछाला गेंद हवे में जरूर लेकिन फील्डर काफी पीछे था डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा 42 for the loss of 3 wickets and the 5th over has been came to an end in Suragiri strikers innings। अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में सुरगिरी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है सूरज आसमान की बुलंदी के इस वक्त छू चुका है अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा यूसीजी उर्वा क्रिकेट मैदान लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट पर एक प्रतिष्ठित श्रृंखला आईपीएल ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट के अनुवर्त नाम से जाना जाता है केपीएल कुडला प्रीमियर लीग सीजन 10 2026 इस वक्त एक शानदार प्रगति इस मैदान पर करते हुए और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का तो गेंदबाज मनोज शेट्टी और अश्विन राज पुजारी की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए नासिर और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज नौशाद जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। फर्स्ट बॉल पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था तो पर विकेट नौशाद के लिए और नौशाद का स्ट्रोक इस वक्त गेंद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है। इट्स गॉन फॉर अ मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक और ऐसा देखिए जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है एंड ही जस्ट गॉट दैट वन फॉर अ मैक्सिमम। छक्का इस वक्त उनके खाते में जुड़ता हुआ और इस छक्के के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर इस बार एक बार फिर से गेंद इस वक्त लंगोन जी नहीं इस बार भाग्य नौशाद का साथ नहीं देता हुआ और लंगोन फील्डर द्वारा इस वक्त लपक लिए गए लेकिन एक बेहतरीन प्रयत्न जरूर किया था लगातार दूसरी बार नौशाद ने लेकिन इस बार स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 48 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 48 for 4 फैंटास्टिक इनिंग चैंपियन फ्रॉम नौशाद and after being playing a fantastic knock for their side he's backing to pavilion and a 4th wicket loss for Suragiri strikers। Naushad out for 21 and it's 48 for 4। चार गेंदें अब बाकी उनकी पारी में नए बल्लेबाज इस वक्त मौजूद मोटे कद के खिलाड़ी इस वक्त जुनैद लेकिन काफी प्रतिभाशाली और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार जुनैद सामना करने के लिए तैयार इस वक्त गेंदबाज नासिर की गेंदों का और
नसीर गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट जुनैद के लिए उछाला गेंद को, लेकिन गेंद इस वक्त लंगोन से बाहर जा चुकी है 6 रनों के लिए. What a dream start for Junaid in his very first delivery. जैसा कि मैंने पहले भी इस गेंद से पहले कहा था, मोटे खिलाड़ी जरूर लेकिन काफी प्रतिभाशाली, और अपनी प्रतिभा का यहाँ पर अनावरण करते हुए जुनैद पहली गेंद को डिस्पैच करने में सफल, लंगोन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए. और इस छक्के के साथ 50 कम्स अप फॉर सुरगिरी स्ट्राइकर्स, 54 for 4. 2 छक्के इस ओवर में गेंदबाज नासिर प्रदान कर चुके हैं पहले 3 गेंदों पर. दाहिने हाथों पर विकेट, यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बेहतर गेंद, रनआउट का खतरा, निशाना चूक चुका है इस वक्त, निशाना चूक चुका है, ओवर थ्रो, और ठीक तरह से बैकअप नहीं हुआ. दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. 2 रन यहां पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए, ठीक तरह से बैकअप वहां पर नहीं किया गया था, और 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 56. अब तक 56 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर. इस श्रृंखला का सर्वाधिक स्कोर इस वक्त खड़ा कर चुका है सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स, 56, और 2 गेंदें इस वक्त बाकी अब उनकी पारी में. दाहिने हाथों पर विकेट नासिर, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची. हर्षद बजाल जब तक गेंद को फील करे लेग बाई के रूप में 1 रन प्राप्त कर चुके हैं, 57. और अंतिम गेंद उनकी पारी का लेकर गेंदबाज इस वक्त नासिर तैयार, सामना करते हुए फयाज, और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर फयाज कितने रन बटोर पाते हैं. दाहिने हाथ ओवर द विकेट नासिर, फयाज के लिए गेंद को उछाला फयाज ने इस वक्त, लेकिन नॉट क्वाइट मिडली गेट, स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर. और फयाज की पारी समाप्त हो चुकी है उनकी पारी की अंतिम गेंद पर. सो द इनिंग्स इज ऑफ फॉर सुरगिरी स्ट्राइकर्स, दे फिनिश्ड विद 57 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द स्टिपुलेटेड 6 overs, एंड नाउ दे सेट a huge victory target of 58 in front of KGF Kings. 58 runs. KGF Kings have to score with the required run rate of exactly 9.66 runs per hour. They have to score for victory in exactly calculation what we are saying. And with the help of 10 wicket, they have to score for victory. The present equation shows for them 58 the target for them. 58 रनों का लक्ष्य निर्धारित है 6 ओवर में, और यहाँ पर KGF Kings की पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು 2 ತಂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ 50 at the target for KGF Kings. स्कोर कार्ड इस वक्त दिखाया जा रहा है. सुरगिरी स्ट्राइकर्स नौशाद टॉप स्कोरर है 21 रनों पर, तौफिक ने 10 रन बनाए, और दूसरे खिलाड़ियों ने सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन दिया. 57 रन 6 ओवर में, 58 रनों का लक्ष्य, 50 एट द टारगेट फॉर KGF Kings. उनकी पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल के बाद. तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर KGF Kings की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. The man of the match of the first match, which is Riaz. Riaz, I request Mr. Riaz to go to the presentation dais and receive the man of the match award, which is Riaz.
I request Mr. Riaz to please collect your man of the match award in our presentation dice for the first match for his match winning knock. And second match, man of the match winner Shakir. I request Mr. Shakir to go and collect your man of the match award of team Planet Air STC. Ah, what a shot! What a shot and what a start for the match. This is going to be a magnificent stroke. Just stand and deliver very effortlessly. This is what I'm just talking about. This man can be a future. One more destructive batter, Haris Bajal. And we are only talking about Arshad Bajal now. Just the man is coming from same area. And one is left hand and one is right hand. And they're playing for the same team. NFC Pakkaladka. What a shot, isn't it? So easy for Harris. Just stand and deliver. Against Atif, it's not easy. Again, plum, absolutely plum, no doubt at all. This is what the capability, the potential of the bowler. Most of the time when the bowler is hit badly by the batter, the level of confidence is always going to be less of the bowler. But the bowler like Atif is always looking for the how to bounce back in the next delivery. So that batsman should be very careful when playing the next delivery. Because he's definitely wanted to bounce back and definitely going to get one good delivery. This absolutely preach of the delivery. Slow leg cutter. And got the reward for that. You cannot be a complete cricketer by hitting up the sixes and boundaries. But sometimes the reading the condition, the assessing the condition is so important. You got the start. But you have to convert that start into beginnings. You cannot hit each and every ball for the big shot, but sometimes you have to give the respect for the deliveries. This is one delivery you can see that which is coming almost in the middle and the leg stump, slight bit of leg cutter, and after he hit the six, Harris looking for the one more big shot, but he's choosing a long delivery, wrong delivery for that big shots in his back in the pavilion. Atif again, bowling with a short run up. Bowler's back drive. Oh, this time chance here for the run out. And now I'm not really understand. Riaz, he starts to run. Then he given some jerk. Arshad Bajal already run because thinking about the ball which is gone just right off the fielder. Bowler. It's 7 for 1. Very lucky Riaz here. That is just get away from that run out. The clean connection definitely is going to be around one more wicket for the team, Suragiri Strikers. Now in the presentation dies Shakir receiving the man of the match award from our chief guest for his all-round performance. Of course, the 25 runs he scored from the bat. And here is Bashir of KGF Kings presenting the man of the match award. And behind that, the dream of each and every players to be the man of the series. Electric EV two-wheeler vehicle waiting for the man of the series of KUDLA Premier League 2026 season 10. Atif from the wicket. Hitting him outside the line of off time. Surely, in fact, what we are talking about is always when the ball hitting him, the front foot of the batter is outside the line of off time. Atif almost begging for that. Of course, he's lost his balance. Now after that, he is doing that pull-ups. Push-up, correction. 7 for 1. Once again hitting him outside the line. If you see the angle, he's coming wide of the crease. And again, the front foot, what Arshad Bajal is touching his front foot, the right decision. This is the right decision. The two decision is absolutely perfect. The hitting him outside the line of off time, because you can see that Arshad Bajal is touching his front foot. The initial movement of the batters, you can see, of course, he's pitching, standing outside the line of next time. When the initial moment, when he was trying to go for the slog sweep shot, his front foot is coming outside the line of off. This time, lovely pick here from Arshad Bajal. Lovely pick there from Arshad Bajal. This is what he is trying for the last two deliveries.
This time suddenly the ball pitched in line. If you're going to miss that ball, definitely the opportunity of leg before wicket. The compared the previous two deliveries, this is almost pitched in line and hit that one almost on the middle stump. That will going to frustrate Atif there. It's 11 for 1 after completion of over number 1. A good start once again for KGF Kings given the loss of wicket of Harris, but still they got runs what they really wanted in the power play over. Team which is unbeaten so far in this tournament. They're playing their last match of the league stage. This is match number 6 here for the KGF. Just wanted to remain unbeaten in the league stage because that level of confidence will going to take into the qualifier number 1. If you face a defeat, then something is going wrong. Your level of confidence will going to decrease. But if winning here will going to galvanize the level of confidence, that's for sure. And that's why KGF Kings they doesn't want to lose their the grip and doesn't want to skip from that winning track. They just wanted to continue. Second over, Fayaz brought into attack. Drive straight to the fielder. Sumit just waiting for that. So many times I'm watching Riaz is dismissed in similar fashion. This one area is absolutely going to be towards the weakness. The most of the match I'm watching is trying to hit the ball. Of course, hit the ball through the line, but he couldn't manage to keep it down. You have to do one thing here. You have to play along the ground, otherwise you have to play over that of the fielder. But it's not so easy when a bowler like Fayaz is bowling in such a pace, bowling along the carpet and lifting that delivery. It's always going to be big ask for the batsman. Even Riaz is absolutely the most experienced campaigner. But he's back in the pavilion. The hero of the match is out for 0. It's 11 for 2 now. Now it's the right time for the fielding team, Suragiri Strikers. A very important match here for Suragiri Strikers. They won 2 matches out of 4. And winning here will going to make them to... has got... the gate will going to open surely for Suragiri Strikers winning here. Because they got a good number of runs here. They have to depend this total, 58. Here comes next delivery, Fayaz. Right above the new batter. Riaz Yanam, the man is sold for 30,000 in auction of the KUDLA Premier League. He makes the record in the history of KUDLA Premier League as a season 10. And the KGF Kings owner, Bashir, is not really bothered about that amount of 30,000. Out of 50,000, you know, given 30,000 only for the one player. Almost 60% of his bidding amount is given for the one player. Not the 60s, maybe the 70s almost. 70% of the bidding amount is bidded for this man. And that's a really so exciting bidding. This time reverse sweep comes into play and pretty very nicely in the gap. This is what Arshad Bajal for you. Only we are knowing that you can play some big shot, but sometimes he plays some clever and intelligent cricket. This is where the way he's building his innings. You know exactly, hitting the Fayaz, the pace is not so easy. So you need to use the pace of the bowler. You need to get some intelligent technique. One of the reverse sweep he's played has been outstanding. It's one of the difficult batter to bowl in the present cricket. 8 runs in 4 deliveries. 16 for 2. Once again, he's looking for the improvising sweep shot. Totally different than the previous one.
Just he wanted to get that one very fine. You know exactly square leg and fine leg which is inside the ring. He just get past that one in between that two fielders. No one there in the deep in the fine leg. He got a single for that. 17 for 2. In the over number second is in progress. Just outside the now off stamp. They're going for the quick single. Wicket keeper not. Oh my goodness, is all over. Wicket keeper behind the stump absolutely is charging to the ball and try to hit the stump, and Riaz is very lucky here. The direct hit all definitely going to be end of his innings, no doubt at all. It's 18 for 2 after 1.5 deliveries and last ball remaining. Around the wicket, he going to ball. Last delivery. This time across the line, played it very nicely in the gap. Tough, complete. Suddenly it's going to be a couple of runs here because they played it in the gap. There is no fielder in the deep square like in front of square. The mid-wicket fielder have to cover the ground a lot. And ample time for the batter to complete the valuable couple of runs. And after completion of over number 2, it's 20 for loss of 2 wickets. You're watching KUDLA Premier League 2026 season 10. The match is now evenly poised because of a couple of overs, the power play which is definitely belongs to the chasing team KGF Kings. Today is actually the different game, different ball game. The 2 days we have witnessed some low scoring game, especially the 40, the figure is one of the most popular figure of season 10 of KPL. The 5 teams scored 40 runs in 2 days. And now today is a different ball game. We are seeing some high scoring game. The 2 days even every team is struggled to get past the 50. But today, this is third occasion that the scoreboard is crossing the 50 plus mark. Gitesh to Riaz. The great contest between 2 great all-rounders. The second highest bidder of the KPL is in action. Ball to the highest bidder of the KPL. And got a single for that. It's 21 for 2 now. Arshad Bajal. The back on form is out of form in the last 2-3 tournaments. In the last 2 months, he absolutely is struggling to get his form back. And now in this KUDLA Premier League, he is looking in a rhythm. Same Arshad Bajal, who loves to dominate the bowler. Far outside and off stump, nothing much to do with the delivery. Left the ball and white call by umpire Ashraf. With that extra scope and moves on to 22 for 2. This time he played exquisite shot. What a shot. Standard delivered. Magnificently struck into the deep mid-wicket boundary for a maximum. Arshad Bajal is played an exquisite shot into the mid-wicket boundary for a maximum. Far outside and off stump and going to be a wide with that extra scope and moves on to 28 on the board for the loss of 2 wicket. 29 correction. This has been a terrificer. And ball just landed into the commentator box and the sound you can hear. Ton, ton, ton the sound. This has been a fantastic struck from Arshad Bajal. This has been a fantastic stroke there from Arshad Bajal. What a great shot. Stand and delivered. High and handsome. First time in this particular tournament, the batter is able to hit the commentary box. Over the commentary box rope. This has been a huge shot. 35 for the loss of 2 wicket.
Down the leg side, it's going to be a one more delivery, which well within the reach of the batter. Arshad Bajal is on fire. It's 23 runs he scored. 23 needed from 20 ball. This time again, 1+1 and a couple of runs have been added to total. 2 extras taken that score into 37 for the loss of 2 wickets in the over number 3 is in progress. 21 needed from 20. Arshad Bajal is absolutely looking on fire. Jitesh bowls. Again, nicely pedaled that one down to short fine leg region for a easy single. With that single scope, and moves on to 38 for 2. Now equation is really favoring the fielding team. They're going with a big gun here. Especially the Arshad Bajal is unstoppable. It's 38 for the loss of 2 wickets. Umpire called it a dead ball. The highest sixer in this tournament, I think, no, it's the economy. Again, just past the leg side. Just past between bat and pad of Arshad Bajal. One more expensive over which comes to an end. Gitesh bowled expensive over. I think 17 runs came from this over. 18 runs came from this over, and after completion of over number 3, it's 38 for 2, and time to change in voice as well as yes, not in the language. The language is the same, but it might be the international style. And it's 38 for 2. It's all welcome for Asim once again, and now the equation suddenly is favoring the KGF Kings. The way that Arshad Bajal is batting has been outstanding. He's dominated so far, and quick fire 23 runs in 10 balls. Definitely the KGF Kings, Asim, they are in a driver's seat of winning this match. Thanks, Mr. Satish. I think so, yeah. KGF moving along nice and clean at this stage. I think they've got that advantage. They've got Harsha at one end, 2 crucial batters in the middle. Riaz, gun batters, 2 of them are. Star batters in underarm cricket. And if they can go well, I think it's just going to be a joke of a chase, for sure. 38 for 2 in 3. Sumit to start the proceedings, to continue the proceedings rather. Just going to bowl that first delivery. It was like a cutter. Riaz thinking about just nudging around and picking up singles. They know that. They don't really have to play daft cricket or dumb cricket. Just got to play sensible cricket. Probably get the strike rotated. Arshad Bajal, he loves that square leg area. He loves that mid-wicket cat corner area. He loves playing that area. Loves to access that part of the boundary. 39 for 2 now. Tries to go for the reverse. Misses it completely. Does play that shot well as well, Arshad. For a long time now in his career. Loves playing to, I think it's almost like a 360 type of player. Although he's a power player. Just bowling too slow there. I think it's a good idea by somebody. He knows that both of these batters, either Harshad or Riaz, both of them NM, I think they love pace and ball. They love to leverage the pace and ball, and they'll take you out of the park every time you bowl. And that's why Sumit is trying to bowl a different varieties, just bowling that slowish cutters, probably trying to outthink the batter a little bit. Got it away for 1. Harsha thought that it might just be a why. Why would you touch that? But doesn't matter. 1 run taken. 15 balls in the tank, 16 to get. And that's the equation for KGF. KGF, to tell you frankly about their tournament success so far, surely should be wide. Is that they haven't got a foot wrong in the tournament. And that is quite impeccable, remarkable, spotless batting, spotless performance so far.
Can't be why this time around. Much better from Sumit. Trying to outfox Budgel. Never easy bowling against Budgel. The bowlers generally get intimidated. Bowlers generally get into a pressure situation when bowling against him. This time, gotta wait for the umpire's decision. Gonna be called a wide there. Wides are not gonna help them. They know that they gotta pick up a wicket. They were in a dominant position. 43 for 2 now. 14 to get from 14. Can't play that way. Now, both Budgel and Riaz got to think about taking that pressure off. Because you know what? Ones will not win the game for you, although it's one per ball. But still not win the game for you. Can't be anything there. Just deflected off his body for 1. 12 balls to go, 13 to get. End of over number 4, 45 for 2, KGF. And it's going to be an easy chase. That one, they got to target that. Not thinking about playing that big shot. Not suggesting that they got to play those big shots. No, they got to get that boundary. Maybe 1 boundary or 2 twos will help them to make the game easy for them, KGF. But Suragiri strikers will be absolutely disappointed. You know what, against KGF, I did tell you that they've got gun batters, they've got some explosive strikers such as Riaz or Harshad. They can really turn things around in a nick of time. And both of them have showcased their ability when the 2 batters get settled in. When they stitch in a partnership of this nature, any bowling attack in world cricket would find it problematic. In underarm cricket, I'm talking about. 13 to get from 12. Harshad, will he look to get a 1 boundary? Will he look to get that 1 big 6? Will he want to finish things on a high? Tries to go for the big shot. Misses it just a little bit fraction. Some bat on that could have gone all the way either to the boundary or could have gone all the way to 6 as well. Because he gives everything when he plays that shot. 11 balls, 12 to get. Riaz on strike. Got it away towards that square leg region for 1. It's almost like a sort of different styles of batting being invented. Try to get off strike. That's the most important objective there of the 2 batters, is try and get off strike. And that's the minimum. Oh, trying to play a similar shot that Riaz played, but this time around he misses the line completely. That was fired outside the off stump. 9 balls, 11. This is what I talked about. Ones will not win the game. They got to get that 1 big 6 or 1 boundary. Will help them get to the proximity of the total. Suragiri strikers know that they can get 1 wicket here. They'll put things back in their favour. You never know which way the game's going to go, but Arshad and Riaz both, they'll back themselves really, KGF. Try to play 1 more big miscollection there. That should have been stopped. That should have been stopped, really. But Harshad got it away. I think just the 1 to the total now, where that buys... Sorry, off the bat, I think. Could be off the bat. Off the outside edge. 8 balls in the tank, 10 to get. Can these 2 take them home? That is a superb delivery. Again, miscollection. This is sloppy. Behind the stumps from the wicket-keeper. That should have been nothing. 2 dot balls have been given away for 2 singles in the form of buys. And 1 was off the bat, I think. But still, I think they'd be disappointed that they should have actually restricted the 2 singles being flown. 7 balls in the tank, 9 to get. Suragiri are fighting hard, really putting their best foot forward. Trying to make sure to try and restrict. Never easy to try and restrict these 2 batters. The gun batters, explosive players, can really turn things around in a jiffy. To get a dot ball, we really got to
extremely well. Anything off target will go out of the park for a 6 for sure. Goes out. Has he got the distance? It's been taken. Arthif, the bowler, picks up the wicket. Arthif's ball sensational in the over. Cannot downplay this over in the context of the game. What an over is bowled. Superbly spotless, I'd say. Absolutely spotless with the way he's gone about his business. He'd be disappointed, and Arshad Bajul's innings comes to an end. His shot selection is something. Got it from the mist. I'm not sure if did he manage to get from the middle of the blade, but it went up, high up in the air. It was a simple catch for the fielder at long gone. He has to go now. This game's back in the balance. KGF will need to do more work to win the game. Riaz is over there, and he's going to be joined by Azim, the new batter, can play big shots. Two of these batters. Can they take them home? That's the big question that we're going to ask, really. Arthif's having a conversation with his partner, and probably try and bring Abhilash one last time. 9 to get from 6 deliveries. Riaz on strike against Abhilash. Interesting to see his strategy. Riaz has got to take his team home. And that's the kind of batting that he displays. Paul got it away. That might go all the way. They'll push hard for the 3. If they run hard, they'll go for 3. No, they won't. Just the 2. Now, 5 balls in the tank. 7 to get. Riaz will back himself to chase this game. Usually a match finisher, Riaz. We all know about that, how good a player he is. Such a tremendous power striker of the ball, plus the fact that he's a great finisher as well. But finishing the game is a different task altogether. It's a different assignment. It's an assignment packed with so many different temptations and pressure. And that's where I think you've got to be almost like a problem solver. Swept it away. Great running between the wickets. Thinking about the second. They won't get it. Great bit of work in the outfield by the fielder at Sweeper. Now needing 6 to get from 4 deliveries. What could have been... I think it could have been a different ball game if the wicketkeeper had collected those 2 deliveries of Arthif in the previous over. Could have been much more difficult really to try and track it down. But now KGF, can they take their team home with these 2 batters? Got it away into the, not in the gap, straight into the hands of the fielder. It'll just be 1. The field is widespread actually. The only place that I think you can try and take leverage is that extra cover area. You can try and get a switch here. It's almost like a temptation for the batter to play that switch it and probably bring his own downfall or probably get a dot ball. And that's one of the reasons why there is no fielder at Sweeper. It's almost like an open space there. Can he make use of that area? Got it away, fine, not for more than 1. Just the 1 there. 2 balls in the tank, 4 to get. Can they take their team home? This is a crucial ball of the game. Absolutely crucial ball of the game. Very, very vital delivery in my view. 4 to get from 2 deliveries. Anybody's game from here. Abhilash bowling. That's a dot ball. That is a dot ball, but Riaz will take his strike, will take the strike. Got a bit of flight on that delivery. Excellent length. And the line was superb. And got a bit of turn as well. And Azim's got to take a walk back. Couldn't chip in actually. And that's what I said, 1s and 2s will not win the game. If you remember 2 overs ago, that was the time where either Riaz or Harshad should have taken the attack. Harshad went for the attack, but he couldn't get that distance actually. And that mounted more pressure onto the KGF lineup, batting lineup. And now they're finding themselves in
Huge trouble. 1 ball to go, 4 to get. Can Riaz take his team home? Expectations in the crowd. Expectations in the dugout and the dressing room as well. I think that they all think that Riaz can finish things up, but never easy. He's got to go for the big shot. No other way. 1s and 2s will not get the job done. They got to go for the big shot. Will he get it? Will he clear the field? And that's the key here. The bowler's got to be absolutely spotless bowling against Riaz, because Riaz has made his mind that he's going to go for anything. Anything is going to go for it. But calm ball, why? Calm ball, no ball. That is just a crime. It's almost like gifting the game away. The bowler's got to be careful. Abhilash, the bowler, tons of experience under his belt. Can he defend it? Can Riaz take him out of the cleaners? He does go big. What a strike that is. What an unbelievable ball striker. This is what I talked about. Riaz is a game changer. He can turn things around. That is not a bad ball by any stretch. You cannot blame the bowler. That is a superb delivery. And that is Riaz for you. Skills and talent in exhibition. Scintillating ball striker Riaz has proven that. Why is number 1 now in underarm cricket? Why Riaz is number 1 is because of that very reason. What a tremendous ball striker. Just magnificently timed it, just fashed it from outside off. Clean strike, clean as a vessel, travelled the distance, no one out there. The long gone fielder just saw it sail by and he just lost that hope. Unbelievable ball striking, this is by Riaz. The timing on that occasion, as explained by, as dissected by Mr. Pradeep Kothari, well explained. I also think that a little bit slow, but you generally expect top-class batters to mistime that. But Riaz is a different batter, he's got different mindset. He reads the bowlers very well, but that was quite an unbelievable shot. What a way to finish the game. 6 wins on the trot, on the bounce for the KGF. They are not putting a foot wrong. Whatever they touch turn into gold. In this tournament, they're going from strength to strength. Their winning streak continues. Their execution, their chasing execution has been outstanding. And I've never seen any team, anywhere, chasing 6 games back to back and winning this. Unbelievable execution. This is just statistically not possible, I'd say as well. But I just got to say, massive target that they backtracked as well to chase it in a way that they did. The style and identity they matched up with is simply sublime, really. Chasing 6 games on the trot is some achievement, is some feat, really. Man of the match. Has to be Riaz NM. Man of the match should be Riaz NM for his blistering knock under pressure, stayed in there and finished things off for his team. What a performer he's been. What an iconic player. What an ambassador for Underarm. What an ambassador for Underarm cricket has been for the last 1 year. His performance has been absolutely stellar. It's been remarkable the way he goes about his business. Cool, under pressure, calm, keeps his nerves. And what a player he's been. What a batter. What an iconic player he's been for the KGF and also for NM Mangalore as well. So to tell you more about it, to tell you more about the upcoming game, we've got with us Mr. Gopi, who's going to take over from me with his beautiful Hindi commentary. Over to you, sir.
Thank you, Mr. Asim, for your wonderful explanation in English. And that's the match number 3 ended, and a fantastic finish for the match number 3. So, what a fantastic finish for the third match. Riaz hitting a 6 in the last delivery, and he brought the memorable victory for his team. Now, match number 4 is now going to start, and Eastern Avengers will take over New Star Chocobetu in this match, and New Star Chocobetu is now going to bat. और पहली गेंद का इस वक्त इंतजार है, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज एरिस का, और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर है बॉल डाउन, फर्स्ट बॉल गोल्डन डक डिस्मिसल फॉर द बैट्समैन सिनन डिसमिस्ड। और सिनन को इस वक्त प्रमोट किया गया था एज ए ओपनर, लेकिन अपनी पहली गेंद पर वो इस वक्त विकेट तक हो चुके हैं। Terrific from Aris, and he just got rid of the batsman. Sinan departs, and a first wicket lost for New Star Chocobetu. Now they are looking in trouble. In fact, not for one in the first over. Sinan departs. और निश्चित रूप से जहां तक सवाल है इस वक्त पहली गेंद पर एक बेहतरीन गेंद के जरिए गेंदबाज एरिस इस वक्त विकेट प्राप्त कर चुके हैं सिनन का। सिनन जिन्हें इस वक्त प्रमोट किया गया था टॉप ऑफ द बैटिंग ऑर्डर पर, कुछ कर नहीं पाए, और पहली गेंद पर गोल्डन टक के रूप में आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ रवि सालियान पटायूर, और इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद बल्लेबाज रशीद बाबा। तो जहां तक सवाल है इस वक्त आरिस का पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद काफी आत्मविश्वास भर इस वक्त नजर आते हुए, और अपनी ओवर की दूसरी गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार बल्लेबाज रवि सालियान पटायूर इस वक्त सामना करते हुए। यह गेंद terrific, दिस आउटस्टैंडिंग जनवरी, और गेंद को बड़ी मुश्किल के साथ खेलने में सफल रहे, बल्ला अड़ाने में सफल रहे कहना पड़ेगा। बल्ले का बाहरी किनारा, और गेंद सीधे इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में पहुंची चंद टिप्पों बाद आफ्टर कपल ऑफ बाउंसेस, और एरिस एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार स्विंग्स, दिस टाइम आई थिंक ही फाइंड्स द गैप एज वेल, और गेंद डीप मिड विकेट की ओर बढ़ती हुई, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था यहां पर 2 रन प्राप्त करने का। ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त स्विंग कर दिया था खूबसूरती के साथ, मिड विकेट फील्डर को बीट करते हुए गेंद निकले इस वक्त डीप मिड विकेट पर। 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल हो चुके, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 2 रनों पर, यानी रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। और आरिस अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था, इन्हें हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार उछाला रवि ने, लेकिन नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट वन, और गेंद इस वक्त लंग ऑफ सीमा रेखा को शायद यहां पर पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। शायद वहां पर कैच आउट का मौका जरूर था, हमें यहां से ठीक से दिखाई नहीं दिया, और देखिए मॉनिटर पर गेंद दिखाई जा रही है इस वक्त काफी देर तक हवा में थी, और गेंद इस वक्त डिसअपियर हो चुकी है आउट ऑफ द कैमरा, और गेंद लंग ऑफ सीमा रेखा को पार कर चुकी है इस वक्त छक्के के लिए। तो शायद मुश्किल सा मौका जरूर था वहां पर, और छक्का यहां पर प्राप्त करते हुए रवि पटायूर। देखिए गेंद को उछाला था किस तरीके से रवि ने, और काफी देर तक गेंद हवे में ट्रैवल करने के बाद सीधे वहां पर फील्डर की गलती की वजह से सीमा रेखा को पार कर चुकी है छक्के के लिए। 8 रन बन चुके, 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और एरिस इस वक्त ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस वक्त रवि के लिए बेहतर गेंद, परफेक्ट लेग कटर डिलीवरी, बिल्कुल जमीन के सहारे आते हुए गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर, और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहिए एक बार फिर से, चूंकि इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन जोड़ चुका है यहाँ पर न्यू स्टार चोकोबेटू। और जहां तक सवाल है 8 रनों का, तो एक छक्का इस ओवर में रवि सालियान पटायूर जड़ चुके हैं। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। और जहां तक सवाल है इस वक्त दूसरे ओवर का, तो काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलती हुई,
ईस्टर्न एवेंजर्स के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और देखते हैं यहाँ पर दूसरा ओवर कौन से गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हैं। यूनाइटेड उर्वा और व्हाइट हॉर्स के बीच अगला मैच खेला जाएगा, तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो हमसे दूर वाले छोर से मनोज शेट्टी और अश्विन राज पुजारी एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए यज्ञेश, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए रशीद बाबा। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। दर्शकों की तादाद इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ते हुए आज इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट केपीएल कुडला प्रीमियर लीग सीजन 10 2026 के अंतर्गत चौथा मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है, और मुकाबला इस वक्त जारी है ईस्टर्न एवेंजर्स और न्यू स्टार चोकोबेटो के बीच। तो इस वक्त यज्ञेश ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रशीद बाबा के लिए ये गेंद पहले गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और इस बीच यज्ञेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर तैनात, लॉन्ग ऑन भी थोड़ा सा वाइडर, और गेंदबाज यज्ञेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया रशीद बाबा में, लेकिन नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट शॉट एट द लास्ट मोमेंट, ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। यज्ञेश इस वक्त गेंदबाजी करेंगे रवि पड्डायूर के लिए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए, और इस बीच यज्ञेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद रवि का स्ट्रोक, लेकिन नियंत्रण नहीं यहाँ पर, और ये कैच छूट चुका है, ड्रॉप्ड बाय द डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर। आसान सा कैच यहाँ पर गंवाते हुए फील्डर बल्लेबाज रवि पड्डायूर यहाँ पर बाल बच चुके हैं। देखिए किस तरीके से आसान कैच को छोड़ चुके हैं इस वक्त फील्डर, और बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, और गेंदबाज फिर से एक बार यज्ञेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रशीद बाबा के लिए, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक जरूर, लेकिन वाइड स्लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, जस्ट सिंगल ही गॉट, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। द इक्वल बैटल इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर, और गेंदबाज यज्ञेश अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए swings this time down to mid wicket, and he finds the gap as well. In fact, he's got a boundary for that stroke, fantastically struck. The ball passed between 2 fielders, square leg and a mid wicket, and it at last it's gone over the fence for about. Have a look at this in the replay. इस बार गेंद को खेला था रशीद बाबा ने बिल्कुल फाइन, और देखिए यहाँ पर गेंद को रोकना चाहता शॉर्ट मिड विकेट पर, लेकिन जहां तक सवाल है इस वक्त चौका घोषित करते हैं वहां पर बैठे हुए एक प्रेक्षक, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 15 रनों पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा, ये गेंद इस बार उछाला रशीद बाबा का स्ट्रोक, लेकिन मौका, और एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने इस बार कोई गलती नहीं की। नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट बाय रशीद बाबा, एंड कंफर्टेबली हेल्ड बाय द फील्डर एट डीप एक्स्ट्रा कवर। और रिप्ले पर इस वक्त दिखाया जा रहा है तो रवि इस वक्त आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए, रवि का स्ट्रोक दमदार नहीं था, मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और इस वक्त रवि सलेहान पड्डायूर आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए। दूसरा विकेट गिर चुका है, 2 गॉन, 15 for 2।
तो हकीम बॉलर इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए जहां तक सवाल है हकीम का, काफी अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त ईस्टर्न एवेंजर्स की ओर से ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और सामना करते हुए इस वक्त रशीद बाबा। तीसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता है। 2 ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त हकीम, यह गेंद बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ। रशीद बाबा ने गेंद पर स्ट्रोक्स खेलना चाहा जरूर, लेकिन गेंद को खेल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। हकीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद बाउल्ड आउट, फैंटास्टिक डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द लीड ऑफ द बैट्समैन, मच स्ट्रेट लाइन। और गेंद टिप्पा खाने के बाद इतनी ज्यादा रेस हुई, इतनी ज्यादा तेजी के साथ बाबा की बैट की ओर आई कि बाबा इस गेंद पर कुछ कर नहीं सके। देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था, एक्स्ट्रा क्विकर वन आफ्टर पिचिंग एंड बाबा डिपार्ट्स। हकीम गॉट द ब्रेक थ्रू, थर्ड विकेट गॉन, इट्स 15 for 3. So थर्ड ओवर इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया और गेंद पहुंची इस वक्त लगौन पर। 1 रन का इजाफा हो चुका है, प्रताप का आगमन हो चुका है, अपना खाता पिछले गेंद पर खोल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। हकीम फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इस वक्त रिजवान। हकीम की गेंदों का 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में हकीम फेंक चुके हैं, अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार रिजवान के लिए। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और आखिरकार शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ और फिर से एक बार गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार बेहतर गेंद, वंस अगेन अ गुड डिलीवरी, मच स्ट्रेटर लाइन फ्रॉम हकीम। सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता रिजवान ने, चूके और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में। बेहतरीन ओवर अब तक साबित हो चुका है हकीम का और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद रिवर्स शॉट, नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट वन बट बॉल फेल इन द विकेट एरिया, डीप बैक फॉर द थर्ड मैन। He's got couple for that, 2 रन मिलेगा। स्ट्रोक्स पर नियंत्रण नहीं था लेकिन गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। 2 runs to end over, 3 runs came from Hakim's over, good over came from him, 3 gone after 3 overs. Still I must say new star took up to searching for the right track. It's 18 for 3 after 3 overs और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, लेकिन इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो आगे का देखा सुना एक बार फिर से मेरे एक और काबिल दोस्त अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ अंग्रेजी में हाशिम को मैं बुलाना चाहूंगा आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए हाशिम, धन्यवाद, थैंक यू। Thanks, Mr. Gopi. Getting into the post-lunch session. $18 for 3. New star Chukabetu find themselves at. And Rizwan and Prathap are the 2 batters are batting in the middle. New star Chukabetu taking on Eastern Avengers Farangipete. 2 good teams are battling against. You look at almost all 8 teams or 9 teams that are there in the running. They're not actually, you know, media-grade teams by any stretch, actually. They're all great guns, they're great batters, they're great fielders, great competitors. Some of the great players in underarm cricket. Try to sweep it. The impact, not sure about that, what happened there. Just going to be 1 there to the total.
19 for 3. The power play overs are done and dusted. Couldn't take the leverage of that much to a greater degree. "19 for 3. 3.1 overs have been bowled out. 3 more overs to go. They can backtrack it. In the air, is it going to be off the gloves? Got to wait for the umpire's decision. The umpire's not interested. Things that came off the pad, but he's got to be in consultation with the third umpire, with the square leg umpire, just to find out whether there was any bat involved. Because sometimes when, it's not easy for the umpire, the main umpire standing behind, it's going to be referred to the TV umpire to check whether there was any bat or glove involved. Not sure, there's no soft signal. Modern day cricket banished the idea of soft signals actually in cricket. 19 for 3 in 3.1 overs. Rizwan Pratap just got in there, just taking a bit of time out there. This wicket will mean a lot to Eastern Avengers, and that'll just find themselves actually in a very, very commanding position if they can pick up another wicket here. New star Chukabetu got tons of work to do because they got to get to that magic figure. They got to get to that. They got to backtrack a good total, and that's what they got to target. Was there any? Looks like the TV umpire is observing that. From this angle, looks like there might be some glove on the way through. Off the wrist, probably. Can't find out about it, though. It's the umpire's got to make that decision in the end. It's a tough one for the umpire, though. Not out is the decision from the umpire. It's very difficult to figure out from where the ball might have come from. The umpire has made the final decision because when you don't have convincing evidence, 19 for 3, 19 for 3. One ball bowled. Wait, please. Okay, 20 for 3. Picks it up beautifully. Has it gone the distance? No, it's been taken inches. Just inches inside the boundary line. He's going to be disappointed about that. The shot selection was right. The connection was good, but not got enough legs on that one to take it past that fielder. And he's got to take a walk back here. Another wicket going down for New Star Chukabetu. They're just losing their plot in the game. 20 for 4 they find themselves at. 3.3 overs have been completed. Rizwan is batting at the other end. Someone's got to play a heroic innings here to try and put them back into the game. So we've seen some of the totals, and some of the winning totals could be potentially 55 or 60 thereabouts. Eastern Avengers have got some good batters, have got some power strikers. So that'll be in the back of the mind of New Star Chukabetu's captain's mind. And they got to get to a good total, and that's what they got to backtrack. And that is so central in the game. Imran picked up a wicket. It's bowling very good, very well actually. It's bowling with pace, it's bowling with varieties, not giving away freebies and offer to try and deal against. Imran KFC
Singh is an electrifying fast-paced bowler. Such a sensational player has been. Another one this time, reversed away for one. One of the shots that usually these underarm cricketers or batters love to play, love to get it away, just to get a bit of force on that, and also to take out the risk of having a dot ball, has been very productive. 21 for 4, 3.4 overs bowled out. Rizwan back on strike. Imran still in operation from the Manoj Shetty, Ashwin Rajpujari end. It's going to be called a wide. It's trying too many things in a nick of time, in a short block of time, actually, trying different things. Imran has got to be careful about the line. Driven away beautifully. What a catch! An unbelievable grab that is. Spectacular from Asif Adur. One of the best fielders in business, but that was some catch, really. One of the best catches taken in the tournament. I think right up there in terms of skills and athleticism. Absolutely fantastic. Diving forward, full end dive. Can't get any better. Magnificent, simply outstanding. Kept his eyes on the ball. The ball was traveling, dying on him actually to a degree. And to get underneath that one, he's an electrifying fielder. He makes such a big difference, Asif Adur. With a bat, with a ball, and now on the field. What a competitor in underarm cricket has been. High-class fielding, that is. Any international player like Herschel Gibbs, Mohammad Kaif, Suresh Raina, Yuvraj Singh, looking at that will be proud about this young man, Asif Adur. What a catch that is. You can watch it over and over again on the TV screen, and you would never be satisfied with that. And it stimulates you to watch it again and again. Such a magnificent grab that is. 5 down now. Swept away, got it away. I think straight to the fielder. There. Just the one. End of over number 4, 23 for 5. New Star Chucker better find themselves at. Really, that catch is a game changer in my view. That really setting the signal to the opposition side that they're going to play tough cricket. Really tough cricket that they're going to play. They're playing now. Eastern Avengers, Farangapete. Bowling beautifully, brilliantly, especially Imran with that beautiful over. Pull them back in a little bit. 23 for 5 and 4. Got 2 more overs. New Star Chucker better have got some superb batters, but they haven't made big impact with a bat, actually. That's one of the reasons why they find themselves at a struggling point. They've got a long way to go. Maybe, I think, 2 overs to go. And Chaitan, another talented young bowler. Fast and express pace. Bowling now from the combox end. And he's got to now try and do all the job for his side. And it's easy now for any bowler who's expressing pace, who can vary his pace a little bit, just bowl varieties. Easy, that's because, you know what, I think I'd say straightforward. 5 down, half the side out. Still got batters, Chuck a better side, but I think now they're on the back foot slightly. You'll be thinking now, it's New Star, Chuck a better batters, what would they do? Would they try to play shots? Would they try to block it? Would they try to defend it in an ultra-defensive way? Can't be out. Given out. Given out by the umpire. Midland leg has got to go back to the hut. Another wicket going down for New Star Chukabetu. (23 for 6) they find themselves at New Star Chukabetu. 4.1 overs have been bowled out. Mustafa and Ansar are the 2 batters now. Ansar, the new batter. Harshit, the batter, has to walk back to the hut. It's not been a good series, actually speaking, for New Star Chukabetu.
first match win match. Last 3 games, they haven't had a good time, actually. And it can happen to any team as well. Sometimes the execution of skills might work, sometimes might not work out. But the table topper, KGF, executed all their skills to perfection. Played some outstanding cricket ever since, I think ever since yesterday or day before. Surely out, surely out. If he's not hit it, surely out. Can't play that loose shot. That is a loose shot. Terrible, terrible shot attempted, in my view. You cannot play that shot. It's got to go back to the hut. Another wicket going down. New star Chakabatu's wickets are falling like a pack of cards here. 23 for 7 they find themselves at. Ansar, Golden Duck back in the hut. Got to play straight, got to play with the right basics, the right knowledge. But Chetan has 2 wickets back-to-back. What an over is bowled. 2 back-to-back wickets, 2 of them are LBWs. And he's on a hat-trick now. Can he bag a hat-trick here? Can Chetan bag a hat-trick? They got to have some closing catch-and fielders. Try and help Chetan pick up his first hat-trick of the tournament. And that will be an iconic feat to achieve, really. Going to be wide, really. Bowl wide, actually. Not concentrating much about the hat-trick, I think. Just bowl that, fire that outside the off-stump. Just got a bit of outside outswing on that one. That is just high-class bowling. Superb bowling, that is high-class, really, from Chetan. Just in the right point, 6 meter area, is landing the ball, taking it away. The right shot would be to try and back cut, actually. Got it away this time. It's the other one that this time around, not the one going away, it's the coming backer. But got a bit of bat on that, on the sweep, actually, straight away. Now sure. Got off the mark with that single now. Mustafa Bakun strike has been watching his teammates getting dislodged at the other end. Now he's got a way. He's got to find a way to try and score runs. 24 for 7. Miscollection. The wicketkeeper was nowhere in business. It's going to be referred to the TV umpire, but the soft signal from the umpire is out, I think. But got to wait anyways for the umpire signal, though. The third umpire is in business, but looks to be out for the naked eye. But still, just got to wait for the umpire's decision. Yeah, shot of his ground, surely shot of his ground. And out is the decision. Out. Yes. 24 for 7, 4.5 balls have been bowled out. End over. 24 for 8, make it 24 for 8. New star Chakabatu. That run out impacting as well of the last delivery. Trying to sneak a single, but at the striker's end. The run out impacted, so another wicket going down, 8 down now. They're on the verge of getting all out and getting bundled out. And that would be disastrous when we talk about the run rates and all that sort of stuff. Getting bowled out is not going to help you have that margin that you might need when you go in further actually into the progression of the tournament. We'll find out more about it. 5 overs done, 24 for 8. Last but 1 over. Mustafa is still over there. Dharma, the new batter. Dharma can bat very well, can be a good power striker if he gets going, Dharma. And also Mustafa, both of them. Got to try and make the most of this one loss, I think last 6 balls in the tank. Yajnesh, another pure talented bowler.
Sensational bowler Yadnesh has been. Cutters. He's got all the bowling in his repertoire, in his armory. Yadnesh hits the ball in the right area to Mustafa. Nicely played, just the one there. Left armour usually gets the ball back into the left-hander. Usually takes the ball away from the right-hander. That's his natural strength of bowling. Yadnesh. Now Dharma, for the first time, is going to take the strike. Can Dharma get one big 2 sixes here? That's going to be crucial if he can manage to do that. He's coming as a power striker. And if he can get 1 2 big sixes, Dharma here can really add impetus to their innings. Just nudged away. Interesting to see why Dharma is not thinking about playing big shots or last over. Probably the message from the think tank, from the outside, from the dugout, is not to get all out. And that's the thinking behind that. Probably get another 5 6 runs. Getting bowled out, bundled out can impact their run rate to a great degree. And that will be communicated by the coaching staff. Nicely played. That will run away to the boundary. No, it's been pulled back. Good bit of fielding. They'll push hard for the third and they'll make it easily. Good bit of batting. This is by Mustafa, thinking about the fourth one. And I think is out. Not sure. It's going to be referred to the TV umpire though. It's Dharma, the batter, walking, charging back for the fourth run. Looks like he's not sure. It's unsighted actually by the field, by the bowler himself there. Got to wait for the decision. The umpire, the TV umpire, is working on the angle. Not out. Dharma thought that he might be just out, but no. Dharma has made it. Fantastic running between the wickets. 4 runs to the cards, although it's not a boundary, but they run all 4 runs. Can you believe that? Exciting running between the wickets from Dharma and Mustafa. Played that beautiful switches shot to get himself those 4 runs. Time up. Therefore, one fielder's got to be rushing inside the 30-yard circle from the outfield. Some fielder's got to be rushing inside the 30-yard circle. Now, that mid-wicket fielder's been pushed into almost like a sort of mid-on position. And one man from the offside's been brought inside the 30-yard now. Again, mid-wicket still there in business, but got no protection on the offside. Still tries to play towards the leg side. Not sure what was the thinking behind that. The batter could have played, opened up the offside fielder, probably got it over extra, could have got him a boundary, but not to be the case. 31 for 8, 2 balls to go. The thinking is not to get all out. And that's the message sent from the coaching, the captain, the think tank behind, because that they know that will dent their run rate to a great degree. Yadnesh, bowled beautifully so far. Another dot ball. They can still get a run in the form of miscollection. Wide called by the umpire. So 1+1 to the total, 2 to the card. Sorry, it's going to be reviewed also for the wide, just to check if that was outside the wide line or whether it was inside the wide line. The TV umpire is working on that. Yeah, the TV umpire. One of the most experienced umpires, Mr. Umpire's name. Sir, you want his name, sir? Mr. Ashraf, analyzing that. Wide signaled. Wide is the decision coming from the umpire.
Mr. Ashraf, one of the most experienced umpires, taking that decision. You're always on the firing line as a TV umpire because you don't get the right angle certain times. No convincing evidence. Sometimes as a TV umpire, you always got to take time, try and find out different angles. The technology that we have always, I think, in underarm cricket is limited. But still, we've still try to get the right decision possible. Played away beautifully. They're going to put two more runs. Mustafa is sprinting hard back for the second. What great running this is by Mustafa. 35 for 8. 1 ball to go. Will Mustafa look for the big shot? I think he'll try now. 1 ball to go. Surely is going to go for the big shot now. Because they can't be all out. Because they're only 8 down now. Even if they lose 1 wicket, that will not bother much into the run rate and stuff. Now Mustafa's got the license. Swept it beautifully. That will go past that fielder. Beats the fielder at fine leg. 2 runs taken. No, not thinking about the third. There's no third available there. 37 for 8. New star Chakavetu, 37 for 8 after the end of over number 6, after the end of their innings. And they'll take it. At one point, they never looked like they'd get to that mark, really. But really got to applaud the way Mustafa batted fantastically right till the end. Kept the scoreboard ticking around nice and easy. Especially when you're 8 down or 9 down, you almost get into an awkward position to try and score runs. So probably you can't really try and really take the attack to the opposition. That's the time where Mustafa came in and produced a superb innings right at the back end of the innings. That might well be the difference between the two sides. We don't know. We'll wind out more about that. Mustafa, the lone man, standing tall for his side, actually scoring 11 of 7 deliveries at the crucial juncture. And Ravi scored 13. He's the top scorer. Got 13 of 8 deliveries. And apart from that, nothing much to talk about. The batting card, actually. I think the pick of the bowler, if you look at Chaitan, bowled that magnificent 1 over and picked up 2 wickets at an economy rate of 1. And he's the man, I think, who's done the job for his side at the crucial juncture of the game, picking up 2 important wickets. So the equation, 38 from 36. And that's the score that I got to target. Avengers got to backtrack. Avengers Farangipate got to backtrack. 38 from 36. Just about 6 runs per over. It's going to be, I think it's going to be not an easy chase at all, actually, talking about the scoring. To tell you more about that, to tell you more about the blueprint to chase, to tell you more about the game plans and strategies we've got with us, Mr. Satish, one of the very renowned and a popular voices in the combox in general in underarm cricket. Over to you, Mr. Satish.
Welcome back once again. Thank you very much, Asim. And this has been a low scoring encounter. It's not a big total to chase down. But in this particular tournament, we have witnessed so many small total target which is depended by the fielding team. And we'll see how well the team will going to depend this total. First ball. And Patel shot played it nicely in that backward point and between backward point and gully region before the fielder will going to run back to field the ball. Ample time for batter Asif Adur to open his account, and of course the team on Eastern Avengers Parangipete also opened the account in that single. Asif Adur taken one blinder in the innings in that short mid-off region, diving to his front and taken one of the best catch of the tournament of KUDLA Premier League 2026. Again, coming into the batter, lovely delivery indeed. It's going to frustrate the bowler, isn't it? Imtiaz bowled such a correction bowled one excellent incoming delivery. In the last moment, Altaf Valpadi's got a bat onto that, saving himself from that beautiful incoming delivery. Nip back into the batter. Now, the pitch which is started to skid and react a little bit differently. After that, the morning condition is very much suitable for the batting, but now slowly the bowlers have started to dominate. Nice looking drive there from Asif, beautiful shot. Even though the fumble from the fielder at extra cover, there is absolutely a couple of runs there. Altaf Valpadi surely wanted to come back for the second because he's the one who is running towards the dangerous end. He's the one who is running towards the dangerous end. He definitely is the one who is the judge of the run. But Asif Adur already made his mind that he will go into settle for the single. The reason that Asif desperately wanted to back in his form, he doesn't want to throw his wicket here. It's a good opportunity because you know exactly this is a 38 runs target which is set for the opposition. You need to get some time to eye in and just wanted to come back his form, which is a little bit struggling in this present season. 3 without loss of any wicket. Sharan again. Altaf lofted it, but I don't think he's going to get that distance here. Yes, the fielder isn't that long on. I just mentioned earlier, when the ball is just past the bat of Altaf Al, but he didn't got enough timing and power in the shot. Only timing will go to get, he couldn't get, of course it's difficult to get the distance, especially in the UCG cricket ground, the ball which is very soft in the nature, the timing which is not good enough. And once again Altaf Al Party disappointed, couldn't manage to deliver the innings what is expected from him by the captain and the owner of Eastern Avengers Parangipete. The wicket number first is back in the pavilion. The 3 for 1. The new batter Karna has been promoted up in the order. Wait and see how he's going to justify his promotion. It's 3 for 1. Karna, number 3 batters, but very early entry for Karna. Swept the ball. Oh, misfielder by the fielder. This is going to be disaster. And ball running down to the square boundary for 4 runs. Answer the fielder. It's absolutely sloppy. What could be a no run actually? If there is a fielder, a good fielder in that square leg, there is no run at all. And the fielder absolutely making an unforced error. At least if you are not able to get the ball, clean it for your hands, you have to put your body behind the line of the ball so that at least it can stop the boundary. That will going to frustrate the bowler and even the captain of the team, New Star Chokabetu. It's 7 for 1 and the bowler Sharan disappointed. Right arm over the wicket. Once again Nakarna wanted to go for the same sweep shot, but this time much quicker delivery there from Sharan. Defeats him with the pace. First over completed. It's 7 for 1. Eastern Avengers Parangipete chasing 38 to win this match.
This is a very, very much important match for both the team, New Star Chokobeta and Eastern Avengers Parangipete. "31 needed from 30 balls." Equation certainly face certainly with that equation favoring the chasing team, but you can't say anything in cricket. We are witness, I already mentioned earlier, even 30 runs is also depended in this KUDLA Premier League. That means the believeness is so important for the fielding team, Eastern Avengers Parangipete. Dharma brought into attack from the far end. Oh, lovely delivery, hurry down to the batter. Quicker one again. Asif Addu tried to make a room to play the shot. Inside out cricketing stroke is been tried for. But Dharma is too clever. He's a very intelligent bowler. Know exactly what the batter is trying for. Bowled a quicker one and made this batsman a little bit uncertain. And deflected from his leg. 8 for 1 in the over. Number second is in progress. Bright and sunny afternoon. Time is exactly 5:02 in the afternoon. After that, the very good lunch break in the afternoon. And Gopi, you are enjoyed that chicken chili. And outside the line of off stump. One more leg by. One more leg by. 9 for 1 in the over. Number second is in progress. Dharma. Again outside the line of leg stump, and going to be a one more single in the form of bye. It's 10 for 1. It's 10 for 1 in the over. Number second is in progress. The byes and leg byes to start with in this over. Here comes Dharma again. Karna drives that one, doesn't get hold up that in properly. One of his favorite, isn't it? Always we can see that Karna is one of his favorite area. At the in front of wicket, stretching his front foot out of the way of the line, transferring his weight onto back foot, always loves to play the shot. But now you need to play a different role here. The team is needed some partnership and some intelligent cricket if they wanted to win the match. It's 11 for 1, 1-1-1. You can see the Nelson in scoreboard. Oh, missed it. This is what the specialty of Dharma. Don't accept a similar delivery from this man. He is a kind of bowler. He will go into mixing up the delivery very well. The variation in his bowling. Different line and length. That's why he's one of the most successful bowler in the recent cricket. From Kasaragod district, Dharma. Drives that one again, doesn't get hold of that properly. Asif is looking for the expansive drive. But again, the line is so good for the right-hand batters. Good over, tidy over there from Dharma. I think that only 5 runs came from this over of Dharma. After completion of over number 2, it's 12 for 1. Time to call upon the 2 captains for the next match. And now it's going to be one more big match. We'll go into commence. United URWA versus White Horse. And it's an important match here for United URWA. More than the White Horse. And I'm one more team. I am really disappointed to see the performance of White Horse. They lost all matches with better when there looks like they're going to win the match very easily. They lost 3 matches. The match is in the hands of White Horse, but they couldn't manage to win the match. They're very much disappointed. Well balanced team, good players in the side. Very good pick from the owner of the team to get that balancing team. But that's the last 2 days we haven't done, even in the final day, which is not belong to White Horse. The one more successful bowler and as well as captain brought into attack, Pratap. It's very important for Pratap in exactly what role he need to play as a captain of the side. Sensible batting there from Asif. We know exactly, no need to panic at all.
seeing the target, which is almost a rotation of strike, which is good enough to get them into the target. But you know exactly which bowler he is facing. One of the most difficult bowler in underarm period. Pratap came down the track, hit that one into mid wicket and dropped by the fielder. Mustafa in the mid wicket region. How to take these chances? Of course, maybe a little bit difficult one, but in this level, when you're playing the big tournament, a high profile tournament like KUDLA Premier League, you have to give your 100%. Again, that drop catch of Karna. So this is going to be a bonus run here. The pressure is not only for the batter, but even the bowler started to feel. The Pratap just looking for the experiment and misses the line. Oh, this is not a good line. This is not a good line. Asif, one of his favorite area. Square leg in front of square and behind the square. The line is so good for the batter to get that one into the square leg. But beaten by the turn, in fact. Even that short pitch delivery, but an extra turn in the ball defeats Asif Adur's bat. That's why he just wanted to change his bat. He's calling his teammates to bring the bat after this over. It's 16 for 1. Oh, lovely delivery. Nowhere near the line and pitch of the delivery. Karna wanted to play against the line. Tried to swap the ball. Beaten by the turn and the flight. 16 for 1. Again, tried to yoke the batsman who almost reaching to the delivery. He need to extend his two hands to reach that low full toss of Pratap. Very hard to combine the runs. It's 17 for 1. Asif Adur wants the bat to want to change the bat. The 12th man brought the bat for him, and wait and see. After changing his bat, can he change the game here? Oh, lovely delivery. Wicketkeeper missed it. Wicketkeeper missed it. Chance of run out. Again, the missed it. 2 chances in a row, and even that's overthrow as well. This is absolutely sloppy. Eastern Avengers Farangipet is absolutely leaking some runs. Unfortunate. When things are going very hard for the batter to get the runs from the bat, you are simply giving some runs in the form of error. It's an error there from the fielding side. 2 runs, which is a huge one in this last delivery. Wicketkeeper missed it. Short final fielder tried to go for the run out. Pratap missed the throw. Again the runs. After completion of over number 2, it's 19 for 1. 3 gone, it's 19 for 1. The match is still evenly poised. Half of the job completed, Gopi, and half of the over is also completed. Another half of the over remaining, another half of the run required. And yes, 19 to get from 18 balls. So looks like, Gopi, it's going to be a very interesting match because both the teams wanted to win this match. Very important for both the teams if they wanted to remain in the competition. And looks like remaining 3 overs is going to be a very interesting and challenging for both fielding and batting team. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त मैच बराबरी पर रुक चुका। 18 गेंदों पर 19 रन बन चुके हैं, जबकि 18 गेंदों पर 19 रन बनाने हैं। और जहां तक सवाल है, आसिफ और करना एक सेंसिबल बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हुए, और इस वक्त गेंदबाजी हमसे दूर वाले छोर से शुरू करते हुए गेंदबाज नौशाद, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार करना। एकमात्र विकेट आतिफ के रूप में गिर चुका है। यह गेंद इस बार गेंद को मोड़ना चाहा था, नॉट कनेक्टेड दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, और गेंदबाज विकेट कीपर कहना पड़ेगा प्रताप अपने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करते हुए रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार नौशाद, अगली गेंद, यह गेंद जस्ट कन्फर्मेटिव, नॉट सक्सीडेड वंस अगेन। 2 गुड डिलीवरीज बोल्ड बाय नौशाद इन दिस ओवर। 2 बेहतर गेंदे फेंक चुके हैं। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराया था, इनसाइड एज ऑफ दैट फ्रॉम करना, और 1 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और गेंदबाज इस बीच नौशाद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आसिफ के लिए। इस बार गेंद को उछालना चाहा, लेकिन गेंद को खेला गेंदबाज की बाईं ओर से, और नौशाद ने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकना चाहा था, लेकिन नाकामयाब रहे। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। बराबर का संघर्ष यहां पर जारी। 21 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और सामना करते हुए इस वक्त करना।
इस बार करना का स्ट्रोक है और स्ट्रोक इस वक्त जा चुका है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ जो करना ने इस वक्त लगाया है, समीकरण आसान होता हुआ देखिए रिप्ले पर किस तरीके से उछाला था। ही जस्ट हैमर्ड इट अवे थ्रू द डीप मिड विकेट फेंस फॉर अ मैक्सिमम। और इस छक्के के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर, 27 ऑन द बोर्ड। दैट मींस जस्ट 11 रन्स रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री। और इस बीच छक्का प्रदान करने के बाद गेंदबाज नौशद देखना यह है कि अगली गेंद पर किस तरह कमबैक करते हैं। और रन से बन चुके हैं। इस बीच गेंद को खेल दिया बड़ी लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए। 28 ऑन द बोर्ड। नाउ 10 रन्स रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री। तो समीकरण इस वक्त काफी हद तक आसान बन चुका है। 13 गेंदों में 10 रन बनाने हैं और आसिफ अड्डूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछाला इस वक्त मिड विकेट पर, गेंद को नहीं, गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। मिसफील्ड होता हुआ डीप मिड विकेट पर फील्डर द्वारा। और आखिरकार इस चौके के साथ समीकरण बिल्कुल आसान बन चुका है अब। और देखिए यहां पर किस तरीके से स्ट्रोक आसिफ अड्डूर ने उछाला था डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मिसफील्ड की बदौलत चौका प्राप्त करते हुए बल्लेबाज। समीकरण बिल्कुल आसान हो चुका है। 6 रन चाहिए, 12 गेंदे बाकी। 13 रन केम फ्रॉम द लास्ट ओवर। 13 रन अंतिम ओवर में बने नौशद के। और इस ओवर की बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा ईस्टर्न एवेंजर्स आर नाउ बैक इन द गेम। मैच नंबर 4 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत तीसरे दिन का मैच नंबर 4 इस वक्त प्रगति पर। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट कुडला प्रीमियर लीग KPL, द IPL ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट के अनवर्थ नाम से जाना जाता है। इस वक्त इस मैदान पर प्रगति पर। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज प्रताप और करना इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बार ड्राइव कर दिया करना ने गेंद को। इस वक्त मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ अब 33 रनों पर, 33 नाउ। और प्रताप अगली गेंद करते हुए इस वक्त मोड़ दिया आसिफ ने खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्कोर लेग पर 1 रन के लिए। एक बेहतरीन साझेदारी यहाँ पर जमते हुए। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त, इस बार टॉप एज और नहीं, विकेट कीपर नहीं पहुंच पाए इस वक्त। और रन से इस बीच बल्लेबाज को मिला दूसरा रन के लिए। इस बीच दौड़ पड़े। जहां तक का सवाल है इस वक्त रन कितने मिले हैं यह देखना पड़ेगा। 2 रन एडेड टू द टोटल। मुश्किल सा मौका विकेट कीपर गवाते हुए। अब सिर्फ 2 मात्र चाहिए रन विजय के लिए। एक बेहतरीन साझेदारी पार्टनरशिप यहां पर बनते हुए करना और आसिफ अड्डूर के दरमियान। प्रताप left it, and this time he finds the gap as well into the stage. That's it for this match. Karna finished the match in a style with a boundary and a comprehensive victory for Eastern Avengers against New Star Chokabetu, and with that victory they back the complete points. So the match number 4 has been came to an end, was won by Eastern Avengers against New Star Chokabetu, and with that victory they back the complete points. So the next match will be the match number 5 is going to begin within just short while between United URWA versus White Horse, and that match is now coming up live exclusively right in front of you within just short while. तो मैच शुरू होगा एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब हाशिम के साथ अंग्रेजी में हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर अगला मैच नंबर 5 शुरू होगा इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट। तो अब वक्त एक ब्रेकअप के बाद हाशिम जो कि यहाँ पर माइक्रोफोन संभालेंगे अंग्रेजी में। धन्यवाद, थैंक यू। So man of the match, undoubtedly the man who performed fantastically from the bat, remained unbeaten on 26. Karna of Eastern Avengers adjudged man of the match for his fantastic knockoff, unbeaten 26 runs. Karna of Eastern Avengers adjudged man of the match.
For the next further comments, I'd like to invite once again my one more dearest friend, Mr. Hashim, in English, when the next match will going to start. Thank you. Dhanyavad. Right, back for another game. Post-lunch session again, ongoing. Hard work for the players, for the umpires, for the back-end crew members as well. Under the hot sunlight to really play cricket, just play competition cricket, really.
White Horse Mangalore taking on United URWA. The two great gun teams are actually battling once again here in this beautiful spectacle. It's lovely to be here in the comm box at URWA. Actually generally gives a lot of confidence, and because also, you know what, it's really exciting to be here in the first place as well. So we're getting into the business end of the tournament. Business end, it's just going to be going into the back end of the tournament. All set, yes, already. White Horse. White Horse looks to be out of the race here, but they've got nothing to lose. It's always good to have a win under your belt. Going to be judged. The history would judge how many wins you've gotten under your belt. So you look at the points table, you'd say, okay, we've got at least 1-2 wins, even if we don't qualify. You don't want to play cricket with no competition. Try to play across the line, the two. Arif, the batter. Tanwe, the bowler. Tanwe's bowling for the Manoj Shetty. Ashwin Rajpujari end. Bowling to the right-handed Arif on strike. Big ball striker. Going down slightly. Just got off target. Just got bang on the money. The bowler bowling beautifully. Trying to, not giving that sort of freebie on offer for the batters to deal against White Horse. Batters have struggled throughout the tournament, actually speaking, so they've got to put one step forward now, potentially try and get to, you know what, getting back to winning ways if they can. Tries to sweep it, can't be run. The fielding standards set by United URWA is always super high. And there's the example of that. It's been referred to the TV umpire, I think. It's been referred to the TV umpire now. I think White Horse, they've got nothing to lose as far as this game is concerned. And they'll be disappointed if they can't really get back to winning ways. Generally, if you look at even internationally as well, they don't want to lose, even if they got one last burst. They got to get back to winning ways in a way that they can shape their team in a beautiful way. And it's been out decided by the umpire. It's got to go back to the hut. But I think this has been the problem. If you look at realistically the way they've gone about their business, whether they're batting, they're bowling, White Horse, I think their skill execution hasn't been up to the mark, and that's one of the reasons why they put themselves on the back foot right through the tournament. They could have done a lot better, actually, in terms of the way they've actually gone about their batting, their fielding. They've got some gun players, got some amazing, outstanding players, but they haven't been able to execute skills. So cricket's all about executing skills at the highest level. I think you might be a gun batter, you might be a great batter, you might be a great bowler, but if you're unable to execute the skills, that doesn't matter. Even if you look at internationally, Virat Kohli is someone who executes skills all the time. Joe Root's the other person, executes skills all the time. You've got someone like
you know, Sachin Tendulkar played so many games, executed skills all the time. And that's why they're number one. They're in the top ranked positions. New bat comes in. Tries to sweep it. Beautifully done. Great bit of fielding there. Excellent field. I think got a misfield on that occasion. Gonna be just the one there. Thought that he might have fielded it. Got unsighted a little bit because of the cameraman. Just trying to find out a little bit more about it. But just the one there. Excellent bit of batting there by the batter. Straight away on the sweep. Tries to go for the big shot. Missing that completely. It's going to be another dot. It's going to be a dot ball. 2 for 1, White Horse find themselves at. The execution of the skills that I talked about is the real constraint actually for their side. And that's where I think they're going to find the way. Find a way. You've got to look at, I think this is what you've got to do. Nowadays, we've got the modern technology. The modern technology allows you to analyze about your game. You've got to analyze, got to go back, find out what lines the bowlers are bowling. What type of batting do you showcase? I think that's what good batters do. Good batters always want to find out about the way they go about their business, and that's the most important thing in cricket. Always. Even internationally nowadays, so much of technology such as big data. Big data is one of the technologies that players use nowadays to find out about their game in an analytical point of view, to try and find out about where they go wrong, if they get it right, I think this is where the game allows so many different dimensions to allow you to get back if you're not in good shape. New bowler. Sharon. Beautiful bowling that is. Round his legs, can't be out. No, got to wait for the umpire's decision. There. But negated straight away by the umpire. Sharon, I think it's a good idea to try and bowl down the leg side, try to bowl round his legs. One of the bowlers that's been very dominant, or one of the real strategies by the bowlers that's been invented by the bowlers, to bowl round the legs to try and tie the batter up. In the air, is it going to be taken? Oh, it's been put down. That should have been taken. Easiest of grabs, easiest of catches. All he had to do was just to control his body movement a little bit. But I think he was not able to control his posture. Therefore, the catch going down as a result of that. Naufal and Rakshak. Rakshak on strike now. Good player of sweep shot. Rakshak tries to go over. Missing the line completely of the ball. Just got it away a little bit, I think. Tries to play straight down the ground. Rakshak loves to do that on a regular basis, to try and, you know, take the attack straight down the ground. Rakshak goes for the big one this time around. I think still safe. This time it's Rakshak actually trying to take the counter punch approach, but got a little bit of an outside edge. The ball ballooned in the air and falling in a no man's land area for 1. 4 for 1 they find themselves at. 1.4 overs have been bowled out. Sharon's bang on target. Has been bowling brilliantly. The pace at which he's bowling has been superb. Goes over extra. Just the one there. Launching that, but couldn't get the power behind that shot to get it past that fielder. Doesn't matter, just the one. 5 for 1. White Horse. The fact that White Horse found themselves out of the race and out of the running should give them a sort of psychological advantage to try and play freely without being under pressure. And now it's very evident the way their skill sets have been executed
right through the tournament, even in the game as well, which almost is a dead rubber. They haven't played to their identity. They haven't played to their potential at all. Because you look at now the scorecard, 2 overs done and dusted, 5 for 1. Very much tells you the story about how they might have approached. I think their approach it's going to be questioned, the batting approach. The think tank, the coaching staff, the owners, the back-end team got to get together and find out about what went wrong in the tournament for them. Whitehorse generally sets high standards for their batting. Some of the batters they've gotten are really good and can make a big difference when it comes to their batting. But it's been a spectacular fail, the way they've gone about their batting. Now full. We're going to be on the strikers end now. He's got to try and pack a punch here, or try to... The power play overs are done and dusted. It's not a good side for a batting side when your power plays are done and dusted. You're 5 for 1. Almost tells you a story of how badly you batted. And I understand that it's not a positive term to say bad, but you've got almost no options at times to talk about your skill execution. And that is the most important thing. In cricket, the skill execution part is the most important thing. Cricket's all about soak up pressure, put pressure back on. Have a look at that shot. Really, not really reading the line of the ball. It was a wild swing. And talks about also the amount of practice, the preparation into the tournament as well. The amount of preparation these Whitehorse batters have to go into leading into this tournament. Excellent. Carnby just got away with that one. Firing on the offside, actually, the bowler. Shana was. Got 2 balls on the trot. In the right areas and have considered to be not a run. Got the outside edge, taken beautifully. Excellent catching, that is. He had to track forward. He was not in a position to track forward, actually. He's in a station position where you cannot expect the fielders almost had an afterthought that he had to run forward. And he's done that beautifully. Another wicket going down for Whitehorse. I think it's the first wicket going down for Whitehorse. And they find themselves in a disaster point in the game. New batter. Nizam, one of the top players or top-notch cricketers in underarm cricket. Nizam played for many teams, including Success Bedra as well, just recently. And is one of the players to watch out for. But all the eyeballs are on Nizam, actually, generally speaking, this tournament. But his skill execution has been totally awkward this season, really. Beautiful shot, that is. What a lovely shot. Pleasing on the ice. Attractive shot on the offside. Fantastic off drive to get off the mark. And I think someone like Nizam must open the innings. It's very simple. The game plan, the strategy, to me, Whitehorse missed the trick. Someone like Nizam should be standing right at number 1 and number 2 and probably give him that license to play shots. Because he's a game changer. White signal by the umpire. He's a game changer. He can turn things around in a nick of time. You give him the license. You give him that leverage. Okay, we don't mind. You get out. It's okay. You come into the dressing room. We don't worry about you getting out. But you got to play to your potential. Coaches, the captains, got to make sure to get the players playing to their best. And that is the key trait your coaching staff, your captain needs to have to get your team perform to your best. And this is what Mr. Hanif KFC has done. He got his players playing to the best. And play fearless cricket. Got to build that culture. Not sure, I think. He's got to go back to the hut. That's his favourite shot, Nizam. But that shows about his form this tournament. Really has been bizarre output. And he's got to take a walk back. Slightly on the angle, slightly going down, I think. Midland hitting.
And Nizam's got to take a walk back. I think it's been a disappointing series for someone like Nizam. You don't get to see that very often, but he's got to take a walk back. So that talking about a little bit about the way how the coaching needs to think about coaching, and also the back end team, the mentor, got to think in a different way. When the game's not working, you got to think in a different way. Try and put pressure in a different manner. It's almost like a sort of metrics. It's almost like a sort of, you know what, puzzle game. You got to try various different things to try and bring about your best. Sometimes a homogeneous way of executing things might not work out. And that's it. 3 overs done, 8 for 3. And to tell you more about the next 3 overs, it's going to be a change in the commentary. It's going to be Mr. Satish who's going to give you a ball-by-ball explanation for the next 3 overs. Over to you, Mr. Satish. Nicely bowled, the first delivery of the over number 4, and Sharan brought into attack. It's been a very slow start here for the team of White Horse Mangalore. This time played it straight to the field, and one more chance for the run out, but high throw came from the fielder Mahesh at short mid wicket range. Mansoor need to become almost 7 feet height to take that catch, take that throw from the fielder. He made a jump, but not good enough to gather that one neatly. And Rakshak survive. Here comes Sharan. Rakshak, one more batter who really disappointed. The one match I still remember, after being gets the team into the near to the target, but once he back in the pavilion, other batters fails to get the winning run. And that's why the White Horse are absolutely, they're sad to say that they're out of the tournament. Rakshak, this has been outstanding stuff. What a glorious. He's a man, he's the only one player who is playing a baseball. This is absolutely baseball cricket. The high bat lift, and I'm now watching him. There's a little bit change in his batting stance and the bat lift. And the present I'm watching is not lifting the bat that much of high. But have a look at his bat. It just looks like it's a baseball bat, isn't it? The way that he's picking that one, absolutely fantastic to watch. He's not doing it first time in his career, such kind of cricketing stroke. The far outside the line of off time going to be a wide, a big wide. This is what happens when the batter hit you very badly, and then it's not so easy for the bowler. The over number 4 is in progress, 16 for 3. Oh, what a comeback! What a comeback here from Sharan. This is almost a wicket-taking delivery. Very lucky indeed there from Sharan. The correction score how much? 16 for 3. In over number 4 is in progress. Rakshak will go into face Sharan. Came back very strongly after that 6. Again, have a look at the sound. Have a look at the sound. Hit that one right from the middle of the bat. Picked up a single. 17 for 3. And after completion of over number 4. But still, it's not a big run in the board. Even though the 6 came from that over. But because of that very slow start in the first 3 overs, still they are very slow. 4 gone, it's 17 for 3.
Now Mahesh brought into attack to ball over number 5 to Rakshak. Is batting on 10. Double figure. It's been a very good day for cricket. Again hit that one pretty well down to mid wicket. We need to search the ball where it is gone. The slower one there from Mahesh and Rakshak almost drags it that one into the mid wicket region for a single. 18 for 3 in the over number 5 in progress. All we can say, the United URWA, they know exactly how important this match is going to be if they wanted to be in the competition. They got a good start, no doubt at all, from the ball. This man appealed for leg before he could umpire says, rightly so, that ball going to miss the leg stump. Being the cricketer, being the player, Jayant knows exactly what the ball will going to do here because the leg cutter, of course, hit him in the line. But because of the some movement in that delivery, leg cutter, the ball going to miss the off-stump, right call from umpire. It's 19 for 3 in the over number 5 is in progress. Full toss, swings it out, and he got a distance. This is the one delivery I want to tell you. He will going to enjoy the most because in the baseball, the ball is coming in a pull. Ball is coming in a pull and the same height the ball will going to come. When it's very difficult to survive from the stroke of Rakshak. The man who represented for the state and played some high-profile baseball tournaments. The only one player who represented for South Kendra district is chosen for the selected for the South Kendra. And is absolutely enjoying his batting here with the 2 massive sixes. Even you can see the shape of if the cameraman will go into focus the bat of the batter. If you see that the shape of the bat, the handle, and even you can see this is just like the baseball bat. It's not, if you see the height of Rakshak, he's got a very good height, but have a look at that bat he's using. It's not that much of tall enough. That even the thickness is not that much of huge. Of course, 4.25 inches, which is needed for the underarm cricket. Not an underarm cricket, even it's the international rules. But we have a thickness, the width what we're talking about, the 4.25, but they got a thickness of the bat. It's just like the baseball bat. It's 25 for 3. Again, outside the line of off-time, good comeback here by Mahesh. After that, he bowled a full toss delivery. Then he need to come back very strong with that beautiful line and length. It's 25 for 3. At least the 45 to 50 runs is definitely going to be a good score to depend on its condition. It's very hot. Afternoon, 2 past 45. And this most beautiful, lots of underarm cricket. Again, down the leg side, punishable, not from the batter, but from the umpire. 27 on the board, white call by umpire. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ಪಾಯಿಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೆ ಸುರಗಿರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲವ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ರಮ್ ಮಹೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ಷಕ್. Now they're taking the review. Whether they got one review. Please note, each team has got one review. They can take a review. One review which is given in the particular day. There's now an umpire going for the review. The review asked by Rakshak. But I don't think it will going to be a good review. As my view, I think it might be not a good review. But wait and see whether the review which is successful or not. It's a fair delivery. I already mentioned it's not a good review. The reason why that, you see that where Rakshak is standing, his back foot is almost outside the line of leg stump, and he tried to reach to the delivery. That's what make a little bit confusion for him. That it is going to be a wide delivery, but it's a fair delivery. 26 for 3.
Swings and got a bat onto that last moment. One more single. With that single score, moves on to 27 for 3 in the over number 5 in progress. The 5 gone. 26 for 3. 27 for 3, in fact, after completion of over number 5. Last over remaining in the innings of White Horse. They wanted to finish their journey with the victory. At the same time, United URWA, they doesn't want to finish the journey. They wanted to remain in the competition with the victory. It's a must-win match here for United URWA to survive. Now in the picture we can see this is what the beauty of broadcast camera which is used for KUDLA Premier League. The speciality of Bedra Media, having such a good quality cameras covering. If you zoom from anywhere, you will get the quality and clarity. That's one of the speciality of good cameras, the broadcast camera which is implemented. It's 27 for 3. Here comes Rahul, last over. Balled him, cleaned him up. This is a very good delivery indeed, but unfortunately the ball which just came along the carpet while Rakshak wanted to go for the drive. Ball has got a bounce. Dipped its bat and hit the stump. Just have a look at it in replay. Wide of the crease he balls. And lovely delivery, good line. The shaping very nicely. The leg cutter disturbed the furniture. It's 27 for 4 in the over number. Last is in progress. Rakshak departs after he scored 18 valuable runs from the bat. And the one more batter coming to the middle, a man in a good form, Pritham. That's why I'm mentioning about, I'm very much disappointed with that team's performance of White Horse. They got a very good quality players in the side, informed batters, informed bowlers. Pritham absolutely nailed that one. This is one of the second sixer. We can see that it's almost hitting the commentary box rope. What a shot, stand and delivered. Just transferred his weight onto the back foot and have a look at that ball. Is gone very high and handsome. But now we are not to hear that sound, ton, ton, ton. I don't know what the reason. but Arshad Bajal's 6 which is hit the... Of course, if Abdul Rehman Bekur of Kasaragod, the commentator, will always enjoy that comedy, ton sixer. It's 23 for 4. Wow, once again come back here from Rahul. After that 6, you know exactly that which line and length is required to dismiss this man. Pritham departs. It is 33 for 5 in the over number. Last is in progress. Yes, what we are talking about, White Horse, they are not up to the mark. The one man, again, coming to the middle, is very much disappointed. I am not disappointed with the team performance, but the captain, Ajmal, being such an experienced captain for the side. And Ajmal is a man, absolutely, couldn't manage to deliver what is he really knowing for. Being the captain of the side, got a very balanced team. Down the leg side is going to be a wide. One more extra, with that extra score on 34 for 5. Such a class player, Ajmal. Got a wonderful career. Again, dripping onto his leg and try to hit the ball. Deflected from his leg. Will going to pick up a single for that. With that single score more than 35 for 5. One of the most successful captain represent for the team, young friend Ajmal. That's why everyone has got
the prediction about the White Horse team that it may be the favorite team in this particular season. Leg by call by umpire. The first was one of the new team present for the KUDLA Premier League season 10. White Horse, Mangalore. Rahul round the wicket, right arm. Drives, nice looking stroke down to long on bowler's back drive. Now they're coming back for the second, and looks like the Faisal. Will it go into a couple of runs and wait and see? The last delivery of their innings. Umpire asked for the TV umpire to give the judgment. The throw which is high and drags it. Wait and see. It's going to be, it looks like maybe the batter is danger. Is gone. Just a single run. Faisal is short of his crease. Just a single run added total. That means the target which is set. 38 is a target. 37 is a score. The one innings which is a little bit impressive from the batting point of view of the team White Horse, the Rakshak. But I have a look at the Tanveer and he's been absolutely fantastic. 2 runs is economy. One of the best economy. Starts well with the good overs. Of course, they started slowly and progressed very nicely, but again finished slowly. And only the middle part of their innings, but Rakshak came in and picked up 2-6. That is the only the point that White Horse are looking in. Of course, they managed to get a big score. But anyhow, the 37 is not a bad total to defend. If they bowl well and fields well, wait and see. They can bounce back in the bowling department. And wait and see. We'll take a short break in the commentary box. And after short break, the first time today, we'd like to invite one more, the big name as far as Kannada commentary is concerned, the experience. Majid Mallor will going to join in our commentary box. Welcome, Majid Mallor, for the final day of this cricket tournament. Definitely, it will go into give a lot more excitement in the remaining matches of KUDLA Premier League. And welcome for you, and good evening as well. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರಬ್ಬರಿಗೆ. ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಪಂದ್ಯವಿದು. KPL ಸೀಸನ್ ಆವೃತ್ತಿ 10ರ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 38 ಫುಟ್ವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಜಲಾಲ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಫಲ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುವಿದೆ. ಬರಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೌಫಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ವಾಸಿತ್ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟವನ್ನು ಬರುವಾಗ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 1ರಲ್ಲಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಬಾಶೀದ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ನೌಫಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಜಲಾಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಕೆಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆವೃತ್ತಿ 10ರ ಧೂರಿಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿವಸದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭುವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜಲಾಲ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆರೀಫ್ ಒಂದೆಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನೌಫಲ್ ಜಲಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ನೇಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿಸಿದ್ರು ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಾಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ, ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಾಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂಥೋಡ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 36ಕ್ಕೆ 38 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನೌಫಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೌಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಫಲ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನದಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಇರುವಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ಮನ್ಸೂರ್ 1ರಲ್ಲಿ ತಂಡ 2ರಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬಾಶಿತ್. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಲ್ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅವರ 4ನೇ ಚೆಂಡು ನೌಫಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಜಲಾಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್. ಆ ಬಳಿಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಆಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಇದು ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3ಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಬಾಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೆಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ಹೊಡೆದ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಹಿಡಿದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಗಿಲಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದವೆ. ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಪಡೆದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಚಿರತೆ ಮರಿಯಂತ ಆಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. End of the over number. First score moves on to 3 loss of 2 valuable wicket. 3 ಆರಂಭಿಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಿ 3ಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತ ಬಾಶಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಾಜೇಶ್ ಒಬಾರ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ
ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅವರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಫಲ್ ಎಸೆದಂತ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಬಳಿಕದ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿಜಾಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಬಾಸಿತ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೋಬರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೆಲೆಮಟ್ಟ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ಬಂದಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುವುದು. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇರುವ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 38ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂದಿದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ನಿಜಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನ ಸಜ್ಜುಪಡಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕೆಪಿಎಲ್ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್ ರೈಟ್ ಅಂಬ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಬಳಸುವುದು. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮನ್ಸೂರನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗ ರಾಜೇಶ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೌಂಡರಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ವಿಕೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೌಂಡರಿ ಇದು. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟವಿದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 1 ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9-9ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಬಾಸಿತ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೋಬರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮಾನವೀಯತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ನಿಜಾಮ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಘು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಹುಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಿತೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ನೇಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಒಂದು ಸುಲಭ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಹುಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಶ್ರಮಿಸುವ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಹುಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 38 ವಿಜಯದ ಗುರಿಯಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 11 ಆಟಗಾರರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾಯಕ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 27 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಣಿಸಿದಂತಹ ನೌಫಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಆಡುವ ಹೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್ ಉಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನ ಸಜ್ಜುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗದೆ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೌಫಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಾಜೇಶ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೀಪಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬರುವ ತಂಡ. ಬಾಸಿತ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜುಪಡಿಸುವುದು ನೌಫಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಬಾಸಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ನೌಫಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಐಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತನ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿ ಮಾನವೀಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟವಿದು. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಎಸೆದಂತ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ನೌಫಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವಿದು, ಚಹಾನ್ಮಯ ಆಟವಿದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಿದು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡದ ಬಾಸಿತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಾಗ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ನೌಫಲ್ ಎಸೆದಂತಹ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3 ಓಟವನ್ನು. ಆದರೆ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಬಾಸಿತ್ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಸುಲಭ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವಿದ್ದು ರಫೀಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 17ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 38ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೌಫಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 6 ಓಟವನ್ನಾದರೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಅಶ್ರಫ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಅವರ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಎಡಗೆ ದಾಂಡಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಗೋಪಿ ಸರ್, ಅಯ್ಯೇ ಗೋಪಿಜಿ. धन्यवाद मजिद भाई। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो 18 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है। व्हाइट हॉर्स और यूनाइटेड उर्वा के बीच मैच इस वक्त खेला जाता है। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, तो गेंदबाज निजाम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए यूनाइटेड उर्वा के लिए इस वक्त लक्ष्य तय किया था। व्हाइट हाउस ने 38 रनों का, और इस वक्त 3 ओवर के बाद 18 रन बच चुके हैं। 18 बॉल्स 20 रन रिक्वायर्ड। और चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज निजाम इस वक्त तैयार, जबकि सामना करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद बासित।
तो कम बैक करना है। तो इस वक्त व्हाइट हॉर्स के गेंदबाजों को इन बचे हुए 3 ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। मैच नंबर 5 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस prestigious cricket tournament KPL Kudla Premier League season 10-2026 is now progressing here under the great leadership of Mr. Tilak Guru। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो निज़ाम इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 रन टू गेट फ्रॉम 17 डिलीवरीज। और गेंदबाज ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का। हालांकि ऐसा कहना पड़ेगा राजेश उबर ने गेंद तक पहुंचना चाहा था लेकिन नहीं पहुंच पाए और गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में पहुंची, जहां पर रन्स मिले एक वाइड के रूप में। और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और गेंदबाज इस बीच निज़ाम गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी और गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में। 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। बासित और राजेश पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए अपनी टीम को एक सही मंजिल की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश करते हुए। दाहिने हाथों पर द विकेट, यह गेंद इस बार बासित का स्ट्रोक वाइडिश मिड विकेट पर, मौका और क्या छूट चुका है। दूसरे प्रयत्न में भी गेंद को नहीं लपक पाए और आखिरकार थोड़ा सा मिस जजमेंट, हवा में डोलती हुई गेंद डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में पहुंची थी। और यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था, गेंद को इस वक्त लपकना चाहा, पहले प्रयत्न में लपक नहीं पाए और दूसरे प्रयत्न में भी लपक नहीं पाए। और जहां तक सवाल है जीवदान का, तो बासित इस वक्त जीवदान प्राप्त कर चुके हैं। 1 रन का इजाफा हो चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 21 रनों पर। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और निजाम अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट, द लास्ट मूवमेंट बाय राजेश उबर, नॉट सक्सीडेड, फ्लाइटेड वन, परफेक्ट लेकेट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन। और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। और इस बीच निजाम अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद राजेश के लिए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद का, तो गेंद इस वक्त सही घोषित की गई है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज निजाम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। और इस बीच इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद पर उछालना चाहा, चूंकि इस वक्त ओवर की समाप्ति, बेहतरीन ओवर की समाप्ति, फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम निजाम। हालांकि एक वाइड जरूर उन्होंने इस ओवर में फेंका था लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 3 रन इस ओवर में वो प्रदान करने में सफल। अब द इक्वेशन स्टैंड्स 17 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 12 डिलीवरीज। 17 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी। और निस्संदेह पिछला ओवर जो था निजाम का इस वक्त व्हाइट हॉर्स को कुछ हद तक इस मैच में वापस ला चुका है, काफी हद तक कहना पड़ेगा इस मैच में वापस ला चुका है। तो अब काफी लंबी बातचीत करती हुई व्हाइट हॉर्स के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बासित। निश्चित रूप से इस ओवर में कम से कम 10 से 12 रन यहाँ पर बटोरने होंगे कम बैक करने के लिए यूनाइटेड उर्वा के बल्लेबाजों को। जबकि गेंदबाजी का तो हफीज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, 17 टू गेट फ्रॉम 12 बॉल्स। स्टिल आई मस्ट से इट कुड बी एनीबॉडीज गेम इन दिस सिचुएशन। ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप पर आते हुए पैर पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन का इजाफा, 1 रन एडेड टू द टोटल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 22 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट। बासित ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं, सामना करने के लिए तैयार इस वक्त राजेश उबर। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हफीज, बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश उबर जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण इस वक्त हमें दिखाई देता हुआ। राजेश उबर के लिए लॉन्ग ऑफ मौजूद, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर, जबकि डीप मिड विकेट पर एक फील्डर कुछ हद तक आगे आते हुए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद और डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त ना ठीक सीमा रेखा के पास लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में। 11 गेंदें बाकी और रन से चाहिए इस वक्त 16 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 11 डिलीवरीज। और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज
हफीज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश उबर्रा जो कि इस वक्त सामना करते हुए। हफीज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दूसरी गेंद लेकर तैयार, यह गेंद ड्राइव कर दिया राजेश ने, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, सिंगल रन एडेड। That was an absolutely brisky single, but completed safely at last between these two batsmen, and with that single run, scoreboard moving up to 23 now. That means 15 required from 10 balls. और जहाँ तक सवाल है हफीज का, दो बेहतर गेंदें इस वक्त फेंक चुके हैं, अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार बासित सपना करते हुए इस वक्त हफीज की गेंदों का दाहिने हाथों पर विकेट। यह गेंद इस बार बेहतर लेग कटर गेंद थी, गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की लेग कटर गेंद के धीमेपन को देखते हुए उछालने के इरादे को बदलकर गेंद को कट करना चाहा, चूके शॉर्ट थर्ड मैन पर जब तक गेंद फील्ड और बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 1 रन एडेड, 3 balls 3 runs फ्रॉम हफीज। और चौथी बार इस ओवर में तैयार गेंदबाजी करने के लिए 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज हफीज फेंक चुके हैं। राजेश इस वक्त सामना करते हुए और हफीज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त राजेश उबर के लिए यह गेंद, इस बार राजेश का स्ट्रोक, गेंद जाती हुई मिड ऑन की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन बल्लेबाज को मिला। इस बीच विकेट जरूर उखाड़े गए गेंदबाज द्वारा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर अपना बल्ला यानी बैट रख चुके हैं और तेजी के साथ ये रन न पूर्ण करते हुए एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। नाउ इक्वेशन स्टैंड्स 13 to get from 8 deliveries. What a match is now progressing here. The match is now heading towards to a nail biting finish. और बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, 2 विकेटें जलाल और मंसूर के जल्दी गिर जाने के बाद ये दोनों बल्लेबाज पारी के भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए, लेकिन अभी भी कुछ हद तक कठिन सा इक्वेशन उनके सामने। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार बासित के लिए फैंटास्टिक डिलीवरी, आउटस्टैंडिंग वन। और खासकर डेथ ओवर्स में बासित जैसे बल्लेबाजों को खामोश रखना कुछ मामूली बात नहीं है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस ओवर का, तो हफीज ने इस ओवर में काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की है और कुल मिलाकर गेंदें बाकी है सिर्फ एक, पहले 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन अब तक प्रदान कर चुके गेंदबाज हफीज। इस ओवर में अंतिम बार तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए 13 to get from 7 deliveries। हफीज दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद चूके इस वक्त इस बार विकेट कीपर चूके और इस गलती की वजह से बल्लेबाज एक रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं 22 के रूप में। फैंटास्टिक ओवर केम टू एंड फ्रॉम हफीज एंड नाउ द इक्वेशन स्टैंड्स 12 to get from last over 6 deliveries 12 runs। और निश्चित रूप से इस अंतिम ओवर में ऐसा कहना पड़ेगा कम से कम एक चौका या छक्का यहाँ पर लगाना ही होगा बल्लेबाजों को कम बैक करने के लिए। फिलहाल पिछला ओवर अंडर प्रेशर हफीज ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है, 6 गेंदें 12 रन चाहिए, 12 runs to get from 6 deliveries। काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलती हुई व्हाइट हॉर्स के खिलाड़ियों के बीच में कि मैच निर्धारित ओवर किसको दिया जाए, बातचीत इस वक्त जारी है और देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त अंतिम ओवर शुरू करते हैं। काफी प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, दोपहर के 3:20 यहाँ पर बचते हुए धूप का प्रकोप अभी भी उसी हद में बरकरार और गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए और इस भीषण गर्मी तले एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट केपीएल कुडला प्रीमियर लीग सीजन 10 2026 श्रीमान तिलक गुरु इनके सारथ्य में एक बेहतरीन प्रगति करते हुए। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, फैजल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार बासित इस वक्त सामना करते हुए। निश्चित रूप से बासित के दिमाग में ये बात, ये सोच, ये कश्मकश इस वक्त ज़रूर चल रही है कि किस तरह की बल्लेबाजी अपनाई जाए इस वक्त बचे हुए 6 गेंदों में 12 रन बटोरने के लिए। और इस बीच फैजल विकेट कीपर दूसरे खिलाड़ी के साथ कुछ बातचीत यहाँ पर करते हुए और इस वक्त अपने गेंदबाजी के स्थान पर लौटते हुए। हालांकि 37 रन जरूर व्हाइट हॉर्स के बल्लेबाजों ने बनाए थे, लेकिन उस स्कोर का संपूर्ण समर्थन करते हुए पहले 5 ओवर में एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है व्हाइट हॉर्स के गेंदबाजों ने। और वक्त है अंतिम ओवर का, तो इस अंतिम ओवर में देखते हैं विजय किसके पक्ष में जाता है। 12 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी, 12 to get from 6 deliveries। फैजल ओवर की पहली गेंद लेकर बासित के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार और
बासित इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार बासित का स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। शायद एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, जस्ट सिंगल ही गॉट, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 27 रनों पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। नाउ 11 runs to get from 5 deliveries, 10 for tie, 11 for win, 5 balls left। और फैसल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश उमर के लिए। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई, स्क्वायर लेग फील्डर के इस वक्त पीछे भेजा जा रहा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, यह जानते हुए कि राजेश बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, डीप स्क्वायर लेग पर बेहतर स्ट्रोक्स खेल लेते हैं। तो इस वक्त ऑफ साइड का जहां तक सवाल है, लॉन्ग ऑफ पर कुछ हद तक फील्डर को पीछे भेजा गया है, मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ पर भेजा गया है, और 4 खिलाड़ी कुछ मिलाकर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। और इस बीच फैसल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार राजेश उमर, जो कि सामना करते हुए दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता दिखाई देता हुआ। और फैसल दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए राजेश के लिए यह गेंद लेग स्टंप से बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े। इस बीच एक रन मिलेगा, इस बीच वाइड का इशारा, दैट मींस 1 + 1 2 runs नाउ एडेड टू द टोटल, 2 गिफ्टेड रन्स। तो रिव्यू इस वक्त लिया गया है गेंदबाज द्वारा, और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद गुजरी थी, और जहां तक सवाल है फैसल का, तो गेंदबाज ने अपने पेस की रफ्तार को वृद्धि करने के प्रयास में गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर फेंक दी थी। और जहां तक सवाल है इस वक्त तीसरे अंपायर का, तो देखते हैं तीसरे अंपायर इसका परिशीलन न करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। मैच नंबर 5 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, और इस वक्त मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। वाइट बॉल इज द कॉल फ्रॉम द थर्ड अंपायर, और रिव्यू इस वक्त बेकार जाता हुआ गेंदबाज फैसल का। तो 2 रन इस वक्त जोड़े जाएंगे, 2 runs एडेड टू द टोटल, नाउ 9 runs टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 5 डिलीवरीज। और निश्चित रूप से पिछले गेंद पर 2 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज। तो अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और जहां तक सवाल है, अब कोई भी रिव्यू इस वक्त फील्डिंग टीम के लिए नहीं बचा है। और इस बीच फैसल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त बासित। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड, दर्शकों से लगभग मैदान इस वक्त भर चुका है। मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है, मैच ऐसा कहना पड़ेगा अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। फैसल दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बासित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और 4 से 5 कदम इस वक्त गेंदबाज फैसल का रन अप। यह गेंद इस वक्त बासित के लिए स्ट्रेट टू द ग्राउंड, हिट दैट वन एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ मैक्सिमम। इट्स अ बिग गेम इन द इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द मैच। 35 on the board, massive struck came from the bat of Basit, और इस छक्के के साथ मैं कहूंगा यूनाइटेड उर्वा are now strongly back in the game. Now equation stands 3 to get from 4 deliveries, 4 गेंदें बाकी, 3 रन चाहिए। और यहां पर देखिए मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है, have a look at the stroke, absolutely effortless, just stand and delivered। और बासित जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, बासित का जहां तक सवाल है, जैसे कि मैं पहले भी फरमा चुका, निर्णायक मोड़ पर आक्रामक स्ट्रोक खेलने में माहिर है बासित, और यहां पर इसका उदाहरण उन्होंने दिया इस गेंद पर, गेंद को इस वक्त डिस्पैच करते हुए लगोर सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस बीच फैसल छक्का प्रदान करने के बाद कुछ हद तक दबाव में नजर आते हुए अब निस्संदेह कमबैक करने के लिए व्हाइट हॉर्स के गेंदबाजों को डॉट गेंद की इस वक्त सख्त जरूरत है इस अंतिम ओवर में। बासित सामना करते हुए इस वक्त क्लोजिंग फील्डिंग इस वक्त लगाई गई है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद, सिली मिड ऑफ मौजूद, और फैसल की गेंद, यह गेंद धीमे लेग कटर, गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, मिस फील्ड, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द फील्डर, मिस फील्ड इस वक्त होता हुआ 2 रन प्राप्त करते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड, रनों की बराबरी हो चुकी है। और इस बीच अंतिम 3 गेंदों में अब चाहिए सिर्फ 1 रन। पहली गेंद काफी बेहतर फेंकी थी फैसल, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद वाइड फेंकी, 2 रन मिले, तीसरे गेंद पर बासित ने छक्का जड़ा, और चौथे गेंद पर 2 रन मिले फील्डर की मिसफील्ड की वजह से। अब ऐसा कहना पड़ेगा यूनाइटेड उर्वा अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है। 1 रन चाहिए 3 गेंद पर। फैसल यह गेंद उछाला, बासित ने मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ
United Urwa registered a thrilling victory in the last over against Whitehorse, and with that thrilling victory, they bagged the complete points. तो जहां तक सवाल है बासित का अंडर प्रेशर जो वो छक्का उन्होंने झड़ा था, निश्चित रूप से इस मैच के चित्रण पिक्चर को पूरी तरह बदल चुका है इस अंतिम ओवर में. और अब जहां तक सवाल है मैन ऑफ द मैच का, तो देखते हैं यहां पर मैन ऑफ द मैच का खिताब किसके पक्ष में जाता है. तो यूनाइटेड उर्वा के मालिक, यूनाइटेड उर्वा के फ्रेंचाइजी ओनर श्रीमान रवि शनाय, इन्होंने 2000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया है बासित के लिए मैच को जिताने के लिए. निश्चित रूप से 2000 रुपए का नगद पुरस्कार बासित इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं मैच जिताने के लिए. श्रीमान रवि शनाय जो कि फ्रेंचाइजी मालिक हैं, द फ्रेंचाइजी ओनर ऑफ यूनाइटेड उर्वा, रवि शनाय डिक्लेयर्ड 2000 रुपीस कैश प्राइज for Basit for his winning knock. Fantastic winning knock, in fact. Undoubtedly, man of the match. Once again, one more award for Basit. Remained unbeaten 23 on the important stage of the match. At last, he got the victory. He brought the victory for his team and remained on unbeaten 23 runs. And because of that fantastic batting knock, Basit adjudged the man of the match of this match. और जो पिछला मैच खेला गया था फर्स्ट ईस्टर्न एवेंजर्स और न्यू स्टार चोकोबेटी के बीच में, उस मैच में करना मैन ऑफ द मैच घोषित किया जा चुके हैं. 26 रन उन्होंने बनाए थे. द प्रीवियस मैच which will be played between Eastern Avengers versus New Star Chocobeto and in the previous match, and that match man of the match award goes to Karna, who scored 26 in just 16 deliveries. I request both man of the match award Guru Bantwal. I request one of our chief guests, Mr. Guru Bantwal, to please distribute 2 man of the match award for Karna and Basit. So that's it for this game, and match number 5 completed. Match number 6 is now going to begin. Red Wings Rangers will take over Suragiri Strikers in the next match, and that match number 6 of the day, 3 and the final day of this prestigious cricket tournament, KPL Season 10 2026 is now coming up live and exclusively within just a short while. तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त आंखों देखा हाल सुनाने का, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. तो जहां तक अगले मैच का सवाल है, तो अगला मैच शुरू होगा यहां पर सूरगिरी स्ट्राइकर्स और रेड विंग्स रेंजर्स के बीच. और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे एक और काबिल दोस्त, वन मोर माय डियरेस्ट फ्रेंड मिस्टर हसीम के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ अंग्रेजी में जब यहां पर अगला मैच शुरू होगा. तो इस वक्त तो अब वक्त एक ब्रेक मैच, एक ब्रेक के बाद श्रीमान हसीम इनके साथ अंग्रेजी में हम आपके सामने उपस्थित होंगे. धन्यवाद. थैंक यू. Thanks, Mr. Gopi. Had a great game of cricket, chasing down a massive total, got chased down beautifully in the end. In for another exciting game of cricket coming away from this beautiful ground. We've got a big crowd in here. Generally, in this beautiful ground, we've got a lot of... It's in the central part of the city, so people can access it easily. And people are enjoying the superb spectacle of this ground, of the KPL 2026, one of the most prestigious and renowned tournaments in the history of Mangalore. And we're getting into the business end now. The business phase of the tournament, actually.
All set. First ball of the match. Going to be bowled by Atif to Santosh. Great matchup straight away. Santosh, we all know that is a gun batter, and not just that, is one of the best in business when it comes to batting in underarm cricket. How many times has he not delivered for his side to win the game for his side? Such a spectacular player he's been. But I think Santosh usually starts in a very quiet way, or actually that's the way he goes about his business, but generally gets back on track when he gets those 1s, 2s, 3s. He compiles runs in quick time. And once he gets to that rhythm, he is a completely different batter. Attacking batter, can take anybody out of the cleaners, and we saw that in the recently concluded quick run taken. Santosh was the man charging back for that run to the danger, and he made it in the end. He's got a smile, I think, on his face, because he was actually in all sorts of trouble. And also, Santosh, it's got to go back to his basics. Santosh just seems to be missing his trick, and that's the way he plays. Driven away beautifully on the up to the covers area for one. Atif bowled beautifully in the last game. And his bowling seems to be in good order, actually. Red Wings, Rangers, Kunjat Bale. Launched it, Micah all the way, does go all the way. First 6 of the innings coming from the bat of Tanzim. Tanzim is a big ball striker. He gets one in the middle, and that's going to travel all the way. Atif, I think, not the best of the deliveries. That gave leverage to someone like Tanzim. Tanzim is a big ball striker. Gets one in the middle. Dispatched it out of the ground for a 6. Slammed away, this time straight into the hands of the fielder. Tanzim's got to go back. Try to repeat that shot. This time the length is much fuller. Slammed it straight into the hands of the fielder. Tanzim's got to go back to the heart. I don't think he should have played that shot, really. Could have played it all along the carpet, or probably could have tried to change, probably could have targeted straight down the ground. Could have been a much better option. But Tanzim's got to go back to the hut. Hitting a 6 and straight away getting a wicket. End of over number 1, 9 for 1. Red Wings, Rangers, Kunjat Bale. Have a look at that delivery. That was not there for that shot, really. Didn't get underneath that to get it over that fielder. The idea was right to get it over the fielder, but couldn't get that from the mist of the blade. Therefore, it's going to be a wicket going down. 1 down for 9. Santosh is still there. He's a crafty problem solver. He can bat well, bowl well, fields. He can field well as well. As a utility cricketer, has been one of the top 5 cricketers in underarm cricket, I'd say. I can't really debate about it, but sometimes he bats like no one does, really. Santosh bailed out to go for the reverse. It's going to be in the form of bias. They get 1. 10 on the cards, 1.1 balls have been bowled out. Fayaz is going to start the proceedings. Fayaz trying to outthink and outfox the batter to a degree. 10 for 1. Rizwan going to take the strike for the first time after the departure of Tanzim. Rizwan's equally a capable ball striker. Gets one in his arc, is going to take him out of the park. That is a beauty. That is a ripper of a delivery. Fast and express. Clocking at about 140 kph per hour. That was real quick. Seriously quick from Rizwan. Good bowler generally. Slow off pace. Pace taken off just about safe. Rizwan lived dangerously. Played in the air for a while actually. The fielder had to backtrack it, but luckily for him, he had to clear the infield and has done that exceedingly well. I think he's got some more villa on that one. 11 for 1. Santos trying different type of shots.
is naturally a gifted player. Santosh plays down the ground, plays towards that square leg region. He's got that fantastic switch it. Switches the stance and plays towards that extra, deep extra. Plays it over. Well done. Really well done by Santosh. Backtracking, and that will run away to the boundary. Great sweep shot there. Reading the line of the ball, Santosh. Got a good piece of willer on that one. And got it over that fine leg fielder for a boundary. Good batting that. He's using the pace. You don't get to see this too often in underarm cricket, using the pace rather than forcing the pace. And Santosh, when it comes to playing those shots, is very, very good in that. And has proven that time and time again how good a player is. How many times has not done that for his side? Man of the match goes to Karna. Not the last match. Before that game, Karna is the man of the match. So please come down to receive your man of the match award. Just checking if that was a no ball or not. Talking a little bit about Santosh's innings construction. He constructs his, builds his innings beautifully. He's got that beautiful temperament. He's got that great temperament as an underarm cricketer. You don't get to see that too often, actually. Having that right sort of temperament, plays very well. Busy cricketer. Loves to nudge the ball, cut the ball, reverse sweep. He's got all the shots in his book. Santosh is developed actually into a fantastic cricketer over the last 1-2 years. Has been a stellar performer. Whichever teams he represents, he always comes up with his best. Santosh got 5 of 6 deliveries, 15 for 1.5 overs have been bowled out. 6-over contest is this. The batting team, it's a batsman's review for no ball check. I thought there might be the balls coming. I'm not sure about what happened there entirely, but I just got to go with the instincts of the batter there. That was a batter's review. The line belongs to the umpire. Some part of the foot must be inside there. Not sure about that. It's called a no ball. The review has worked. Yes, it's a no ball. It's a no ball. It's a good review taken. Overstepping the bowler. You can see in the replay, you'll get a very good idea about that, just in case if you're wondering why was it called a no ball. You can just get a very good clarity on that. That's where the modern underarm cricket has reached to a new height, especially in revolutionizing with its live technology. It's going to be a free hit. Santosh is going to be on the striker's end. Santosh gets a very good opportunity now to get his bat swinging through the line of the ball. He goes. Santosh goes down the ground. He doesn't get it from the meat of the blade. Good thing about Santosh is that it's not a big, bold striker. Trust me. I mean, you look at the commitment to the shot and the power transfer. It's generally very nominal power striking, but I think the amount of distance that he gets is absolutely staggering. That is a good delivery to end the over from Fayaz. Good comeback in the end, I think. So 2 overs done and dusted, 17 for 1. Santosh and Rizwan got to stay there for the sake of their team. Especially Santosh has got to be that glue. He generally works as a glue to the team. Bats around, gives that extra bit of confidence for the new batters to give that sort of license to go after. Is such a great competitor and a very good cricket brain as well, Santosh. Always thinks about the game in a new way. Always thinks about cricket in a different way. Always tries to put pressure back on the bowling side. Plays cricket fairly as well, Santosh. 17 for 1, new bowler. Santosh tries to go for that reverse. The bowler knowingly fired it deliberately towards that. It's okay to go for the wide, Gitesh.
Gitej, excellent delivery that is this time around. Santosh not going for it. It's almost like a cat and a mouse game here between the two. Tries to go for it once again, but Santosh doesn't look to be in great order actually. Generally a free-flowing batter, does play cricketing shots well all around the park. Generally starts with drives, up-pitch drives over extra. Does clear the infield very well, but it's got a different way to bat, I think, here. He's just deployed a different methodology of his batting. It's something that we would look back, I think, would try to get those wrongs right. 19 for 1, 2.2 overs have been bowled out so far. Gitej gets one in the middle, and that's going to travel the distance in his arc. No question about that. What a swing of the bat that is. Fantastic ball striking that is in his, have a look at that, in his arc, and gave everything to it. Phenomenal ball striking from the batter, Rizwan. What a striker. And that's what I said, Rizwan can bat well, can be a good striker of the ball. Down the leg side, Rizwan's been waiting for that delivery. As a batter who's a power striker, you get that sort of line of length, even in underarm or overarm cricket. It's just going to be taken out of the park. This time slightly wide from the bowler, fired it. Good bowling, that is good understanding. Just when you visit for that massive 6 over long gone, realize that that's not the type of bowling that you can bowl him. This time Santosh in the act, straight to the fielder. Santosh doesn't look to be in good shape, performer actually here. 27 for 1, 2.4 overs have been bowled out here. Goes for the big one, mighty strike. And that's clean as a whistle. This is what I talked about, Santosh. He switches the stance, gets one in the midst of the blade, and travels a mighty distance to that cover boundary. What a shot that is, really. Enormous amount of power in that shot, and not an easy shot to play. Generally, batters play towards that third man region, but this is some shot really by Santosh. Remember one of the shots that he hit at the KFC trophy, if I remember well, at Paradise Cricket Ground, one of those iconic shots that would go into the history books of underarm cricket as one of the very best shots played, one of the very best wickets played. And this is right at the top, I think. This is so good at playing those shots. To tell you more about that shot, to tell you more about the next 3 overs of the game, we've got with us Mr. Satish, who's going to give you a bit of an explanation about the game in a beautiful, explanatorily, metaphorical way. Over to you, Mr. Satish. So thank you so much, Hasim. And 33 for 1. The Red Wings Rangers, Kujat Bail, absolutely they're going with a big gun. And the previous over has been outstanding over. And now the wicket which has fallen. And the wicket of Rizwan back in the pavilion. Rizwan, after playing a small cameo, is back in the pavilion. But he's really got a good hand along with the Santosh 112 there. Managed to get some partnership and get some acceleration of run rate. And Rizwan Matrix once again is absolutely contributing in from the top order. And Santosh Bandwal, what a switch it that one. Absolutely one of the best switch it of the tournament. Ball went like a tracer bullet. The magnificently struck. And man is back in form again. He's absolutely man in form in the present season. But just missing that connection in this KUDLA Premier League appeal for something, but everything is missing here. Atif thought the ball is hit the stump, but might be the ball is a brush the stump, but by base which is not dislodged. The ball passed between the stump. I just wanted to see that, but seeing that disappointment eyes of Atif, looks like the ball might be the pass between the stump. It's all happening in cricket, but the ball is not hard in the nature. Ball can travel between the stumps. Possibilities there. Again, slower one is attempted. Appeal for something. Again, just an excitement rather than the confident.
Sumit, it's been a great over from the point of view of team Suragiri strikers. The team Red Wings Rangers Kunjatbhai victory here, certainly the chance for them to come into that second place in the points table, and that will going to give the opportunity even for Suragiri strikers. They also got opportunity. This is going to be a very important match. So one more lovely delivery. Sumit again. They are now umpire going for the third umpire. And now it's going to refer for the TV umpire to watch whether the Santosh Bantwal is safe or not. He need to be safe for the team Red Wings Rangers, but not for the opposition team. They wanted to see the batter will be a short of his crease, but wait and see what could be addition from the third umpire. This is going to be a very close one here for the third umpire. It's a 33 for 2, the wait and see. So wait and see what could addition of the third umpire. And the right time, the Santosh Bantwal drags his bat. As for the rules and regulation, need to be some part of the bat, need to be inside the line. And looks like when the wheels are off, he may be little part of his bat, maybe, but I don't know. It's all up to the third umpire to give the decision. The line which is up to the third umpire, the technicians, cameraman, everyone is doing their best because umpiring is all about the fair decision, and it's not about how much time you are going to take, but at the end of the day you have to see whether it's going to be fair enough to give the decision. Everyone's eyes onto that the commentary box about the third umpire decision. Santosh Bantwal and striker Harris is very much absolutely excited to see the whether. So not out is a call from the third umpire, and it just survived, and the slight bit of part of his bat is inside the line. This has been a great presence of mind there from Atif. After he picked the ball, he quickly realized that Santosh Bantwal is out of the crease. He returned the ball very quickly. Even bowler has also done a great job, quick work, but not that much of quick enough to get the result. Maybe that was a direct hit. Now, if it is a direct hit, I think it's all over for Santosh Bantwal. Very, very difficult for him to survive. After the bowler gathers the throw, then he make that run out. Otherwise, I think the batsman might be a it's going to be a very close call. It's 33 on the board. Right arm over the kitty balls. This one sings it beautifully and down to mid wicket, but not more than a couple of runs here. One of the favorite of Harris. He loves to play the shot across the line.
Slog sweep shot, one of his favorite. Well fielded by the fielder in the mid wicket, but throw which is not really up to the mark. 35 on the board. Here comes Smith balls. Oh, this time appeal for leg before wicket. One more over completed up. Completion of over number 4. It's 35 for 2. You are watching KUDLA Premier League 2026 season 10. It's 35 for loss of 2 wicket after completion of over number 4. Still it's a good run on the board. Just under 9 runs per over. The run rate progressing for the team Red Wings Rangers Kunjat. The battle is on here from these two teams to get into that second place of the prestigious KUDLA Premier League 2026 season 10. It's been most exciting. Now each and every match is going to be very crucial here or not. The playoff round is always a dream for all 9 teams which is participating, but one of two teams which is already out of the tournament. Now is only competition within the 7 teams to get into this top 4 in the points table. The first delivery of the over number 5. Fayaz bowled a very good one just outside the line of off stump, and Santosh Bantwal just wanted to get that one onto the third man region. Just wanted to place the improvising reverse scoop, but he missed it completely. Again, helicopter shot. What a shot there from Santosh Bantwal. The one more very risky stroke there from Santosh Bantwal. The sound we can see here, absolutely sweet. 37 on the board for the loss of 2 wickets. Down the leg side, going to be punishable. Not from the batter, but from the umpire, Iqbal. 38 for loss of 2 wickets in the over number 5 in progress. Again, lovely reverse sweep in the gap. Chase for the field. Now show the man behind the ball before the throw will going to come into that hands of Atif. Ample time for Santosh Bantwal to complete that couple of runs. The Santosh Bantwal, this is I think in his highest score in the particular KUDLA Premier League from the bat. 17 from 14. Oh, what a shot! 2 men really aware of that stroke. One is the bowler and another one is the umpire. Powerfully struck. I have to see that in the replay, that reaction from the bowler and the umpire. Just have a look at that one. He just get away from that line, and even the umpire. Very lucky that this is not a season ball cricket. Otherwise, umpire need to bring wild helmet. Again, try to get that one into the third man region. Harris missed it completely. Wicketkeeper missed it, so that by call by umpire. With that single scored moves on to 42 for the loss of 2 wickets. Santosh wanted to go for the sweep shot. Off-hearted shout for the appeal. Hitting him outside the line of off stump. The impact of the line of the ball. The 5 hours finish of the over. It's 43 for 2. Red Wings Rangers Kunjat are absolutely cruising towards a good total. Last over remaining, 6 deliveries remaining in the innings, and at the 10 in this over, but take them into that psychological advantage once it get past that 50. Of course, today even the 50 is also chased down. The different day for the bat and ball, the final day of this cricket tournament. Because this is what the kind of competition of the KUDLA Premier League. Each and every team wanted to be in the playoff round. And this is what excitement we can see in this particular cricket round today. Is a lovely good number of spectators enjoys this final day. And a title decider day of this cricket tournament. Who will going to become the champion? Last year winner, already winning all matches, came into the qualifier playoff round with an unbeaten performance. And going for the reverse sweep, missed it completely.
Abhilash, the bowler, will not going to forget that last match when it's a 3 needed from the last delivery of the match. This time Santosh Bandwal hoisting it over into the deep wicket for a huge one. It's a biggie. It's always Gopi's finishing touch when it's going to be a big 6. It's a biggie. And absolutely it's a biggie. The ball is gone up many a miles out of the park. It's got a distance, a huge distance, one of the biggest stroke of the tournament from Santosh Bandwal. Once again going for the big one. This time chance for the fielder to take that one, and he takes it quite comfortably in the end. Lovely running catch from the fielder in the deep mid wicket. A young man is just grabbing that opportunity to prove himself in the mid wicket region. Lovely catch has been taken. The jersey number 3 has been absolutely perfect in the negation as far as judgment is concerned. But one of the best innings now in the KPL for Santosh which is concerned. He came into the form in the right time in the last league stage of the match. That will going to help them to the playoff round. It's a good news for the team. Red Wings Rangers Kunjat Bail, the Santosh Bandwal, they got runs from his bat. It's 49 for 3. Wasim, the fielder in the deep mid wicket, takes the catch. The new batter came into bat. Sabit. Again, he got a bat onto that. Chance of run out. Direct, it might be needed to get the result. The one more single. 50 comes up here for the team. 50 comes up for the Red Wings. Rangers Kunjat Bail. This is what they wanted to do. This is what they wanted to get. Get into that psychological figure. That 50 in 6 overs is always a good one to depend. Swings and missed. And a chance of run out in the non-strikers end. Lovely delivery there from Abhilash. Know exactly how to ball that outside the line of off time to survive. Here comes the next delivery. Down the track he goes. Wicketkeeper missed it. Wide call by umpire. 1+1 added to total. Then maybe Abhilash deliberately bowled that line. Seeing that he's down the track, he just wanted to make the stump out. But Atif missed it completely from his hand. Very interesting to see that. The 2 wicket keepers are there. Taufik is behind the stump as a backstop fielder. Atif is also wicket keeper. It's 52 for 4. Here comes next ball down the leg side. It's going to be a wide. One more extra. 54 correction. The runs which is absolutely coming in this last over. .54 for the loss of 4 wicket. Exceeds the time limits. The fielding team may have to bring one fielder inside the ring. Swings and mitts, and that's it. Wicket as well run out. And team Red Wings Rangers Kunjat Bail will going to finish with the 54 runs, good runs on the board. 55 is the target. The 55 is a target for the team Suragiri Strikers, and wait and see how well Suragiri Strikers will go and get this total. But it's a good total, and I think the Suragiri Strikers batters have to bat well if they wanted to win this match. And wait and see how could be the reply
from the batters of Suragiri strikers. This is going to be one important match for both the teams to be in the points table, especially desperately wanted to be in the second place so that they can play the qualifier number 1 of the KUDLA Premier League Season 10, which is proudly presented by Friends URWA registered under the great leadership of Tilak Guru. The time to change in voice. It's the time to bring once again Majid Mallor in action in our commentary box. It's over to Majid Mallor in state language, fit language Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರಿಗೆ. ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 55 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸತೀಶ್ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಟ್ವಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೌಶಾದ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪತನಗೊಳ್ತದೆ. 55ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 55 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ತೌಫಿಕ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡಲು ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆತಿಫ್ ಅಂಕನಬನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಕೆಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿ 10ರ ಧೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತಬೆಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುರಗಿರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸುರಗಿರಿ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸತೀಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಆತಿಫ್ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರೆ ನೇರ ಗುರಿಬಿದ್ದ 5 ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1-1 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸತೀಶ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತೌಫೀಕ್ NM ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತಂಜೀಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇರುವ ಜೋಡು ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 55ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಚುರುಕಿದ್ದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3 ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ ಕುಣಿತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗಿರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಭಾಗದ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ತೌಫೀಕ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಸತೀಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ತೌಫೀಕ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ನೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು 3 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತೌಫೀಕ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಆಟಗಾರರು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ತೌಫೀಕ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಫಯಾಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ STC ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಶಾಕೀರ್ ಜಾಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೀಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಫಯಾಜ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಸತೀಶ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3-3ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 52 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಿತಿಯವರನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಫಲ್ ಚೇತನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆತಿಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 52 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆತಿಫ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ. ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತಿಫ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್. ತನ್ನ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಸತೀಶ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ ದಾಳಿಗಾರ ಚೇತನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 55 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ
ಜುನೈದ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೇತನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಎಸೆದಂತ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆತಿಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆಟಗಾರ ಜುನೈದ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರ ಕಣ್ಣೊಂದೂರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಜುನೈದ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ಹೊಡೆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಅರದೆ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಜುನೈದ್ ಅವರ ಅರ್ಪಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಿಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವುದಾದರೆ ಜುನೈದ್ 6ರಲ್ಲಿ ತಂಡ 9ರಲ್ಲಿದೆ. 9ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರು ವಾಪಸ್ಸಾತಿಯನ್ನು ಲಯಬದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಜುನೈದ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ಚೇತನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು 9ಕ್ಕೆ 3 ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಚೇತನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಓವರ್ನ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜುನೈದ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಂದಿರ ಹೊರಗಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಅಕ್ರಮರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುವಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸುವಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ 3 ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೇತನ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬಳಿಕ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಚೇತನ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಫಯಾಜ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಾರಣ 55ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನೆಲೆಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಹೊರತು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಫಯಾಜ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟರ್ STC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವ ತಂಡಗಳ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾನಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. STC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾನಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುವಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಜುನೈದ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಅಂತಿಮ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಜುನೈದ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಎಸೆಬೇಕು. ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಊರಿ ಚೆಂಡುವಿನ ದಾಳಿ ಇದು. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾಯಕ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಬಳಿಕದ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತ ಚೇತನ್ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾಯಕ ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ವಿನೋದ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14-14ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ವಿನೋದ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಫಯಾಜ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಜುನೈದ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಚೆಂಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ತಡೆ ಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿನೋದ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 55 ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಫಯಾಜ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್. 3ನೇ ಚೆಂಡು ನೆಲೆ ಮಡದ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಕಡೆಗೆ ಜುನೈದ್ ಆರ್ಭಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಡಿಗ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಜುನೈದ್ ಅಡ್ಡೂರು ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 2 ಕೂಡ ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರರೇ. ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜುನೈದ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಜುನೈದ್ ಆಡುವುದು ರೈಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟದ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ತೋರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ತಂಡವನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಜುನೈದ್ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬಂದಿದೆ 27. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗೆಲಿಗೆಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿನೋದ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2-2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಫುಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗೆಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28 ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಎಸೆದಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಫಯಾಜ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ವಿನೋದ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. 28ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೆ 3 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತ ಇರುವ ಜೋಡಿ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿನಕುಟಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. धन्यवाद माजिद भाई. और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का 28 रन बन चुके हैं. 28 on the board. 27 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. So 27 to get from 16 deliveries और 18 deliveries in fact. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का रेड विंग्स रेंजर्स की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सतीश. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का तो फयाज और जुनैद क्रीज पर मौजूद. सामना करते हुए इस वक्त जुनैद, जबकि नॉन स्ट्राइक रन पर फयाज. और सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स को बनाने हैं 27 रन बचे हुए 18 गेंदों पर. ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद. जुनैद ने गेंद को ड्राइव कर दिया. लॉन्ग ऑन पर 1 रन इस वक्त मिल चुका है. और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों पर. 29 द स्कोर.
55 the target. That means 26 runs more. Now they have to score for victory. Match number 6 of the day 3 of this prestigious cricket tournament. KPL KUDLA Premier League season 10 2026 now 26 is now progressing here under the great leadership of Mr. Tilak Guru. और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का सतीश गेंदबाजी करते हुए फयाज के लिए ये गेंद उछाला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर मौजूद जस्ट अ सिंगल ही गॉट प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और जहां तक का सवाल है रनों का तो रन इस वक्त मिलेंगे एक 30 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और सतीश फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जुनैद के लिए अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार 7 से 8 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर और जहां तक सवाल है इस वक्त फयाज काफी आगे निकल आए थे लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए रिव्यू लिया गया है इस वक्त वाइड के लिए तो देखते हैं तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं I request the captain of United URWA please report to the stage immediately for the signature procedure. In fact, for the toss. In fact, United URWA ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. It's a wide. Now it's a wide. Declaration came from the third umpire और अंपायर का रिव्यू था जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट सतीश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए जुनैद सपना करने के लिए तैयार और ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है जुनैद ने और गेंद इस वक्त लपक ली गई है लंगॉन फील्डर द्वारा दमदार स्ट्रोक था लेकिन इतना दमदार नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके इतना दमदार नहीं कि गेंद लंगॉन फील्डर को बीट कर सके और गेंद इस वक्त देखिए किस तरीके से लपका गया था एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली टेकन बाय द फील्डर एट लंगॉन जस्ट इनसाइड द फील्ड जस्ट जंपिंग टुवर्ड्स टू हिज टॉप साइड टू ग्रैब द बॉल टॉप साइड टू ग्रैब द बॉल और इस वक्त जुनैद का विकेट यहां पर गिर चुका 3 छक्के जुनैद जड़ चुके हैं और अपनी पारी को अंत करने के बाद वो पेविलियन वापस लौटते हुए बेहतरीन पारी समाप्त हो चुकी है जुनैद के 3 छक्के उन्होंने झड़े और स्कोर इस वक्त 20 रन बनाने के बाद जुनैद पेविलियन वापस लौटते हैं बेहतरीन पारी खेलने के बाद अब जहां तक सवाल है रनों का तो 24 रन और चाहिए 14 रन मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री 24 in fact 24 runs more now they have to score for victory ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ तो इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार नए बल्लेबाज गितेश इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार सतीश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 24 रन और चाहिए विजय के लिए यह गेंद इस वक्त गितेश के लिए सक्विकर गेंद ऑप्शन से बाहर की ओर निकलती हुई बेहतरीन गेंदबाजी एक और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुका है अब इक्वेशन स्टैंड्स 13 balls left and 24 runs now they have to score for victory चौके और छक्कों की सख्त जरूरत होगी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को इस वक्त और सतीश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी क्विकर गेंद थी विकेट कीपर चुके और फयाज इस वक्त दौड़ पड़े नॉन स्ट्राइक रन पर यह विकेट गिर चुका है मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत यह विकेट यहां पर गिर चुका रिव्यू भी लिया गया है इस वक्त वाइड के लिए और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं तो फयाज काफी आगे निकल आया था गितेश हालांकि काफी देरी से उन्होंने दौड़ लगाई और आसान सा रन आउट ऑन स्ट्राइक रेट पर होता हुआ so it's a wide so 1 run added now 23 to get from remaining 13 deliveries 13 गेंदें बाकी 23 रन और चाहिए विजय के लिए और विकेट यहां पर गितेश का गिर चुका है एक और विकेट इस वक्त खो चुका है सूरगिरी स्ट्राइकर्स it's 32 for 5 New batsman is now comes out to the middle.
साज इस वक्त नॉन स्ट्राइक लाइन पर मौजूद और सामना करने के लिए तैयार फयाज 23 टू गेट फ्रॉम 13 बॉल्स और सतीश अब तक उनका बेहतरीन ओवर समाप्त हो चुका है अपने ओवर के अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा टॉप एज पर गेंद टकराए और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का तो रन्स मिलेंगे एक शॉट थर्ड मैन पर फील्डर थोड़े से स्क्वायर तैनात और जब तक गेंद को वो फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का स्टिल वन बॉल लेफ्ट इन फैक्ट नाउ 22 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 13 डिलीवरीज और गेंदबाज इस वक्त सतीश अपनी ओर के अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज शाज इस वक्त सामना करते हुए और इस बीच 6-7 बार गेंद को जमीन पर टिप्पा खिलाने के बाद अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर गेंद पहुंचती हुई क्लीन पिकअप दूसरे रन के लिए दौड़ पर नहीं मिलेगा फयाज क्रीज पर वापस लौट चुके हैं तो जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदला था दोनों बल्लेबाजों ने और अपने अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित एक रन का इजाफा 1 run at 34 on the board 5 wickets lost and 4 overs had been bowled that means 2 overs remaining 21 to get 12 balls 21 runs at the equation stands for Suragiri strikers in this situation now match number 6 of the day 3 of this prestigious cricket tournament KPL KUDLA Premier League season 10 2026 is now progressing here और मुकाबला इस वक्त जारी है रेड विंग्स रेंजर्स और सूरागिरी स्ट्राइकर्स के बीच इस मैच के बाद 2 लीग मैचेस और 3 प्लेऑफ मैचेस क्वालिफायर एक एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 उसके बाद ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल इस श्रृंखला का आज रात को खेला जाएगा इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए एरिस ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार अब दर्शकों से मैदान लगभग भर चुका है निश्चित रूप से आज बुधवार वर्किंग डे होने के बावजूद दर्शकों से मैदान इस वक्त लगभग भर चुका है और यह बात यह दर्शाता है कि अंडरआर्म क्रिकेट मंगलूर परिसर में स्पेशली खासकर इस उर्वा क्रिकेट मैदान लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट में कितनी जनप्रियता रखता है और इस बीच एरिस ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार बल्लेबाज सामना करते हुए शाज और 12 गेंदों में चाहिए 21 रन पहली गेंद एरिस दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार जस्ट गॉन फॉर अ माइटी ही नॉट सक्सीडेड और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला अब 21 रन चाहिए 11 गेंदें बाकी 21 टू गेट फ्रॉम 11 डिलीवरीज एब्सोल्युटली अ टाइडी कॉन्टेस्ट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर और इस एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट शाज के लिए ये गेंद इस बार शाज ने उछालना चाहा बेहतरीन गेंदबाजी फैंटास्टिक वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स और इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त निर्धार सौंपा गया है और ऐसा कहना पड़ेगा जब विकेट कीपर ने विकेट उखाड़े थे तब बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर था या नहीं तो इस वक्त 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज एरिस फेंक चुके हैं और इस वक्त 10 गेंदों में चाहिए 21 रन और विजय के लिए Not out is the call and the batsman survived. Now the equation stands 21 to get from 10 balls. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಅಶ್ವಿನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸೊ एरिस तीसरी बार शास के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए 21 टू गेट फ्रॉम 10 डिलीवरीज और इस बीच एरिस अगली गेंद लेकर तैयार शास के लिए यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को उछालना चाहा गेंद लगभग पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर एक रन का इजाफा लेग पाई का इशारा और लेग पाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स निश्चित रूप से यहाँ पर कम से कम एक या 2 चौके और छक्कों की एक या 2 चौके या छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत इस मैच में कमबैक करने के लिए सूरागिरी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को और फयाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार जबकि गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज एरिस दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा गेंद इस वक्त पैर पर टकरा चुकी है रन के लिए दौड़ पड़े इस बार ओवर थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं काफी वाइड थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर पर और बल्लेबाज ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे 37 ऑन द बोर्ड
37 for the loss of 5 wicket. 18 to get now from remaining 8 deliveries. 8 गेंदे 18 रन चाहिए और इस बीच आरिस गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फयाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है फयाज ने। जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड। द मैच इज नाउ स्टिल अलाइव। व्हाट अ स्ट्राइक। दिस इज एन एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल स्ट्राइक। तो निश्चित रूप से यहां पर फयाज का यह छक्का कुछ हद तक उनके टीम को इस मैच में वापस ला चुका है। एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट स्ट्राइक केम फ्रॉम द बैट ऑफ फयाज। नाउ द इक्वेशन स्टैंड्स 12 टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स। एक और छक्का निश्चित रूप से यहां पर सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स को इस मैच में पूरी तरह वापस ला सकता है। 12 रन चाहिए, 7 गेंदे बाकी और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए आरिस छक्का प्रदान करने के बाद देखना है कि अगली गेंद पर किस तरीके की गेंदबाजी वो अपनाते हैं। ये गेंद इस बार फयाज का स्ट्रोक गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद पहुंची स्ट्रेट हिट एरिया पर। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। फयाज की स्ट्राइक एंड नाउ ओवर नंबर 5 हैज बीन केम स्टूडेंट 44 for 5। दैट मींस 11 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। 11 रन चाहिए, 6 गेंदे बाकी और निश्चित रूप से यहां पर फयाज की उपस्थिति इस अंतिम ओवर में सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स के लिए बेहद जरूरी है। और खुशी की बात यह है सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स के लिए फयाज इस वक्त स्ट्राइक का अपने पास रख चुके हैं इस अंतिम ओवर में। 6 balls 11 रन रिक्वायर्ड। काफी लंबी बातचीत चलती हुई रेड विंग्स रेंजर्स कुंजत बैल की पारी में खिलाड़ियों के बीच कि मैच निर्धारित ओवर किसको दिया जाए और देखते हैं यहां पर मैच निर्धारित ओवर किसको सौंपा जाता है। शाम का वक्त 4:40 इस वक्त बच चुके हैं और जहां तक सवाल है इस वक्त मैच का तो मैच नंबर 6 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट KPL कुडला प्रीमियर लीग सीजन 10 2026 के बीच यहां पर खेला जाता हुआ। और इस बीच संतोष बंटवाल इस वक्त गेंदबाजी उनको सौंपी गई है। लेग स्पिन आमतौर पर लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं और इस बीच अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट। तो वन फील्डर एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। 6 गेंदे 11 रन चाहिए और संतोष बंटवाल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे फयाज के लिए। संतोष बंटवाल इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए काफ़ी दूर दूर तक पहला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और देखते हैं यहाँ पर फयाज जो पिछले ओवर में एक छक्का उन्होंने लगाया था उसी सफलता के सिलसिले को इस ओवर में वो दोहरा पाते हैं या नहीं। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। गली एक्स्ट्रा कवर शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त मौजूद जबकि संतोष बंटवाल इस वक्त अपनी ओवर की पहली गेंद का इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट फील्डिंग में जमावट करने के बाद संतोष बंटवाल ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद फयाज के लिए लेग स्टंप पर आती हुई विकेट कीपर चुके मिसअंडरस्टैंडिंग इस बार निशाना चूका लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर एक डॉट गेंद 1 डॉट बॉल बोल्ड बाय संतोष बंटवाल। नाउ इक्वेशन स्टैंड्स 11 टू गेट फ्रॉम 5 बॉल्स और फयाज इस वक्त दूसरे छोड़ के बल्लेबाज शाह से इस वक्त कुछ बातचीत करने के बाद वापस अपने स्थान पर लौटते हुए और संतोष बंटवाल हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर डॉट गेंद फेंकने के बाद और इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज फयाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 11 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी। अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह नॉट करेक्ट दैट वन प्रॉपरली बट ही गॉट अ सिंगल। 1 रन मिला। 2 बेहतर गेंदें संतोष बंटवाल इस ओवर में फेंक चुके हैं। इस बार थोड़ी सी क्विकर गेंद थी पिछले गेंद के मुकाबले और ऐसा कहना पड़ेगा संतोष बंटवाल ने पहले ही भांप लिया था कि फयाज स्टेप आउट कर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर की और तेज गेंद उन्होंने फेंक दी और एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर। 1 रन मिला। शाज स्वयं अपने आप से नाखुश, अपने बल्ले पर हाथ मारने के बाद उन्होंने अपने बल्ले पर हाथ को मारने के बाद उन्होंने अपने नाखुशी का इजहार किया। अब इक्वेशन 3 balls 9 runs। ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के इस वक्त सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स को इस मैच में ला सकते हैं। फिलहाल 3 बेहतर गेंदें संतोष बंटवाल इस वक्त फेंक चुके हैं और फयाज सामना करते हुए इस वक्त संतोष की गेंदों का यह गेंद टॉप है। जिस वक्त गेंद फील्डर गेंद के नीचे आते हुए जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए इस वक्त और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं।
ऐसा करना पड़ेगा. Not quite hold off that shot after being comes down the track at the last moment. Top edge पर गेंद टकराई, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान नो मैंस लैंड पर टिप्पा खाते हुए 2 गेंदे 7 रन चाहिए. 7 to get 6 for tie, 7 for win, 2 balls left. और संतोष बंटवाल 4 बेहतर गेंदे इस ओवर में फेंक चुके हैं. 2 गेंदे बाकी, 7 रन चाहिए. इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलते हुए फील्डर्स जो कि इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और 5 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. संतोष 7 to get from last 2 deliveries. Here we go. इस बार full toss. Got his outside edge. Down to a gully. Just a single he got. Fayaz off the strike. He just wanted to keep the strike. And this time, I think it's the question mark stand. He departs. In fact, जब तक फयाज जहाँ तक सवाल है स्ट्राइक अपने पास रखना चाहता है, स्ट्राइकर इनकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन जब विकेट उखाड़े गए नॉन स्ट्राइकर पर फयाज और शाज क्रॉस नहीं कर पाए और आखिरकार फयाज आउट होकर पेविलियन वापस. अब अंतिम गेंद बाकी 6 रन चाहिए. 6 नीडेड फ्रॉम द लास्ट डिलीवरी. So new batsman is now comes out to the middle. शाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. संतोष बंटवाल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ऐसा कहना पड़ेगा. सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स का भविष्य बल्लेबाज साज के हाथों में और रेड विंग्स रेंजर्स का भविष्य गेंदबाज संतोष के हाथों में. 6 नीडेड फ्रॉम द लास्ट बॉल. संतोष तैयार, शाज भी तैयार और 6 रन फ्रॉम लास्ट बॉल. हियर वी गो. इस बार गेंद को इस वक्त उछालने में चूके और इसी के साथ रेड विंग्स रेंजर्स registered a thrilling victory by 5 runs defeating Suragiri strikers, and with that victory they back the complete points. और इस विजय के साथ ऐसा कहना पड़ेगा रेड विंग्स रेंजर्स कुंजत बैल अपने प्लेऑफ के पहुंचने के साध्यताओं को इस वक्त उज्जवल कर चुका है. तो मैच नंबर 6 यहां पर समाप्त हो चुका है और मैन ऑफ द मैच इस मैच का इस वक्त प्रकट होगा. Man of the match of this match award goes to the man who batted brilliantly, scored 24 runs, and also he bowled a fantastic final over of the match. And because of this all-rounding performance, Santosh Bantwal of Red Wings Rangers adjudged man of the match. Santosh Bantwal adjudged man of the match for his fantastic knock of 24 runs and a fantastic final over bowled by him. And now the match number 7 has been completed. Match number 8 is now going to start. United URWA will take over Planet Air STC Jaipur in the match number 7. At that match number 7 is now coming up live exclusively right in front of you. तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त अंग्रेजी में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ हाशिम के साथ जब यहाँ पर अगला मैच शुरू होगा. तो इस वक्त ब्रेक है, इस वक्त तो वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे हाशिम के साथ अंग्रेजी में. धन्यवाद. थैंक यू.
Another big game coming up. Thanks, Mr. Gopi. Big game between the two great teams. United URWA taking on I also heartily welcome Mr. George Vincent Pereira for this event on behalf of the KUDLA Premier League 2026. I'd invite you to take a respectful seat on the stage. Thank you so much for coming and gracing the event, sir. Right, big game. First ball. Tanweer to bowl to Sharka. Sharka's had a very good time with the bat, I think, in the last game. Batted beautifully. Got it away for one. Planet SDC Jaipur won that last game, if you remember well, beating Whitehorse. Nawaz. Superb balls for both of these players. Are magnificent ball strikers. Tremendous ball strikers are they. Tanweer. In the air, is it going to be taken? Yes, it's going to be taken. Nawaz placed nonchalantly. He's got that old bad habit of throwing his wicket away at the early stage of the innings. And there's the example of it. Didn't get it from the meat of the blade. I understand that. You got to take a bit of time, actually. It's brand new batter. You might be in dream touch. Doesn't matter. Got to go out there. Take a bit of time. Take a small shot block of time. And then you start playing those shots, actually. And the first wicket going down for Planet Air SDC Jaipur. And the first wicket for Tanweer. Tanweer bowls with a lot of pace and has got varieties, and that's one of the reasons why I think he's been able to get those wickets at well. 1 for 1. Shark is still there at the other end. I think he can bat. He's batted brilliantly in the last game, and he's got to be over there. He's got to take a bit of time, actually. Got to try and read the situation of the game and then become super adaptable to the situation. And that is so vital in a game. Big part of the game, which in underarm cricket, I think one thing that goes missing is not trying to adapt to the conditions. Straight into mid-off. Directed to be in business. Directed to be gone, I think, by a good yard or so. But great bit of feeling by Azhar there at mid-off. He's a good athletic fielder. Gets to the ball very quickly. I've seen a number of occasions Azhar Malu picking up some outstanding run-outs. Could have been one of them there. It could have dived in there, I think, to get an extra bit of pace onto that. 2 for 1. Planet Air SDC Jaipur. Sharky on strike. Sharky usually constructs his innings beautifully. He did that beautifully in the last game. Doesn't throw his wicket away, but I've got to see his mentality now. Carved away. Great catching. Incredible catching. Sharon shot mid-wicket. I think mid-wicket position. Takes it beautifully inside the 30-yard circle. Magnificent catching. He had to time his jump beautifully. Wasn't a bad shot by any stretch. The only danger was that he played it in the air. It's been taken beautifully. Have a look at that in the replay. Had to time his jump beautifully. And that's one of the secrets about fielding, taking those catches, especially overhead catches, is all about timing your jump. And he's done that exceedingly well. Sharan there. Another wicket going down for Planet SDC Jaipur. And they got to now reassess or reevaluate the game. Got to go about the business in a very, very proper manner. I think if they don't do that, they'll be
in immense trouble. 2 for 2, 4 balls bowled out, 2 wickets already done and are back in the hut. Got it away, fine, that might run away. The fielder's backtracking that. 2's on the cards. Get 2 runs easily for Nishu. Gets off the mark with those 2 runs. Especially when you're 2 down or 1 down. I think your 2 opening batters are back in the hut. You don't get that sort of leverage to play those big shots. And that's where you put yourself on the back foot generically. Beautifully played towards that backward point position, almost switching that stance. But that's the end of the over. Five for 2. Planet Edge, Stacey Jepu find themselves at Ajit and Nishu batting in the middle, and they got to take the situation into account and got to bat accordingly. And that's the need of the arc at the moment. Can't really play rubbish cricket, can't really play daft cricket and bring their own downfall. They got to think about how they can match up the style and identity they got to try and display here, which is a big part of the game. Especially when you're playing a 6-over game. It's not about throwing your wickets away. It's about becoming super adaptable to the conditions. You've got to read the conditions very well, and then you've got to play your best game, really, in terms of showing that temperament. That's the most important thing about batting, is your temperament to stay in there, to try and occupy the crease and play to the merit of the ball. And that's the crucial part of the game. 1 over bowled out, 5 for 2. New over, Sharon took that blinder and now into his bowling. In the air, is it going to be taken? Surely out. Got to wait for the umpire signal though. It's going to be referred to the TV umpire. Looked like for the naked eye, got a bit of bat on that, but not to be. The batter says no, he hasn't hit it. It came off the arm guard. Although there is no arm guard, but generally speaking, in cricketing terms, generally off the arm guard, I think. And this would be a big blow if they lose another one here. Sharon straight away creating something out of nothing. Out signaled, and he's got to go back to the hut. And that's what I said. I mean, it looked like came of the toe end of the bat. It looked that way, but the batsman declined it straight away. Probably, you know what, sometimes batters are not the best judges. They don't really get a mental clarity, and that's what Steve Smith talked about. Brain-phasing situations many a times in cricket. And this could be one of those, actually, the batter. Sometimes batters like Stuart Broad generally lie about whether or not they edged it, because they don't want to walk out despite knowing that they're out. It's the last match of the league stage. Prakash Kumpala versus Eastern Avengers. That's the last league game. Something that I gotta know to think this. We're getting now in a position where we're gonna get into the business end of the tournament, where we're gonna find out a lot about who's gonna go to that top 4. Our top 4 is gonna make a big difference, because I think one team that's gonna qualify for the top 4, surely the KGF. They played some sensational cricket. Not just that, they didn't get anything wrong. Not getting their foot wrong in the whole of the tournament. It's been outstanding display of cricket, outstanding display of batting, bowling, fielding. And they're going to be the biggest force. And the big question in the air, has he got enough on that? No, just got it from the edge of the bat and ballooned in the air, and it's been taken beautifully at by the man at shot mid-wicket, takes it beautifully, and that's the end of him. Another wicket going down for SDC Jaipur. They're like just falling apart. The plot's just missing out.
6 for 4. If you look at the scorecard, that is just terrible, terrible stuff really for Planet Edge STC Jaipur. One thing that's just any batting team, I think batting first, they've got to think about building that partnership, which I think is an integral part of the game, which kind of goes missing in underarm cricket, especially when you play a 6-over game. You got to nip and tuck a little bit to style. Got to nip and tuck a little bit to match the style and identity of the 6-over match, because you're not usually used to the 6-over match. You're more used to 2 overs, 3 overs match, or I think where you can just come out and just blast, apply those shots. And this is the game where you got to show a little bit of patience. Excellent delivery. That is bang on target. The batsman tried to play that sweep shot, but missing the line of the ball completely. Misreading the line of the ball, really poor judgment of the length. The score still says that 6 for 4, 1.4 overs have been bowled out. And at the moment, United URWA are right on top of the game. And they've got absolute control over the game as well, because they've picked up 4 important wickets, which means they are very much on top of the game here. Try to sweep it once again, missing it, missed collection. Six for 4, 1.4 overs have been bowled out. I think it can be 7 for 4. I think 1.5 overs bowled out. Hayaz on strike. Looked very close, but negated by the umpire. Not sure about that. It looked plumb in front, really, but might have gotten a bit of bat on that one. No, not sure anyways. End of over number 2, 8 for 4. Planet STC Jaipur find themselves at. United URWA actually bowled some magnificent deliveries to try and pick up those early wickets. Early wickets are always going to give you an extra bit of an advantage as a bowling side, and that's what their real strategy is, to try and bring about their best, and they did that. And their ultimate objective is to pick those wickets and put the brakes on the scoring, and that's exactly what they've done so far. 8 for 4, and they look at the scorecard now. STC Jaipur, they be gutted, absolutely gutted with their performance, with their outlook, with the way they've gone about and given themselves into account. It was an absolute poor show. Not matching the standards, really. Generally sets high standards with these kind of batters, actually. Play good cricket, put pressure back on the bowling side. But I think in this game they've been completely outplayed so far. Out-thought and out-fixed. New bowler. Not sure if he got a bit of bat on that. Could have been a leading edge there, but very hard to figure out from this angle, actually. The score still stays at 8 for 4. 2.1 overs have been bowled out so far. Got to go along nice and easy. Excellent delivery, that is, but wrong shot selection. Not reading the line of the ball, just premeditating the shot. The batter was onto it in a flash. Hayaz, aggressive batter, but got to be calculative as well. Got to really take the situation into account. Not just about that, but you got to read the line and length of the ball. And that is also super vital as a batter. You got to try and stick in there, try and read. Nicely dabbed away for 1. Hayaz gets to the non-strikers, and he wants to actually get to the non-strikers and probably, you know what, expose the strike back to his partner Sandeep. Sanil got 1 by facing 2 deliveries. But it's more about now try to, you know what, going along. I think it's more about trying to water down the impact that was unfolded in the first 1 over where he lost 4 wickets. Now they got to really try and
pull things back a little bit. Driven away beautifully. There is that fielder. Does the tidy at work. 10 on the cards. 2.4 overs have been bowled out so far. Marching along in a very slow way. They got to pull that trigger at some point in the game. Got to do that, really. Goes for the big one. Surely that's going to go all the way. No. It's going to be pulled back. Not a great deal of power on that shot if you look at the way he executed it. Almost just timing that one over that fielder. Couldn't come from the middle of the blade. Therefore going to be 2 runs. 12 for 4. 2.5 overs have been bowled so far. That is a beauty. Great bit of glove work. Excellent glove work from the wicketkeeper. But has it been referred to the TV umpire? Not sure about that. But I don't think he actually raised his or lifted his foot. His foot looked very grounded and almost in a station position. That's very, very difficult for the umpire. Numerous decisions that tested the skills of the TV umpire, and this one's equally difficult. But the benefit of the doubt goes to the batter for sure. The benefit of the doubt goes to the batter. It's not easily convincing enough that the bat's in, that the foot's on the line, but looks like, not sure about that. I'm not going to predict anything. I'm going to have to rely on the TV umpire to try and work out the best angle to try and find out more about it. Not out is the confirmation, and it's the right decision in my view. As long as you don't have convincing evidence, you cannot rule it otherwise. The on-field decision was softly a not out, I think, because it was almost in a station position. Anyways, 12 for 4 after 3. To tell you more about it, Mr. Sathish is going to take over, changing the voice. Over to you, Mr. Sathish. Thank you so much, Asim and Planet Taz. This is Jaipur. Absolutely, they got a very slow start. Not only slow start, they lost 4 wickets, the valuable 4 wickets for just 13 runs on the board. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. This time again wanted to get the ball. Rajesh Ubar, one of the good fielder in the outfield, couldn't manage to collect the ball properly, so that both the batters complete a couple of runs. Now Ayaz and Sandeep, the two batters. It's 16 for 4, and wait and see how well these two batters will going to get the partnership going here. Reverse pitch comes into play, but couldn't manage to get that connection what he's looking for. Just a single. With that single score, moves on to 17 for 4. Ayaz and Sunil, the experienced campaigner in the side of Planet Air STC Jaipur. And here comes next delivery. Oh, what a delivery. Absolutely unplayable. Tanveer is bowled the absolutely ripper. Even you can see that the batter, how he's been struggled to get into the line. That shows that the pace and the turn in the ball, it's absolutely made the magic. Lovely, lovely delivery. More than anything else, I want to tell you, the pace which is generated in this ball by Tanveer, absolutely fantastic. Just have a look at the replay. They came wide of the crease, and the last moment the ball got a deviation
and beaten by the turn and the pace, the ball just hitting the furniture and disturbed the furniture. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಳ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ and afterwards we'll go into the play-off round. It's 17 for 5. Here comes. Drives that one down to long on region. The batter is came into middle. One more, the big name in cricket, Altaf Basavanagudi. Tanveer bowled a fantastic over. The wicket of Ayaz in that over. After completion of over number 4, it's 18 for 5. So 18 for 5 after completion of over number 4. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಳ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇವಲ 3 ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So 18 for 5, Planetary STC Jaipur are really struggling in the middle. And the remaining 2 overs is always going to be a testing time for the batters of STC. They have to get some runs. This last league stage matches of both the team. If he wins this year, it takes them into the number 2 in the points table. Because STC, after 5 matches, they won 3, lost 2. They are in the second place in the present. One more wide, one more extra. With that extra score, but moves on to 18 for 5. Red Wings, correction. United URWA, they are in the 4th place in the present stands in the points table for the team. United URWA, they are in the 4th place now. They won the same number of matches. They won same number of matches, but STC Jaipur is won. Both the teams have won 3 matches each, but as per the net run rate, the team Planet Air STC Jaipur, they are in the 2nd place, and the team United URWA. Red Wings, correction, they are in 2nd place now. They completed the match. They won 4 matches. So they are in the 2nd place. The update which is made now in the points table. Again going for the sweep shot is a single. With the good run rate, if STC managed to win this match, they were got opportunity to come into the 2nd place. And the run rate which is, we can see that the V1 victory can get them into 2nd place after seeing that net run rate position of Red Wings and Planet Air STC Jaipur. United URWA, definitely they wanted with a big margin if you wanted to come into the 2nd place. Again, played it nicely in the long on region for a easy single. It's a very interesting points table now. And the teams like New Star Chakabettu and New Star Chakabettu looking towards this result of this match. They wanted to see United URWA have to lose this match. He won for the Eastern Avengers outside the line of off stump. Played it gently down to point region for a single by Sanil. Over number 5 in progress. Last but one delivery. Of course, last 2 deliveries left in this over. It's 23 for 5. Rahul. Ball him, cleaned him up. Fantastic delivery. Angling round the wicket and line which so good, which is coming into almost around the legs of the bat and maybe pitched outside the line next time. But he bowling a leg cutter. Just have a look at it in the replay.
The beautiful leg cutter with the pace, and again one more batter of Planet Air STC Jappo fails to contribute in a very important time of the innings of that team. 23 for 6. Very interesting to see that we're going to play the playoff, of course, playoff as well as qualifier number 1, and we're going to play the eliminator. Number 1, number 2 will be the team will going to play the qualifier number 1. KGF Kings already there grabbed their place in the top in the points table after winning all 6 matches of their league stage matches. The defending champion of KUDLA Premier League are in the top. Swept that one very nicely in the gap towards the square leg region, but protection has been given in the deep so that the batter have to settle for a single. With that single scored moves on to 24 for the loss of 6 wicket. One more over completed, last over remaining. So far United URWA are looking in full control. The runner-up of the previous edition. The runner-up of the previous edition also wanted to come into that second place in the points table. Red Wings Rangers are absolutely there, so excited to watch this result of this particular match. Even the team New Star Chocobeto, even the team Eastern Avengers, Eastern Avengers completed their match. Yes, absolutely. Eastern Avengers has got one match to play, and they're also looking towards this particular match, because victory in the last match for them, again the gate is open for them also in the playoff round. The big margin victory will go to get them into that position. Shanawaz pauses the first delivery with a good line. Umpire just wanted to clarify whether it's come from the bat of the batter or not. Nazimuddin. It's 25 for 6. Nizamuddin, maybe there is spelling mistake. It's a Nazimuddin. So thank you for the clarification. But in this, what you call registration, the spelling mistake, it's written as a Nizamuddin. Again, going to be a wide, one more extra. One of the most popular Nizamuddin Express. Maybe he's a bowler. Nazimuddin is an express bowler. Who knows? Wait and see. Again, played it very nicely into the extra cover region. And definitely they wanted to come back for the second, but no chance at all. Nazimuddin have to put some brake on his speed. I wanted to get a second run here, but quickly realizing Eastern Avengers, absolutely, they are so excited to watch the result of this particular match. They're praying for something. They're praying for something. We can see some excitement faces here in our commentary box. But United are looking in top, but that is not a good news for the Eastern. again outside the line of off stump, and wicketkeeper missed it. The one more extra 30 on the board for the loss of 6 wicket. Correction, it's not 30, 29 for 6. Now LED screen will go into switched on here to make this KPL more excitement in the playoff round under floodlight. And again, appeal for leg before wicket umpire. And direct hit is gone. This is what Mansur for you. What a presence of mind here from him. How quickly he managed to get the ball. Just have a look at the replay. Very quick in the just pick the ball and absolutely sharp shooter. Hit that one, and
got the result for his team. United URWA are match by match, they're looking so different. We can see that the humbleness we can see in the eyes of all the players. They wanted to be in the toppers. In the second place, they just desperately wanted to play the playoff and desperately wanted to play the qualifier. Last two deliveries left in this over. Scoreboard remains on 29 for 7. Sunil is hanging there in the middle. So far he's batting on 9 out of 9 deliveries. Shahnawaz. Again now played it very nicely in the gap long of region and they completed a couple of runs. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಶಮೀಮ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶಾನ್ ಬರ್ಕೆ ಇವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. Sunil just wanted to get that one in the onside region, miss the line completely and given leg before wicket. So that's it. Team will going to finish. SDC Jaipur Planet Air, they finished their innings with 31 runs and they set a target of exactly 32 runs to win this match. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಉಮರ್ ಶಮೀಮ್ ಹಾಗೆ ಶಾನ್ ಬರ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ United URWA, just 32. All we can see that United URWA bowler did a great job to restrict their opposition for just 31. This is going to be a very important match for both the teams. So excitement is absolutely very high in this particular match and wait and see how well these two teams will going to have a battle for the victory. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಳ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಳ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೇವಲ 4 ಆಟಗಾರರ ಸಹಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. Before we're going to start the innings of Team United URWA, it's time to change in voice. It's a time to invite once again Majid Malur in state language, sweet language Kannada. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ 2 ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 2 ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನವರು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ತುಂಬ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರಿಗೆ.
ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನೌಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಬಾಸಿತ್ ಆಗಮನದ ಬಳಿಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಜ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಶಾಕಿರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಬಾಸಿತ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಸಿತ್ ರವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ತಾಜ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 32 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಶಾಕಿರ್ ಜಾಕಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆಡಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ಬಾಸಿತ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಂಡ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಕಿರ್ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಾಸಿತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟದೆ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಬಾಸಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವುದಾದರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ತಾಜ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದೆ 4 ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಲಿ ಶಾಕಿರ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಬಾಸಿತ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಬಾಸಿತ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ 1 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. 32ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿರ್ ಎಸೆದಂತಹ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 8 ಓಟವನ್ನಾದರೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಾಜೇಶ್ ಪವಾರ್. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ರಾಜೇಶ್ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 32 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಕಿರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕಿರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಯ 1 ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೆಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿ ಸೀಸನ್ ಆವೃತ್ತಿ 10ರ ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಶಾಕಿರ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಹುಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 12 ಬಂದಿದೆ. 12ಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಮನ್ಸೂರ್ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಕಿರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಡೆಗೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಮನವಿತ್ತು ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಆರಂಭಿಕ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಯಾಸ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ
ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಯಾಸ್ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅಯಾಸ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ದುಬಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾಸ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. 19 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಬೇಕು. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೂರುಕಿನ ಓಟ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ, ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಂತ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕಿದೆ. ಅಯಾಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಪಡಿಸುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯವಿದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇರುವ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಯಾಸ್. ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಮನವಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರೀಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ಅಯಾಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ, 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅಯಾಸ್ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಕೆಪಿಎಲ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆವೃತ್ತಿ 10ರ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿವಸದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಇವತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 2024-25-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮರ್ ಶಮೀಮ್ ಖಾನ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮರ್ ಶಮೀಮ್ ರವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಯಸ ಕೆಪಿಎಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅಯಾಸ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನ ಸಜ್ಜುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಯಾಸ್ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾಸ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಶ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಅಯಾಸ್ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾಲಿಡಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್. ಈ ಕ್ಯಾಚಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನಾದರೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ರವರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ಕ್ಕೆ 3 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಶೀದ್ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಯಾಸ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂತೋಷ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ
ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅಜರ್ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 2 ಓವರ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಉಳಿದಂತಹ ಉಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 17 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ SDC ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಸಂತೋಷ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ KPL ಆವೃತ್ತಿ 10 ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ, ಲೀಗ್ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಂತೋಷ್ ದಂಡನ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗೋದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಜರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಎಸೆದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ನವಾಜ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16, 22 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಕ್ಷಮಿಸಿ 16 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರನ ಒಳಗೊಂಡು ಅದ್ದೂರಿಯ KPL ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಸೀಸನ್ ಆವೃತ್ತಿ 10 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ STC ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದು ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳಿಸಂತ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಅದರ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಹುಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. KA05MB 1162 KA05MB 1162 ಈ ಕಾರನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡೋರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. KA05MB 1162 ಕಾರ್ನ ಮಾಲಕರು ದಯಮಾಡಿ ಆ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. 4ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತದೆ. ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಯಾಜ್ ಸದಸ್ಯಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಬಳಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಸರುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವಿದು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 3 ಓವರ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಬಂದಿದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗೋಪೀಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
धन्यवाद माजिद भाई। तो जहां तक सवाल है इस वक्त रन्स चाहिए इस वक्त 18 नहीं 14 चाहिए रन इस वक्त विजय के लिए। स्कोर बन चुका है 18 और जहां तक सवाल है इस वक्त ओवर का तो 18 गेंदें इस वक्त बाकी है। 18 बॉल्स लेफ्ट 14 रन्स रिक्वायर्ड। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो गेंदबाजी शुरू करते हुए कार्तिक का ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो इस वक्त बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली गेंद। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया। इस वक्त गेंद पहुंची स्लिप कॉर्डन पर, ऐसा कहना पड़ेगा शॉर्ट गली पर गेंद फील्ड हो। जब तक बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 19 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। निस्संदेह यहाँ पर कहना पड़ेगा बल्ले और गेंद के बीच में कड़ा संघर्ष जारी है और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार राजेश उबर और गेंदबाज से आगे बढ़ाते हुए कार्तिक और फील्डिंग में इस वक्त कुछ हद तक जमावट चलती हुई। जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का कार्तिक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए राजेश के लिए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। निस्संदेह कम बैक करना है एसटीसी जयपुर के गेंदबाजों को। तो यहाँ पर एक घातक गेंदबाजी करनी होगी। यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली बाय राजेश has got a single for that stroke and with that single run the scoreboard moving up to 21 on the board for losing 4 wickets in the over number 4 in progress. Still 11 more runs now they have to score for victory और गेंदें बाकी है यहाँ पर 16 और कार्तिक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑफ कटर गेंद थी। इस बार रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए डायरेक्ट हिट लग चुका है लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज को रन नहीं मिलेगा। 2 कदम आगे जरूर बढ़ा था इस वक्त बल्लेबाज ने स्ट्रोक्स को स्टीयर करने के बाद गेंद को स्टीयर करने के बाद और जहाँ तक सवाल है अंतिम क्षण में अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित अश्विन के इस वक्त सामना करते हुए एक बार फिर से कार्तिक की गेंदों का बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार स्वीप करना चाहे एक बार फिर से फाइन लेग पर इस बार शाकिर के हाथों से गेंद फिसल चुकी है और इस बार रन आउट का खतरा हो चुका है। निशाना छूट चुका है इस वक्त। तो शाकिर के हाथों से गेंद फिसली और बल्लेबाज दौड़े, बल्लेबाज भी फिसल गए और थ्रो पहुंचा लेकिन बल्लेबाज संभल कर एक रन प्राप्त करने में सफल। और बाई का इशारा इस वक्त हो चुका है। बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। इस बीच रन चाहिए 10, गेंदें बाकी हैं 14 और निस्संदेह कम बैक करने के लिए इस वक्त प्लैनेट एयर एसटीसी जयपुर के गेंदबाजों को इस वक्त जरूरत है डॉट गेंदों की, जबकि इस वक्त यूनाइटेड उर्वा को चाहिए हर गेंद पर रन बनाना जरूरी इस वक्त उनके लिए बन चुका है। यह गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त, फैंटास्टिक डिलीवरी और रन गेंद पर रन नहीं मिला। 13 गेंदें बाकी 11 रन चाहिए। अब तक का कार्तिक का बेहतर ओवर साबित हो चुका है। 13 गेंदों पर 10 रन चाहिए। अब इस बीच गेंदबाज की गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया। जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट इज बैट ड्रिवन दैट वन डाउन टेक्स टू कवर इन फैक्ट इज जस्ट लुकिंग फॉर अ सिंगल सेकंड रन। इन फैक्ट इज गॉट ओनली अ सिंगल। निशु तेजी के साथ गेंद तक पहुंचते हुए और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। 23 for the loss of 4 wicket. That means 9 runs to get from remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. ईस्टर्न एवेंजर्स और प्रकाश कुंबला वॉरियर्स के बीच अगला मैच खेला जाएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के कप्तानों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें। यहाँ पर टॉस के लिए रिक्वेस्ट द कैप्टन। नेक्स्ट मैच विल बी द लास्ट मैच ऑफ द लीग स्टेज विल बी प्लेड बिटवीन प्रकाश कुंपला वॉरियर्स वर्सेस ईस्टर्न एवेंजर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिक्वेस्ट द कैप्टन्स ऑफ दीज 2 टीम्स टू प्लीज रिपोर्ट टू द स्टेज इमीडिएटली फॉर द टॉस प्रोसीजर। संतोष जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था, इस वक्त अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार सामना करते हुए इस वक्त राजेश उबर। शाम का वक्त 5:45 यहाँ पर बज चुके हैं। धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है और इस वक्त मुकाबला जारी है आज के इस 7वें मैच में। सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी यहाँ पर कम होते हुए और इस बीच संतोष ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा राजेश ने, गेंद गई इस वक्त डीप मिड विकेट पर। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। तीसरा रन लेना इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग और इस बीच ऐसा कहना पड़ेगा
अंतिम क्षण में अंपायर इशारा कर चुके हैं तीसरे अंपायर की ओर। तीसरे रन दौड़ते समय यहाँ पर वहां पर मिसफील्ड हुई थी, देखिए किस तरीके से थ्रो पहुंचा, कल करने के बाद दूसरे फील्डर के हाथों में गेंद को पहुंचाई और विकेट जब चटकाए गए तब देखना है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। ही इज गॉन, इनफैक्ट ही फेल जस्ट शॉट आउट ऑफ हिज क्रीज। 2 runs added and a wicket lost. 25 on the board. Ashwin departs. 5th wicket gone. 25 for 5 in this situation. Now, 11 balls left and 7 runs required. 5 wickets they got kept intact. और इस वक्त सवाल है जहां तक नए बल्लेबाज का, तो इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। आज तीसरा दिन इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट केपीएल कुडला प्रीमियर लीग सीजन 10 2026 के अंतर्गत यहां पर मैच नंबर 7 खेला जाता हुआ और मुकाबला इस वक्त जारी है प्लैनेट एयर एसटीसी जयपुर और यूनाइटेड उर्वा के बीच। संतोष कुछ चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार, सपना करते हुए नए बल्लेबाज तनवीर जो कि इस वक्त सपना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए संतोष। 7 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 11 डिलीवरीज। इस बीच संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग कटर गेंद पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, कोई बैकअप नहीं वहां पर और 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। निशाना चूकता हुआ विकेट कीपर का फेंका गया हुआ और बल्लेबाज 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 26 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। नाउ 6 टू गेट फ्रॉम 10 डिलीवरीज। कम बैक करना है तो इस वक्त लगातार डॉट गेंदे फेंकने होंगे प्लैनेट एयर एसटीसी के गेंदबाजों को। और इस बीच राजेश जो कि एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए इस वक्त सपना करने के लिए तैयार और संतोष ये गेंद इस वक्त स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ, जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द ब्लेड एट द लास्ट मोमेंट, स्टीयरिंग इट अवे डाउन टू अ गली एंड गॉन टू फॉर अ इजी सिंगल। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 5 रन और चाहिए विजय के लिए। और इस बीच संतोष अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद लेग कटर इन द एयर बट फेल इन द विकेट एरिया। टॉप एज पर गेंद टकराई थी लेकिन फील्डर जो थे लॉन्ग ऑफ पर काफी पीछे और गेंद मिड ऑफ पर टिप्पा खाते हुए 1 रन का इजाफा। 28 नाउ 8 balls left and 4 runs required. संतोष अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद पैरों पर टकराई, अपील, up goes the finger, plumb in front given and now राजेश हैज टू डिपार्ट। और यहां पर देखिए रिप्ले पर असल में क्या हुआ था, फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, गेंद उनके पैर पर टकराई और प्लम्ब इन फ्रंट घोषित करते हुए इस वक्त अंपायर और राजेश उबर की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। 6th विकेट डाउन। नाउ 4 runs फार फ्रॉम देयर विक्ट्री यूनाइटेड उर्वा। और यहां पर देखिए अपील को पुरस्कृत करते हुए अंपायर ने अपनी उंगली यहां पर उठा दी और राजेश उबर की पारी पर पर्दा गिर चुका है। 6 wicket down for 28 runs, 7 balls left, 4 runs to get and they got 4 wickets kept intact. शाह नवाज नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार इस ओवर की अंतिम गेंद का। और संतोष जप्पू इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। अब तक संतोष जप्पू ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शाहनवाज बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन। और इस ओवर में अंतिम बार संतोष जप्पू गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। 7 गेंदें बाकी, 4 रन चाहिए और संतोष दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग से बाहर, ढीली गेंद थी, फुल टॉस गेंद को मोड़ा इस वक्त लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर निशु जब तक गेंद को फील्ड करें, निशु जब तक गेंद को फील्ड करें 1 रन का इजाफा। 29 for 6 and 5th over has been came to an end. 3 runs to get from the last over, that means in remaining 6 deliveries now for United Urwa. Three runs to get from 6 deliveries. निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा इस अंतिम ओवर में प्लैनेट एसटीसी
जप्पू को कुछ घातक गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है। फिलहाल मौका जरूर है यहाँ पर बाउंस बैक करने का उनके गेंदबाजों को, और गेंदबाज जो कि मैच निर्धारित ओवर, मैच डिसाइडिंग ओवर इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से सनील, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार शाहनवाज जो कि इस वक्त सामना करते हुए, और इस बीच सनील ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। 3 रन चाहिए विजय के लिए, 6 गेंदें बाकी, और लगभग क्लोजिंग फील्डर इस वक्त सजा दिया गया है। शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहनवाज के लिए सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद चूके प्लम, दिस टाइम स्टंप बिहाइंड द स्टंप, स्टंप्स ब्रिलियंटली बाय द विकेट कीपर, स्टंप ब्रिलियंटली बाय द विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। शाहनवाज इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा, रिप्ले पर देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस द रिप्ले, जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली एंड स्टंप्ड ब्रिलियंटली बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। और 5 गेंदें बाकी, 3 रन चाहिए विजय के लिए। 3 to get 5 डिलीवरीज, लगातार 2 या 3 गेंदें डॉट अगर करते हैं गेंदबाज सनील, तो निश्चित रूप से यहाँ पर मौका जरूर है प्लैनेट एयर एसटीसी को इस मैच में कमबैक वापसी करने का, और इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का। 7th विकेट डाउन, नाउ द स्कोर सेज 29 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, और नंबर 9 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। जलाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 1 गेंद बेहतर फेंक चुके हैं गेंदबाज सनील, इंतजार है 5 बेहतर गेंदों का, और जहां तक यूनाइटेड उर्वा का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए 3 रन बचे हुए 5 गेंदों में, और गेंदबाज इस वक्त यहां पर आगे बढ़ाते हुए सनील। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है। बल्लेबाज के लिए 4 खिलाड़ी बल्लेबाज को गिरे हुए। ये गेंद इस वक्त फुल टॉस, गेंद को मोड़ना चाहा, शॉट को लेग पर रनआउट का खतरा, थ्रो पहुंचा, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। 1 more wicket fallen, 8th wicket down. Now the tide is now slowly turning. 4 balls remaining, 3 runs to get, and just 2 wickets they got kept intact. 8 विकेट यहां पर गिर चुके हैं, और अपने विजय से अभी भी 3 रन दूर यहां पर यूनाइटेड उर्वा। तो 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में सनील फेंक चुके हैं, और जहां तक सवाल है इस वक्त 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरे। इस ओवर के पहले 2 गेंदों में 2 विकेट खो चुका है यूनाइटेड उर्वा, रनआउट के रूप में, 1 स्टंप के रूप में, 1 रनआउट के रूप में, और नंबर 10 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। निस्संदेह इस वक्त बल्ले और गेंद के बीच में कड़ा मुकाबला यहां पर जारी। जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, नंबर 10 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार तनवीर सामना करते हुए। 4 गेंदें बाकी, 3 रन चाहिए। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड। 4 खिलाड़ी इस वक्त बल्लेबाज को गिरे हुए। शॉर्ट फाइन लेग, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, और गली थोड़ा सा आगे। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर मौजूद है। अब एक फील्डर को शॉर्ट पॉइंट पर इस वक्त बुला लिया गया है, और स्लिप पॉइंट से थोड़ा सा पीछे। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, सनील गेंदबाजी करते हुए तनवीर के लिए दाहिने हाथ, और शाकिर इस वक्त गेंदबाज को उन्होंने रोका, और फील्डिंग में इस वक्त कुछ हद तक बदलाव लाते हुए। और इस बीच अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। 4 डिलीवरीज रिमेनिंग, 3 to get. Here we go. दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार फुल टॉस, गेंद को खेला, शॉर्ट फाइन लेग पर थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो चूकता हुआ इस वक्त 1 रन मिलेगा। डायरेक्ट हिट अगर लगता तो शायद यहां पर बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगा इस वक्त, और गेंद स्टंप्स से कुछ दूरी पर गुजरते हुए 1 रन का इजाफा। नाउ 3 balls remaining, 2 runs to get, 2 wickets in hand. और नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शरण। तनवीर ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, और देखना यह है कि शरण इस वक्त अगली गेंद पर क्या करते हैं। फिलहाल इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा लगभग क्लोजिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में, और सनील 3 गेंदें अब तक इस ओवर में बेहतर फेंक चुके, अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया, खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया है,
इस वक्त कार्तिक द्वारा एक रन का इजाफा और इस बार ऐसा कहना पड़ेगा विकेट उखाड़ चुके हैं, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, यहां पर एकमात्र रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा और अब तीसरे अंपायर के लिए इशारा करते हुए नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर, एक रन जरूर जुड़ा और इस एक रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल। और देखना है कि यहां पर बल्लेबाज बचते हैं या नहीं स्ट्राइकर एंड पर, जब विकेट कीपर not out is the call and he survived. Now 2 balls left, 1 run required और तनवीर back on strike। तो ऐसा कहना पड़ेगा अब 2 चमत्कारी गेंद ही इस वक्त एसटीसी जप्पू को मैच में टाई में समाप्त करने में सहकारी बन सकते हैं। फिलहाल चाहिए 2 चमत्कारी गेंदबाज द्वारा और इस बीच अगर इस गेंद को गेंदबाज सनील अगर डॉट करते हैं तो निश्चित रूप से बल्लेबाज के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा अंतिम गेंद पर और फील्डर्स इस वक्त बातचीत करते हुए और अपने अपने स्थान पर जाते हुए एक रन चाहिए। स्कोर स्टेज है 31 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स और सनील इस वक्त तैयार तनवीर के लिए। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार रनआउट का खतरा और इसी के साथ 9वां विकेट गिर चुका है, 9th विकेट फॉलन एंड नाउ लास्ट बॉल रिमेनिंग, लास्ट रन रिक्वायर्ड एंड लास्ट विकेट इन हैंड, 1-1-1 द सिचुएशन स्टैंड्स। सो व्हाट अ मैच, व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर दौड़ा है और यहां पर रनआउट करते हुए गेंदबाज थ्रो को रिसीव करने के बाद और अंतिम बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 31 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, 1 ball remaining, 1 run needed and 1 wicket in hand। निश्चित रूप से एक बेहतरीन मैच यहां पर प्रगति पर दर्शक संपूर्ण मनोरंजन उठाते हुए इस मैच का और अंतिम गेंद बाकी। अब देखना यह है कि अंतिम गेंद पर क्या तनवीर सिंगल ले पाते हैं या फिर क्या सनील यहां पर डॉट कर पाते हैं। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा यूनाइटेड उर्वा का भविष्य बल्लेबाज तनवीर के हाथों में, जबकि प्लैनेट एयर एसटीसी जप्पू का भविष्य गेंदबाज सनील के हाथ में। तो देखते हैं बल्लेबाज तनवीर अपने टीम को विजय दिलाते हैं या फिर सनील मैच को टाइम में समाप्त करते हैं। मैच निर्धारित गेंद लेकर तैयार, द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप, 1-1, हियर वी गो, ये गेंद इस बार मुक्त चुके, रन के लिए दौड़ पड़े, रन इस बार थ्रो चुका और इसी के साथ ये मैच जीत चुका है यूनाइटेड उर्वा। तो खिलाड़ी इस वक्त कुछ बात करते हुए कुछ कहते हुए अंपायर से, तो जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम गेंद पर रन यहां पर देखिए असल में क्या हुआ था, रन के लिए दौड़े, गेंद फिर से टकराई बल्लेबाज के पैर पर, दोबारा जब थ्रो किया तो गेंद टकरा चुकी है बल्लेबाज के पीठ पर। तो अंतिम गेंद पर रोमांचक जीत यहां पर दर्ज कर चुका है यूनाइटेड उर्वा और अंपायर इस वक्त इंतजार है अंपायर के निर्धार का। तो अब तीसरे अंपायर के लिए निर्धार दिया गया। तो देखते हैं यहां पर तीसरे अंतिम गेंद पर असल में क्या हुआ था। अभी भी यूनाइटेड उर्वा को विजेता निर्धारित नहीं किया गया है और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर का निर्धार क्या होगा। क्या जानबूझकर बल्लेबाज ने अपने पैर से गेंद को मारा था या अनजाने में गेंद उनके पैर से टकराई थी, तो ये देखने वाली बात है। और यहां पर देखिए असल में क्या हुआ था और थ्रो देखिए यहां पर पहुंचा, बल्लेबाज के पीठ पर टकराई और आखिरकार रन पूरा कर चुके हैं। तो तीसरे अंपायर के ऊपर निशाना इस वक्त निर्धार सौंपा गया है और यहाँ पर प्लैनेट एयर एसटीसी जप्पू के खिलाड़ियों ने कहा कि तीसरे अंपायर को निर्धार सौंपा जाए। इट्स अ फेयर रन, सो दैट्स इट, लास्ट बॉल थ्रिलिंग विक्ट्री फॉर यूनाइटेड उर्वा अगेंस्ट प्लैनेट एयर एसटीसी जप्पू एंड विद दैट लास्ट बॉल थ्रिलिंग विक्ट्री बाय 1 विकेट, यूनाइटेड उर्वा back the complete points. Fantastic match ended. Match number 7 of the day 3 of this prestigious cricket tournament, KPL KUDLA Premier League Season 10 2026. So man of the match of this match award goes to Tanveer, who bowled fantastically, conceded just 12 runs in his 2 overs scored and picked up 3 wickets. And because of that bowling, fantastic bowling performance, Tanveer of United Urwa adjudged man of the match. I request Mr. Tanveer to please go to the stage and receive the man of the match award for Mr.
Umar Shamim, I request Mr. Umar Shamim, the owner of Torpedoes Khana, distribute the Man of the Match award for Tanveer for his fantastic bowling knock of 2 over no ball 11 run and 3 wicket. Umar Shamim, one of our today's chief guests, will distribute the Man of the Match award for Tanveer for his fantastic bowling figures of 2 overs, no maiden 11 runs, 3 wickets in this match. So that's it for the match number 7, and match number 8 now is coming up between Eastern Avengers versus Prakash Kumpala Warriors, and that match number 8 and the last match of the league stage is now coming up live and exclusively right in front of you within just a short while. Till then, we're taking a short break. We are taking a short break, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब हाशिम के साथ अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ जब यहाँ पर अगला मैच शुरू होगा. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. Evening everyone. It's now time for the presentation of Man of the Match award, and Umar Shamim of Torpedoes Khana presenting Man of the Match award for Tanveer. Thank you very much and congratulations Tanveer. And meanwhile one more chief guest watching this cricket tournament. Welcome for him, Mr. Sean Burke is one of the supporter of this cricket tournament as well. Welcome for him on behalf of organizer and on behalf of all cricket lovers. Thank you. Over to Asim. Thanks, Mr. Satish. Evening, everyone. We're getting into the business end of the tournament. It's an electrifying atmosphere here at URWA Cricket Ground. We've had some spectacular rounds of games of cricket. And this is potentially the last game of the league stage, and then we're going to get into the playoffs and we're going to get into the qualifiers. We're going to have some outstanding games of cricket to come this evening. Please do not go anywhere. We're going to have some absolutely unbelievable and an incredible package of cricket coming here in the KUDLA Premier League 2026. KUDLA Premier League 2026 Season 10 is very much a gift of URWA, Friends URWA registration. Right, all set for that last game of the league stage. First ball. Sajid reverses it straight away. That will go all the way to the boundary. No, it's been pulled back excellently by the fielder. Had to track back Chaithan's very, very quick to chase it. Magnificent chase there by Chaithan. Pull it back. Restricted it to 2 on the card straight away. Surely going to be out. Surely out. And it's a good decision made by the umpire. Across the line, try to play a loose shot there early in the innings. You cannot try something like that. You're always going to be in trouble if you miss it. And that's the first wicket. Sarge has got to take a walk back. That is just a stupid shot in my view. Can't play that shot early on. Because you know what? You don't get the measure of the track. You don't know where the ball's going to bowl. Where's he going to fire the ball? And you do a mistake like that, and the LBW will come into play. Sarge, generally a very good player. Top-notch cricketer, top-notch batter, good ball striker. But he's got to go back to the hut. Prakash Kumpala Warriors. 1 down for 2 now. Harris, the man who's picked up that wicket. Harris is an express pacey bowler. Loves to bowl at a very good pace. Is clocking at about 135 to 140, round about that range or thereabouts kilometers kph per hour. Right, the new batter walks out. Kishore, the new batter, walks out to the center. He's got a job in his hand.
Harris, what a delivery. That is absolutely majestic. A gem of a delivery. Talked about clocking at about 140 plus per hour kph. And there's the example of that. That is just an unbelievable delivery. No way. He was trying to play through the covers, I think. Should have played very straight. The ball's jacked back in a little bit, zipped up the surface a little bit, back into the left-hander. Generally, when a left-hander's batting, when you get a ball like that, that comes back into the left-hander, always problematic for the left-hander. 2 wickets and 2 balls for Harris. Is on a hat-trick now. Could he pick up a hat-trick here? It's a hat-trick ball. The new batter walks out to the centre. Taslim, the new batter. Can he defend? Can he defend the hat-trick ball? Can't be runs there, surely. No shot offered, no runs. Good decision made by the umpire. Cannot have runs for it as long as you don't offer shots, but he safely negotiated the hat-trick ball. But that ball was down the leg side. You would expect him to bowl straight. Harris couldn't get that right on target. Therefore, it's just going to be a dot ball. He's on fire now, Harris. He's bowling superbly. He's got great pace. Great exhibition of pace bowling. Got back in time. Well in time, really. Taslim gets off the mark with that single. These two batters got to really find out that. They got to try and play out this over. Try and take a bit of time. I think there's no harm in playing out. Try to sweep it, but going to be called a wide, far outside the off stump. Try to fetch the ball from outside off the batter, missing the line of the ball completely. Could have had a top edge as well when you play a shot like that loosely. So that's the danger, really. Struck it down the ground, not for runs. Great bit of work, excellent commitment from the field, from the bowler himself. Harris doing a great job. End of that special over from Harris. Picked up 2 wickets. What an over is bowled in the context of the game to bowl things, to really put his team in a commanding position. End of over number 1, 4 for 2. Kumpla Warriors. Drastic start for them, right. So when you get a start like this, it almost becomes impossible for you to get back into the game. Because you are on the back foot. You're going to be pushed on the back foot. A lot of nerves. As a batter, I think it's easy to see for us from a long distance. But when you go out there as a batter, there's a lot of pressure on the batters, really. And that's why sometimes you've got to play fearless cricket and try and take that pressure off. Excuse me, sir. Yajnesh, left armour. Not the best of the deliveries. Just got that bit of awkward bounce, really. Not expecting that ball to bounce a little bit. But just the one there. Got off strike. Manjana on the drive, on the charge, straight away. Will just be one there for Manjana. He'll get out the mark with that single. Taslim and Manjana. And they got to find a partnership and find a way to score runs here at a rapid pace. It's not just about keeping wickets, but also scoring runs at a rapid pace. Excellent delivery, that is. Fuller length on the offside. Batsman try to have a go at it. Missing the line of the ball completely. Done by raw pace there. Good pace. Not express, but got good pace really to try and tie the batter up. Good delivery, that is. Good delivery on the spot, on the money. Spotless bowling this is. From the bowler, Yajnesh is a terrific cricketer. Tons and tons of talent and ability he's gotten as a bowler. He's bowling that right line of down the leg side. There's that variation. He's got plenty of varieties to bowl. Naturally, good pace bowler. That you got to have those armories in your repertoire to try and bowl in different ways. And that's where I think you bowled 6 different deliveries. You're actually
asking the batter to keep thinking, what am I going to get in the next delivery? You put that batter in a sort of dilemmatic condition. And surely out, no doubt about that, playing across the line. And that is just dumb cricket, daft cricket. Can't play that shot really. And when you play that, you got to play with, I think the problem with that shot, technically speaking, is that the ball gets fired into the stumps and you're fraction to late onto that shot. And that's the problem with a high bat lift when you go for that big shot. I do see this very often in underarm cricket, not just in underarm, but also in red ball, white ball cricket, that we generally get to see this. Why do you see that sort of happen to even top-notch batters? It's because the bat's coming late. When the ball is firing that ball, the bat's always late because you've got a high bat lift. You've got to always look for short bat lift. Probably have a scoop would be a good idea. I request all the players of KGF Kings as well as Red Wings Rangers Kunjat Bail, please come to the presentation, of course, into the commentary box to sign the official chart. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಡಲು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Lofted it over. Just be one there. You got to try and go up and down in gears as a batter. You got to always think about the situations, go up and down in gears. Good batters generally go that way, that kind of tempo that they've gotten. That is a good delivery. Excellent delivery by Hakeem. Bang on target, right on the money. Got to bowl that consistently. Got to try and not being predictable by bowling that delivery. And that's the key here. Going to be another good ball. Cutters almost like, I think these cutters are going to create problems. When you've got cutters, you've got to try and open up the offside field rather than opening up the leg side field. And that's the danger when you play down the leg side. You always bring in loads of risks into the shot. Down the leg side, got to wait for the umpire's decision there. The umpire shakes his head straight away for the appeal of the batter. Therefore, it's going to be a dot ball. Goes again. Goes big. That's going to go only one way into the stands, into the combox stand for a 6. Full toss and offer. He missed the line, missed the length of the ball. Actually tried to bowl a little bit fuller, but the batsman got it as a full toss and whacked it into the mid-on boundary for a 6. Great extension of his arms, great power generation, great transfer of the power. He gets himself into that 6. Taslim, the batter, gets that magnificent 6. Got away with that for a single. For 16 for 3 after the end of that third over. And to tell you more about the tell you more about the game into the right till the end of the game, I think we've got to have Mr. Satish Salian, who's going to take it over from me. Over to you, Mr. Satish. So thank you very much, Hasim. And well, this is a very important match for the team Eastern Avengers Parangapete. The winning here with the good run rate definitely take them into the playoff round. Ball him, clean him up. This time Rehman just exposing his all stamps, just going for that cricketing stroke, improvising cricketing stroke, and pays the penalty for that. It's always going to be asking for trouble against a turn. The one more big wicket is back in the pavilion.
Eastern Avengers knows that how important this match is going to be. If they wanted to remain in this competition, they have to win with the margin. If any target which is set by the opposition team, they have to get that one very quickly. If you manage to get that total very quickly, who knows? With this net run rate, they can be in the playoff round. Top edge opportunity, but no one there at the square leg region. The wicketkeeper had to run towards the ball, and before that, both the batters completed the single. Only 10 players playing here, Prakash Kumpala, so that is one more advantage for the team Eastern Avengers. Chetan. Taslim, the batter, will going to face Chetan. Right arm over the wicket, he bowls. Lofted straight down the ground, but no power, and he just pays the penalty for that. Against the spin, he cannot get that timing enough. You need to have some kind of power behind the stroke because you are playing a spin bowler. You are not playing a fast bowler. Of course, while you're playing a fast bowler, I think even that timing is good enough. But when you are trying to hit the spinner, you have to get a little bit extra power behind the stroke. Chetan strikes again. He's looking so good so far in this particular over. Exactly what his team is wanted in this over. 2 wickets back in the pavilion. So Asim will going to leave here. Thank you very much, Asim, for your contribution for the KUDLA Premier League as a commentator in English language. And certainly we have enjoyed your company in the commentary box. Here comes Chetan again. Right arm over the wicket, bowls. Nicely pedaled that one down to third man region for a single shot. Third man, in fact, Karna, the fielder, going to field the ball. Excellent over there from Chetan. This has been an absolutely good over from Chetan for the point of view of Eastern Avengers. After completion of over number 4, total score is 19 for 4. 5 wickets back in the pavilion, in fact. The KUDLA Premier League 2026 season 10 is in progress. Friends who are registered under the great leadership of Tilak Guru, the man who behind this cricket tournament, when was IPL is dominating in international level, then Tilak Guru is absolutely, he's got a one dream that why not in Underarm cricket we need to get same kind of atmosphere. So he started the dream, but of course he not only was the dream, but tried to make this dreams comes true. And this is a 10th edition of this KPL. Played it nicely into long off region for a easy single. And the bowler brought into attack the captain and icon player of Eastern Avengers, Parangapete, Akeem KFC. Akeem Surinja KFC. A pale and flum, absolutely flum, no doubt at all. Aman, even he was definitely surprised, but he need to see that where he is standing and where he is shuffled across. So this is a very good decision there from umpire. Certainly I'm going to call that this is a good decision. Umpire Ashraf knows that ball pitched in line, but batter shuffled across. The very good decision there from Ashraf, absolutely good one. The new batter came into bat here for the Prakash Kumpala. Here comes the next delivery. Played it very nicely into that square leg region for an easy single. With that single score, but now moves on to 21 on the board. 21 for the loss of 6 wickets back in the pavilion. And you're watching KUDLA Premier League 2026 season
10. And the lovely delivery, dotted one, dot delivery. So one more wicket back in the pavilion. One more back in the pavilion. This has been an absolute disappointment here for the batter who just tried to get some runs for his team. Mansoor departs. Uzaif is the batter, is back in the pavilion. So now it's going to be a little bit of festival atmosphere, which is the nickname of KUDLA Premier League, isn't it? The KUDLA Premier League is started with the tagline of Festival of Cricket, the Festival of Underarm Cricket. Now festival atmosphere in the evening. The DJ which is joining this KUDLA Premier League in the evening, making this atmosphere very electrifying. Again now outside the line of off stump, big misfielder by Altaf Walpadi, and a completed single. With that single, Skopana moves on to 30-22 after completion of over number 5. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So last over we're going to start from the far end. Imran has been operation round the wicket from the Anush Shetty and Ashwin Pujarian. Tried to flick the ball around the legs. He just ball flicks the bails. The flicks the bail of the leg stump, and one more wicket back in the pavilion. Wicket number 8 is back in the pavilion. They are only playing 10 players. That means it's the last wicket. It's 22 for 8. Eastern Avengers has a golden opportunity to bundle out their opposition so quickly so that they can get the runs very quickly, so that maybe they are in the competition. Here comes Imran again. Right arm round the wicket. Drives, nice looking drive into the mid wicket region, but protection has been given in the deep. Before the throw coming from the fielder in the deep, ample time for the batter to complete the single. 23 on the board. Dhanush picked up his first run from the bat. Tanveer, the batter, will go into face. Prakash Kumpala. This time, what a shot! Absolutely terrific. And hitting that Ravi Shanai and Chandrahas URWA, the flex which is situated in the deep square leg region. This is a flex of United URWA. That 6 takes the total score into 29. The Imran almost bowled around the legs of Tanveer. Is such a good striker of the ball in the onside region. Again, played it very nicely in the gap. It is going to be one more boundary. No, good fielding there by the fielder in the deep. Now far, of course, Nawaz Bilal are in the deep in the mid-wicket region. Fields the ball. Couple of runs which is completed. And with that couple of runs, Kopana moves on to 31 on the board. Now it's going to be more interesting. They got runs here, Prakash Kumpala. In the last wicket, they're getting runs. Again, a dot delivery. Sharan, this has been absolutely Dhanush correction. He wanted a run. The last wicket, which is back in the pavilion, one ball remaining in that over. So they're all out, bundled out. They're playing only 10 players. 32 runs required.
Eastern Avengers Parangipete will go in to finish this match early. Who knows, they got opportunity to remains in the competition. But not a good news for the other teams. Even SDC, Air Planet, they're definitely looking towards this match. It's going to be very, very interesting here in this playoff round. What an electrifying atmosphere here in UCG cricket ground. The lights will go into, of course, the lights are on, the floodlights are on. LED screen is also on, and DJ absolutely making this condition more electrifying. ಅಲ್ಲಿ KGF ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು I request all the players of KGF as well as team Red Wings Rangers to please come to the commentary box to sign the official chart. Meanwhile, change in voice and change in commentary box. Of course, it's a time for invite Majid Malur in speak language Kannada. Thank you. ಎಸ್ ಬರಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಆಡಿದಂಥ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಫಾಲ್ಪಾಡಿ ನೌಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಂಡರಿ ಬರುವುದಾದರೆ ರಿಫ್ವಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1 ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ದಾಳಿಗಾರ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌಂಡರಿಗಳು 32ರ ಗುರಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಆಗಿರಬಹುದೇ? ಎಸ್, ವೈಡ್ ಕಾಲ್. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಿಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಂದಿತ್ತು. ಬಹುಬೇಗನೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಳ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ರಿಫ್ವಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೇಲಮಟ್ಟ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ 1ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡಿಗ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6ಕ್ಕೆ 1 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲದೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅಕೀಮ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. KPL ಸೀಸನ್ 10 ಆವೃತ್ತಿ 10ರ ಧೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಸಿ URWA ಮೈದಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಗೆ 6ಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಳ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಕೀಮ್ ಅಂಕರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಚಾಲ್ತಿಯ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಫ್ವಾನ್. 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ತನ್ನದಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಕೀಮ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಪೂರ್ವ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಡಾಟೆಡ್ ಅವರ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 1 ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮರು ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರಿಫ್ವಾನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ವಾನ್ ಅಕೀಮ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರೀಯ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಕೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೀಮನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಬಹುವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡವಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿದಂತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜವಾಬನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8 ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ವೈಟ್ +1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತದೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ವಾನ್ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಆಸಿಫ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು 9 ಓಟವನ್ನು 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿದೆ. ರಿಫ್ವಾನ್ ನೀಳಕಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ, ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತ ಕರ್ನಾ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ರ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾ ಅಂಕಣವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಆ ಬಳಿಕ ಆಸಿಫ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡಲು ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕರ್ನಾ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ದಾಳಿಗಾರ ಉಜಿ ಚಂಡನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆಳೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟವನ್ನು ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ಣ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಸಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸಂಬಂಧ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ನೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತದೆ. ವೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಹುಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಉಸಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 2 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿ, 2 ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 4ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಚಿರತೆ ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 4 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾಲಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮತ್ತೆ 4 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಸಿಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭ ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 2 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಹುಟ್ಟುಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಕುಂಜತಬೈಲ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಉಸಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾರವರ ಕಡೆಗೆ. ಕರ್ಣ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ 2 ಓವರ್ ತಂಡದ ಹುಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನೆಗೋಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಬೇಗನೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್, ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. KPL ಸೀಸನ್ ಆವೃತ್ತಿ 10ರ ಧೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ವೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿ ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟುಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿತ್ 4ನೇ ಚೆಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಹುಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕರ್ಣ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಿಫನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ವಿಕೆಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಕರ್ನಾರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆದಂತಹ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟುಗಳು ಮಾತ್ರ. 3ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಇರುವಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೈದಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಇಮ್ರಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತದೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ನವಾಜ್ ಅಂಕನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಾಜ್ ಬೆಲಾಲ್ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಮತ್ತೆ ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೀಪಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಸುಲಭ, 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ, 2ರ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದು. ನವಾಜ್ ಬೆಲಾಲ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಹುಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ರೈಟ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಬಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುವೇಗಲು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಸಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಇರುವಿಕೆ ಇದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್, 7ನೆಯ ವಿಕೆಟ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ತಸ್ಲೀಂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25. ಉಳಿದಂತಹ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 7 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. KA05MB 1162 ಆ ಗಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಮಾಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. KA05MB 1162 ಈ ಗಾಡಿಯ ಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 7 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನವಾಜ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಬಂದೆ 1 ಸುಲಭ, 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ತಂಡ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನವಾಜ್ ಬೆಲಾಲ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಆರಿ ಸಾಚಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ನವಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಮಠದಾರಿಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜೊತೆಯಾಟಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ನವಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 3 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮಾನ್ ನವಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ 10 ಚೆಂಡುಗಳು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 3 ಓಟ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ಸುಲಭ, 1ರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 3 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ.
So man of the match of this match award goes to Aris, who bowled brilliant in the power play overs, conceded just 4 runs in his 1 over quota in power play and captured 2 wickets. And because of that fantastic bowling performance, Aris adjudged the man of the match. 1 over, no maiden, 4 runs and 2 wickets. So Eastern Avengers at last they finished 5th in the points table and they were out of the tournament. But well played by Eastern Avengers. And now we are straight away going to the playoff round. Qualifier match number 1 is now going to start within just a short while.
I request all the spectators, please go out of the fence. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 1 is now going to start with the just short while. I request all the spectators, please go out of the fence in this situation. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
तो जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। रियाज इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद एज अ नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल टू फेस सतीश। और सतीश हालांकि कुछ हद तक महंगे साबित हो चुके हैं इस ओवर में, 13 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं, लेकिन पिछले गेंद पर अरशद बजाल का विकेट प्राप्त करने में सफल। और इस वक्त रियाज सामना करते हुए यहां पर गेंदबाज सतीश की ओवर की अगली गेंद का दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रियाज के लिए यह गेंद स्वीप करना चाहा, बेहतर गेंद थी विकेट कीपर संतोष बंटवाल गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए विकेटों के पीछे, और बाई के रूप में 1 रन दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद केजीएफ किंग्स मेड अ प्रीटी गुड स्टार्ट, इन फैक्ट 14 रन स्कोर्ड फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक्सेप्ट दे लॉस्ट द विकेट ऑफ अरशद बजाल। They made a pretty good start. In fact, it's 14 for 1 after first over. विनोद पोलार्ड गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ यहां पर केजीएफ किंग्स की पारी में, और सपना इस वक्त करने के लिए तैयार रियाज। और देखना यह है कि विनोद पोलार्ड इस पावर प्ले दूसरे पावर प्ले ओवर में किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर करते हैं बल्लेबाजों को बांध कर रखने के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रियाज के लिए विनोद पोलार्ड, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद परफेक्ट लेग कटर डिलीवरी, और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत इस वक्त कर चुके हैं विनोद पोलार्ड, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। विनोद अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद ऑफ पर आती हुई बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेला, इस वक्त खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में गई और रन बल्लेबाज को नहीं मिला। और इस बीच अपने ओर की अगली गेंद लेकर विनोद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रियाज के लिए यह गेंद इस बार परफेक्ट लेग कटर, वंस अगेन अ फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम विनोद पोलार्ड। 3 डॉट balls in a row bowled by Vinod Pollard, and this is an absolutely good start for him in the bowling department. और अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर तैयार अब रियाज जो कि 3 डॉट गेंदें खेल चुके हैं, उन्हें इस वक्त कुछ समझाया नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज आरिस ने कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए इस दूसरे पावर प्ले ओवर में। और यह गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, गेंदबाज के सिर के ऊपर से तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा इस वक्त, लेकिन थ्रो निशाने पर नहीं टकराया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बेहतरीन ओवर साबित हो चुका है अब तक विनोद पोलार्ड का। आरिस बैक ऑन स्ट्राइक, और देखना यह है कि एरिस इस वक्त किस तरीके की बल्लेबाजी इन बचे हुए 2 पावर प्ले गेंदों पर इस वक्त अपनाते हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट विनोद पोलार्ड। एरिस के लिए यह गेंद इस बार गेंद हवा में जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ द शॉट एंड इज गॉन इन फैक्ट, taken by the wide slung off fielder, and one more blow for KGF Kings. Alice departs. So Tanzim took a brilliant catch, just going towards his backside at the last moment to grab the ball. पीछे की ओर दौड़ते हुए तंजीम जो फील्डर थे, बेहतरीन कैच लब का, और एरिस की पारी समाप्त हो चुकी है। दोनों आरंभिक बल्लेबाज पेविलियन वापस लौट चुके हैं। नंबर 4 बल्लेबाज रंजीत का आगमन इस वक्त होता हुआ, और तंजीम का वो बेहतर कैच एरिस को पेविलियन का रास्ता इस वक्त दिखा चुका है। तो इस वक्त
विनोद पोलार्ड काफी सफल अब तक साबित हो चुके इस ओवर में, सिर्फ एकमात्र रन उन्होंने प्रदान किया है। नए बल्लेबाज रंजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। द लास्ट बॉल इन दिस ओवर इज नाउ कमिंग अप फ्रॉम विनोद पोलार्ड टू रंजीत, और रंजीत इस वक्त सामना करते हुए विनोद पोलार्ड की ओवर की अंतिम गेंद का। यह गेंद स्वीप करना चाहा, फैंटास्टिक डिलीवरी, विकेट कीपर ने तेजी के साथ इस वक्त विकेट झटका दिए। इस वक्त अंपायर इशारा कर चुके हैं तीसरे अंपायर के लिए, और बेहतरीन गेंद थी। और यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था, गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहता, और जब विकेट कीपर संतोष बंटवाल ने विकेटें उखाड़े तब देखना है कि बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर था या नहीं। और इस वक्त काफी नजदीकी मामला, स्क्वायर लेग अंपायर ने तुरंत इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए यह निर्धार को सौंपा, और देखना है कि तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार यहां पर देते हैं। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन ओवर विनोद पोलार्ड का यहां पर समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ एक रन उन्होंने प्रदान किए हैं, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 15 रन, और 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है क्लोज एंगल, और जब संतोष बंटवाल गेंद को स्टंप्सों पर लगा रहे थे, बेल्स डिस्टर्ब हो रहे थे, तब देखना यह कि बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं। तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहां पर करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। No doubt is the call, and the batsman survived. 2 overs completed, 15 for 1, and a fantastic over came to from Vinod Pollard. Just 1 run came from this over, and he's got the wicket of Aris. And after 2 overs, KGF Kings are 15 for the loss of 2 wickets. Both openers are now already back into the pavilion. And now the bowler starts a fresh over. Santosh Bantwal brought into the attack from that side end. संतोष बंटवाल नया ओवर प्रारंभ करते हुए, मनोज शेट्टी और अश्विन राज पुजारी एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। संतोष पहली गेंद लेकर तैयार रियाज के लिए, यह गेंद को उछाल दिया रियाज ने खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, वाइड लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर आए, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, इस वक्त थ्रो किया, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन फील्डिंग इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन के फील्डर ने की। इस वक्त अंतिम आकार, इस वक्त 8 से 10 कदम दौड़ उन्हें जरूर लगानी पड़े अपनी बाईं ओर, लेकिन गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल, और इस बीच 2 मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर, 17 for the loss of 2 wicket at the start of the 3rd over. In fact, संतोष बंटवाल इस बार स्ट्रेट बॉल, गेंद को उछाला जरूर, लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। कोई फील्डर वहां पर नहीं, और पॉइंट से फील्डर जब तक दौड़ कर कवर पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। Once again, couple of runs added to the total, and with that couple of runs, the scoreboard moving up to 19 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. 2 गेंदों पर 4 रन बटोर चुके इस वक्त रियाज, और अगली गेंद लेकर तैयार। जमीन के सहारे गेंद थी इस वक्त, गेंद को स्वीप कर दिया इस वक्त मिड विकेट पर, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। सेंसिबल बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हुए क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज रियाज और रंजीत। वो जानते हैं 2 बेशकीमती विकेट उनके गिर चुके हैं, अरशद बजाल और आरिस के रूप में इस वक्त उन्हें एक साझेदारी निभानी है, और इस वक्त वो क्रीज पर जमने की, क्रीज पर टिकने की पूरी कोशिश करते हुए। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और इस बीच गेंदबाज संतोष बंटवाल अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त कवर पॉइंट पर, और इस बीच मिस फील्ड वहां पर, और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए तौर पर रियाज के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रो धीमा, और बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। couple of runs added to the total, और जहां तक सवाल है 2 रनों का, तो स्कोर बढ़कर इन 2 रनों के साथ अब पहुंच चुका है 22 ऑन द बोर्ड। ऑफ स्टंप से काफी बाहर संतोष की गेंद थी इस वक्त, वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 23 रनों पर। 8 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं गेंदबाज इस ओवर में, और इस ओवर में 5वीं बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव करते हैं इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। काफी लंबा दौड़ लगाते हैं फील्डर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड करे, लंबा दौड़ लगाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। इनसाइड आउट क्रिकेट इस वक्त खेला था बल्लेबाज रंजीत ने, और 2 रन इस वक्त बटोरने में सफल। 25 रन बन चुके हैं, 25 ऑन द बोर्ड। स्ट्रेट बॉल लेफ्ट दिस ओवर, और संतोष बंटवाल ये गेंद इस बार ड्राइव किया एक बार फिर से, लेकिन इस बार सिर्फ
एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर पर एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। एक बेहतर ओवर अगर केजीएफ किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है 12 जिसमें 12 रन बने 12 runs came from the last over 11 runs in fact 11 runs came from the last over and because of this over KGF Kings looking in a good situation except they lost their two vital wickets in the face of Arshad Pajal and Aris they are looking pretty well 26 for 2 after completion of 3 overs और 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में KGF Kings के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो यानी अगला ओवर प्रारंभ हो आगे का देखा आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अब माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ और चौथा ओवर यहाँ पर शुरू होने जा रहा है और माइक्रोफोन पर आइए सतीश धन्यवाद थैंक यू। Thank you so much, Gopi. And KGF Kings up to a very good start. Even they lost 3 wickets, but they got a very good run rate, 26 in 3 overs. Here comes the first ball. Vinod looking so good in this particular match with the ball. Picked up a major wicket, the wicket of Arshad Bajal. And first run from the bat of batter Ranjit picked up a single. With that single, Skoban moves on to 27 for the loss of 3 wickets. Both Riaz and Ranjit have to rebuild the innings. This time, a lovely shot. This is a Riaz for you. He's absolutely looking so good in this KUDLA Premier League. He's getting all that olden days, the memories is absolutely repressing in this KUDLA Premier League. This is a kind of cricketing stroke when he was going in a good gun when he is in a form. This has been outstanding struck there from Riaz. What a shot. The leg cutter of Vinod Pollard almost in the middle stump, but he absolutely drags it down to mid-wicket boundary for 4 runs. .31 on the board with that boundary. Riaz. Again, you look at stroke. It absolutely drags it from the middle stump. Again drives that one straight to the mid-wicket. Misfield there by the fielder. Satish at short mid-wicket. Not an easy condition under floodlight. It's always a challenge for the fielder. One more single is been added. Total 32 on the board for the loss of 3 wickets. Oh, what a delivery. What a delivery. This is absolutely flum in front of wicket. No doubt at all. Almost squared him up with a beautiful delivery. Just have a look at it one. It's what you call the manne ka billi, manne ka meow. Because the same kind of deliveries he loves to bowl. That this man, Ranjit, bowls such kind of leg cutters. He's also picked up that kind the wickets of the opposition bowling such kind of leg cutters. And same delivery you can see here from Vinod Pollard. Beautifully bowled. Executed is very well. Pitching in a line, squared him up, forcing the batsman onto the back foot and finding himself right in front of middle stump. This has been outstanding delivery coming from Vinod Pollard. One big difference in these two bowlers. Ranjit always loves to bowl the quicker leg cutters, but not Vinod Pollard. He loves to bowl the slow leg cutters. This has been outstanding delivery. Appeal coming from the wicketkeeper behind the stump, but not in a confidence. Not in such a confidence. We can see Vinod Pollard is not going up, but wicketkeeper going up. And he uprooted the stump. At once he asked for the stump out, quickly realizing, then he's asking for the umpire for the caught behind, but umpire told it's not out.
The square leg umpire is very confident enough that the batter's back foot is absolutely inside the line. This is what we are watching here. How important is going to be the wicket of this man, Riaz. Man who got the highest rate in the bidding came into bat here. When 1 ball, 4 runs required, the man is dispatched that one into the long on. And he's justifying why he's paid for that 30,000. Oh, once again, opportunity of run out is missed out. My goodness, can you this? You can't miss this opportunity. Imtiaz, the fielder, always very quick and accurate, but in this occasion, he couldn't manage to collect the ball neatly. The lucky that Riaz is absolutely survives. So it's 33 for 3. All Nelson in the scoreboard. 3-3-3-3. After completion of 4 overs. Some great message which is coming from through Water, the water boy, and all-time 12th man, Hanif, ready to bring the water. And you are thinking about he's bringing the water, but he's getting some message from the coach, the mentor, even the captain. Now 2 Riyas out there in the middle. 2 Riyas out there in the middle. One is experienced Riyaz, another one is a fantastic all-rounder Riyaz. The 4 overs which comes to an end. There's a fantastic scenario here in this UCG cricket ground. It's a jam-packed stadium. The KUDLA Premier League 2026 season 10 is in progress. Now bowler brought into attack from the far end. Harris looks like Harris brought into attack. Ashwin Raj, Pujari and Manoj Shetty and wait and see how Harris will going to bring some restriction in the flow of the runs. Needed some good over here for the team Red Wings Rangers. Winning team will going to through to the finals of prestigious KUDLA Premier League Season 10. Swept the ball, very nice in the gap. They're running hard. Riaz sub definitely will come back for the second. In comes the throw, but not good enough. Excellent cricket here from Riaz. These are 2 Riaz out there in the middle. And of course, more than the Riaz Junior, you need to appreciate Riaz Senior. Because the way that is running between the wicket is absolutely perfect example for the youngsters. Definitely it might be the double age of Riaz. And if you see that these 2 batters, not double but almost. It's 35 on the board. Here comes Harris, right arm over the wicket, he balls. Reverse sweep, this time we're going to get a one single. The protection has been given in the deep, in the gully. Chetan, the fielder, one of the better fielder and got a good arm. Going against his throwing arm is always asking for trouble. That's why Riaz just a little settle for a single. 36 on the board. Harris from the Manoj Shetty and Ashwin Raj Pujari and right arm over the kitty balls. It's going to be umpire saying, how can I give out you right in front of me? This is absolutely big loss. Now umpire saying that the one warning has been given for the bowler. Leg by call. Just have a look at the delivery which is absolutely coming into the batter. Maybe the Riaz, maybe the lucky there. The bowler always going to lose the wicket when you are coming right in front of umpire. Again, lovely sweep shot played in the gap. Again, there couple of runs. Riaz is so quick to react to that couple. Intelligent cricket is not like you're only looking for the boundaries and six, but this kind of intelligent cricket is very much required in the mid stage of the innings. The fireworks begins here. It's a 39 on the board. Harris again. Right arm over the kitty balls. Oh, lovely shot. That was absolutely glorious. This is absolutely glorious and poetry in emotion. This is the poetry in emotion. It's not an easy stroke to play in the book.
Especially we are coming to the underarm cricket. It's so difficult stroke to play. The square of the wicket, only few players has got a potential of playing such kind of cricketing strokes. Have a look at that on replay. How easily done that. Fantastic. Just have a look at that. Just opening the blade and then played it little bit square cut. Fantastic stroke there from Riaz. It's 43 on the board for the loss of 3 wicket. What a partnership here between two Riaz in the middle. They wanted to go for the sweep shot. They're going for the quick single. Chance of run out. Oh my goodness. It might be the close one. Sabit, the wicket keeper, tried to hit the stumps in the non-striker's end, but both the batters so quick to react to that one. One more better over from the point of view of a team KGF Kings. It's 44 for 3 after completion of over number 5. The good score on the board. This is qualifier number 1 of KUDLA Premier League Season 10. Defending champion KGF Kings. It's right above the wicket again. Played it very nicely into the square leg region. They wanted to come back for the single, but they were going to settle for a single. So Harris Pane Mangalore and chief guest for this prestigious cricket tournament is here. Welcome for him on behalf of KUDLA Premier League organizer, friends who are registered. Drives that one, but not really able to get that one from the middle of the bat, but good enough for him to pick up a single. With that single scope, moves on to 46 on the board. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪಾನೆಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So umpire calling, it's exceeds the time limits, the fielding team. It's 46 on the board. Chetan, can he manage to bring some good deliveries here for the team to restrict the runs? But this man is looking in great touch. Riaz, NM. This time picked that slow delivery. But luckily that ball didn't carry to the fielder, but good enough for the comeback for the second. Now look at the Riaz innings here. There's so many couple of runs you can see here. This is what the quality of some good players. They not only believe with that the big shots like a boundaries and 6, but sometime they need to look for that rotation of strike. Clever cricket, intelligent cricket, placing the ball in the gap, converting single into 2, 2 into 3 is always the great cricket to watch. It's 48 now, they're cruising towards the 50. Here comes Chetan again, bowling right arm over the wicket. Drives that one. Now they're going to come back for the second. This is what I'm talking about. This is what I'm talking about. The 50 comes up here for the KGF Kings. The 50 comes up in this qualifier number 1. It's been outstanding cricket so far there from Riaz, both Riaz. This has been a great, I already mentioned about the running between the wicket more than the Riaz NM. And just what see. Now Riaz Senior maybe looks like he will go into retired hut. I think it's a good move. Retired out, it is not a retired hut. It's going to be retired out. He can't continue. Because maybe this looks like so tired. It's not a bad decision, I want to tell you, because someone need to have some run quickly between the wicket. But really standing ovation coming from dugout
for Ria's way that is batted in this very important match. 50 on the board. Red Wings Rangers, there's also got some good players in the side. Informed batsman Santosh and some good names. We can see the big names in their batting department. They can be a very effective. Even the 50 is a good score under light. But you can't say anything in cricket. Drives nicely in the gap into the extra cover region. This time again. Oh, it's gone. Now we need to see which batsman is going to be out. Now it's going to be very interesting which batsman going to be out. Will it going to be Riaz or will it going to be the new man? Looks like Riaz the batter is been out. Riaz the batter, he have to need to go back. Now along with the DJ, now you are coming here. The Nasik band is absolutely again electrifying the atmosphere. This is what the combination of DJ and Nasik band. DJ Lara is in operation of DJ. Did a great job in providing the sound system. Always leading from the front, especially for KUDLA Premier League. Here comes next delivery, chance here for the field. No one there in the cover point. So lucky escape of the new batter. Now they're looking for the third. Now looking for the third, but it just looks like the formality is done here. So they will going to finish. They will going to finish with the total score of 53 and a set a target of 54 to win the match. 54 to enter the grand finale of KUDLA Premier League Season 10, which is proudly presented by President Friends who are registered under the great leadership of Tilak Guru. Now I think the KGF Kings must be very happy to see that scoreboard. But Red Wings Rangers Kunjat Bail have to do a lot in the batting performance. They will not more believe with the batting of Harris. A lot more believing with the batting of Santosh Bantwal. The man is a key man. If they wanted to get this total, this man have to talk with his bat and wait and see. The reply from the Avengers, Rangers. Before the innings will going to start here for the Rangers, and time for Gopi to take over the microphone and Majid Malur is here to get some entertainment in the first 3 overs. Is going to be very interesting. And Majid Malur, welcome back once again to this prestigious cricket tournament and the very, very important innings. What do you think about the batting order of the team Rangers? You are just talking about Santosh Bantwal, Harris. The two key player have to play a big role in this match because they have to get a 54 to win this match to get into the final. And looks like it's going to be the big target to chase down. But if Santosh Bantwal and additional 2-3 batters will go into play their innings, what they're knowing for, I think this match is definitely going to be more interesting. It's over to Majid Malur. Thank you.
ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರಿಗೆ. ಕೆಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿ 10 ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 54ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಲು ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್ 36ಕ್ಕೆ 54 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಲ್ಲದೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬಬರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ದಂಡನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಪಿಎಲ್ 10ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಡುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗ ರಂಜಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್. ಸತತವಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ರಂಜಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವೈಫಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1ರಲ್ಲಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 1 ಒಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಆರಂಭಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಳಿಗಾರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟವನ್ನಾದರೆ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 54ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಆಡಿಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನ ಸಜ್ಜುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನಿಸಿದಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ಜೀಮನ ಕಡೆಗೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ದಾಂಡುಗಾರರು. 5ನೇ ಚೆಂಡು ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿದ ವಿಕೆಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮನ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನಾದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕ ದಾಂಡುಗಾರ ತನ್ಜೀಮ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡಲು ಆರೀಶ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರೀಸ್ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ತನ್ಜೀಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆರೀಸ್ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ರಂಜಿತ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೋಡಿ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಿಂಗ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಭರವಸೆ ದಾಳಿಗಾರ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಸ್ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರಂಜಿತ್ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಕವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಜೊತೆಗೂಡಲು ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಶಾಬಿತ್ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ
ಸಂತೋಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ದ್ವಿತೀಯವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಎನ್ಎಂ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 54 ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿಗೆ 1 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು 53 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರಿಯಾಜ್, ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸಂತೋಷ್ ರಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಈ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ. ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಎನ್ಎಂ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ದಂಡನ ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತಬೇಲ್ ತಂಡ ಸಾಬೀತ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರ್ವೇಗದ ದಾಳಿಗ ರಿಯಾಜ್. ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು, ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳು ಸಾಬೀತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಂತೋಷ್ ದೊಡ್ಡ ಬಡತವನ್ನ ಒಡೆಯಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆವೃತ್ತಿ 10ರ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿದು, ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭ 1ರ ಒಳಿಕ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಚುರುಕಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತಬೇಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ಬಂದಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷನ ಕಡೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ ರಿಯಾಜ್ ಹೆಸರುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6-2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ಸಾಬೀತ್ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಇರುವಿಕೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಆಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 54ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರಿಯಾಜ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್. ನೆಹಲ ಮಟ್ಟದ ವೇಗದ ಬೀರುಸಿನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7-2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಪಿಎಲ್ 10ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅತಿಥಿಗಳ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಬೆಂಜನ್, ರಾಕೇಶ್ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣೇಶ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ತಮ್ಮ ಆಗಮನವಾಗಿ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸುವ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಪಂದ್ಯ. ಕೆಜಿಎಫ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಶೀರ್ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಿಂಗ್ ತಂಡ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಶೀರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ದಂಡುವಿನ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಎಸೆದಂತ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಓವರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 7ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಂಜಿತ್ ಸಾಬಿತ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಮಗದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ದಾಳಿದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಂಜಿತ್ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಲಿಂಬಿ, ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ನವೀನ್ ಬಂಜನ್ ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಬಡತವಿದು, ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವಿದು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜಿತ ಬೈಲ್ ತಂಡ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 54ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಸಂತೋಷ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು. ಸಾಬೀತ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಂಡನ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿದೆ. ರಂಜಿತ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಭರವಸೆ ದಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಭರವಸೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇನೆ. ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಸತತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ, ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರೆ, ಅನುಭವ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿದೆ. ರಂಜಿತ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷನ ಕಡೆಗೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಿಂಗ್ ತಂಡ. ವೀಕ್ಷಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಮುಂದಿನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Dhanyawad Majid bhai. So really a difficult time continuing here for the batsmen of Red Wings Rangers Kunjat Pail. Just 11 on the board, 3 overs completed. और संतोष बंटवाल इस वक्त क्रीज पर मौजूद है. जहां तक रेड विंग्स रेंजर्स कुंजत पैल के विजय तक पहुंचने का सवाल है तो संतोष बंटवाल की उपस्थिति पारी के अंत तक उनके लिए बेहद जरूरी है. और इस बीच संतोष बंटवाल सामना करते हुए अरशद बजाल की गेंदों का चौथा ओवर शुरू होता हुआ. जस्ट 11 on the board, 54 the target. That means 43 more runs now they have to score for victory in remaining 3 overs. 18 गेंदे 43 रन चाहिए. और इस बीच अरशद बजाल ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद संतोष के लिए. गेंद को उछालना चाहा इस वक्त अंतिम क्षण में. गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से, शायद लेग स्टंप से कुछ बाहर निकल. काफी जोरदार अपील इस वक्त जारी है. और अंपायर जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम क्षण तक वो रुके हुए हैं. और जहां तक सवाल है रनों का तो 1 रन दौड़कर इस वक्त पूर्ण कर. और अब तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है. अंपायर, थर्ड अंपायर फॉर व्हाट?
There is no review for leg before. No review for leg before wicket. There is no ultra edge system and there is no DRS. तो अगले साल जरूर कोशिश करेंगे डीआरएस और अल्ट्रा एज सुविधा उपलब्ध होने के लिए। तो जरूर यहाँ पर संतोष बंटवाल बच चुके हैं। और जहां तक सवाल है गेंदबाज का, तो गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अरशद बजाल इस वक्त तैयार। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का साबित सामना करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज साबित के लिए अगली गेंद। ये गेंद इस बार अंदर की ओर आती हुई गेंद बैक टू दिस कुड बी इन ट्रबल। इन फैक्ट इज बैक टू हिज क्रीज वेरी सेफली इन द एंड। और जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम क्षण में गेंद को ढकेलना चाहता स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन बैक टू द बॉल की दिशा में गेंद को ढकेला, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। और जहां तक सवाल है इस वक्त 16 गेंदें बाकी और 42 रन चाहिए। 42 runs to get in remaining 16 deliveries. Absolutely a difficult time progressing here for the batsmen of Red Wings Rangers कुंजत बैल। और इस बीच अरशद बजाल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और बल्लेबाज जो कि दाहिने हाथ के साबित इस वक्त सामना करते हुए अरशद बजाल की गेंदों का ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद इस वक्त निकल चुकी है शॉर्ट थर्ड बैन पर। और बाई का इशारा इस बीच अंपायर का और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर 13 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट। निश्चित रूप से यहां पर चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है रेड विंग्स रेंजर्स को कम बैक करने के लिए। और संतोष बंटवाल इस वक्त कोशिश संपूर्ण करते हुए चौके और छक्के लगाने की। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार अरशद बजाल संतोष के लिए ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को उछाला लंगोन पर और गेंद लंगोन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। This is an absolutely fantastic struck after being comes down the track. Have a look at this in the replay. This is a clean helicopter hit and he just got that one for a maximum. और जरूरतमंद छक्का इस वक्त लग चुका है। तो इस बीच उम्मीदें बरकरार और संतोष बंटवाल इस वक्त धीरे धीरे चार्ज संभालते हुए यहां पर। और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रन 19 ऑन द बोर्ड नाउ। दैट मींस 35 मोर रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। अगेन ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग की दिशा में, नहीं मिड ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया है। जस्ट सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर। तो डेड इस वक्त घोषित करते हुए और जानबूझकर इस वक्त पैर पर गेंद को टकराने दिया था। और जहां तक सवाल है इस वक्त डिलिबरेट और इसी के साथ नो रन स्कोर्ड। 1 ball left in this over. So this is going to be very interesting. संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। और सो स्टिल 1 ball left और अरशद बजाल इस वक्त तैयार है और संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करते हुए एक और छक्का निश्चित रूप से रेड विंग्स रेंजर्स को कुछ हद तक इस मैच में वापस ला सकता है। और इस बीच संतोष बंटवाल छक्का लगाने के बाद काफी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए। द स्कोर स्टेज एट 19 और गेंदबाज इस वक्त तैयार। गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट संतोष के लिए गेंद इस वक्त स्वीप करना चाहा, विकेट कीपर इरशद चुके और गेंद 1 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल। संतोष बंटवाल कीप्स द स्ट्राइक and 4 overs completed. It's 19 for 2. 20 for 2 in fact. 20 for the loss of 2 wickets. So 34 to get in remaining 2 overs. 12 गेंदें बाकी 34
रन चाहिए। और संतोष बंटवाल इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा रेड विंग्स रेंजर्स की उम्मीदें यहाँ पर बरकरार रख चुके हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अश्विन तमन्ना जो कि गेंदबाजी शुरू करते हुए कम से कम 18 से 20 रन इस ओवर में बटोरने होंगे यहाँ पर अगर कम बैक करना रेड विंग्स रेंजर्स को इस मैच में। और अश्विन तमन्ना गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए संतोष बंटवाल जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद आगे निकले, गेंद को चिप किया, इस वक्त गेंद जाती हुई मिड ऑन की दिशा में, रियाजत तेजी के साथ गेंद पर लपके और एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और सामना करते हुए इस वक्त साबित अश्विन तमन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए साबित के लिए परफेक्ट लेकट, दिस इज आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, शफल होते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ, 10 गेंदें बाकी, 33 रन चाहिए। और अश्विन तमन ने एक बार फिर से तैयार, फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ पर, नॉट क्वाइट मिडल गेट, इन फैक्ट इज जस्ट गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर। 3 बेहतर गेंदें अश्विन तमन इस ओवर में फेंक चुके हैं। और संतोष बंटवाल इस वक्त बैक ऑन स्ट्राइक सामना करने के लिए तैयार। अश्विन की गेंदों का ये गेंद इस बार संतोष बंटवाल का चौक, इट्स गॉन मेनी माइल्स, इट्स अ बिग hopes are still alive for Red Wings Rangers with this 6. Have a look at this in the replay. This is an absolutely fantastically played with a reverse shot and he just got that one right from the middle of the bat. और now 20 to get and now once again संतोष बंटवाल गेंद को खेल दिया इस वक्त, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं, थोड़ी सी मिसफील्ड, प्रेशर ऑन द फील्डर और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। संतोष बंटवाल स्टिल बैक ऑन स्ट्राइक। नाउ द स्कोर इज 36, दैट मींस 18 रन्स टू गेट फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 7 डिलीवरी। 7 गेंदें 36 आता 36 not 18 54 is target. ये था रन अब का पार्डन इज 30 ऑन द बोर्ड और 30 in fact the score now 24 required इन रिमेनिंग 7 बॉल्स। और संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करते हुए और गेंदबाज अश्विन तमन इस वक्त तैयार, यह गेंद लेग से बाहर की ओर निकलते हुए विकेट की पर चुके और गेंद जाते हुए कवर पॉइंट की दिशा, मिड विकेट की दिशा में दूसरे रन के लिए बल्लेबाज तौर पर 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी अ वाइड डिक्लेयर्ड, दैट मींस 3 runs added to their total. Straight away the bowler is now under pressure. Now the score is 33, that means 21 run required in remaining 7 balls. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇರುವ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ಗೆ SDC ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ। तो इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार है इस ओवर अंतिम बार, ये गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर गेंद निकलती हुई और जहां तक सवाल है इस वक्त छोटा मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया है। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े संतोष बंटवाल की स्ट्राइक, दूसरे छोर पर विकेट जरूर गिर चुका है, तो रिव्यू यहां पर लेना चाहते हैं अंपायर वाइड के लिए, तो वाइड इस वक्त घोषित कर चुके हैं। तो अश्विन ने खुद कहा कि ये वाइड है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने दिखाई थी। और जहां तक सवाल है इस वक्त SDC ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ। 35 on the board, that means 19 runs to get from 7 balls now. संतोष बंटवाल इस वक्त उम्मीद की किरण नजर आते हुए रेड विंग्स रेंजर्स कुंजत महल के लिए। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर, कुछ मजाक उन्होंने किया हनीफ के साथ जो कि ऑल टाइम
12th प्लेयर है केजीएफ किंग्स के लिए। इस वक्त पानी लेकर मैदान पर उतरे थे और अब अंतिम गेंद बाकी। इस ओवर में कुल मिलाकर रन्स कितने बन चुके हैं देखना पड़ेगा। और इस ओवर में अंतिम बार अश्विन तमन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। अश्विन तमन गेंदबाजी करते हुए संतोष बंटवाल के लिए यह गेंद, इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट टच मैन पर। 1 रन मिलेगा। संतोष बंटवाल once again keeps strike. Now last over remaining and they have to score 18 runs to get from last over. 18 रन चाहिए। तो सतीश आइए माइक्रोफोन पर आपको बुलाते हैं, क्या समझते हैं इस वक्त? 18 रन संतोष बंटवाल के पास स्ट्राइक है और निश्चित रूप से रेड विंग रेंजर्स के लिए ये एक धनात्मक प्लस पॉइंट यहाँ पर साबित होगा। Exactly, Gopi. The way that Santosh Bantwal is absolutely showing his courage. He's not really given up this match. He's absolutely trying his level best to get into this last over. Of course, it's going to be very, very interesting. The 17 runs needed. 17 runs needed from the last over, Gopi. And having Santosh Bantwal in the middle, I think 18 needed from last over. Having Santosh Bantwal in the middle, the match is not yet over. Of course, we are only talking about the 3 maximum is good enough in 6 ball. But under floodlight, it's not easy. But for Santosh Bantwal, because the way that he is having a form in the present season, it can be a possible here for Santosh Bantwal. And wait and see how well you going to get, how he will going to try for that 18 runs. बिल्कुल सतीश, 18 रन चाहिए अंतिम ओवर में। पिछले ओवर में अश्विन तमन के 16 रन बने। 16 रन फ्रॉम द लास्ट ओवर फ्रॉम अश्विन तमन और यहाँ पर 18 रन चाहिए और पहली गेंद लेकर गेंदबाज कार्तिक तैयार। संतोष बंटवाल इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद और निश्चित रूप से उनके दिमाग में यह कश्मकश जरूर चल रही है कि किस तरीके की बल्लेबाजी बैटिंग इस वक्त अपनाई जाए अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल पिछले ओवर में जो 16 रन बने थे उस ओवर की बदौलत कुछ हद तक कहना पड़ेगा रेड विंग्स रेंजर्स कुंजत बैल इस मैच में वापस आ चुका है। दर्शकों से लगभग मैदान इस वक्त भर चुका है। दर्शक खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर इस वक्त रुक चुका है और देखना है कि कार्तिक जो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करने जा रहे हैं किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर करते हैं और संतोष बंटवाल जो कि सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। फर्स्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और इस बीच कार्तिक पहली गेंद लेकर तैयार संतोष बंटवाल के लिए 18 टू गेट फ्रॉम 6 डिलीवरीज। Here we go. दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑप्शन से काफी बार गेंद पोजीशन तर्जमान पर निशाना डायरेक्ट हिट इज गॉन। ही इज गॉन दिस टाइम। वाइड का इशारा। सो 1 रन एडेड एंड अ विकेट लॉस और संतोष बंटवाल यहां पर दूसरे बल्लेबाज को डांटते हुए कि उन्होंने रन क्यों यहां पर पूर्ण नहीं किया। और जहां तक सवाल है इस वक्त 1 रन मिला। अब इक्वेशन स्टैंड्स 17 टू गेट फ्रॉम 6 डिलीवरीज और यहाँ पर देखने वाली बात यह सतीश है कि संतोष बंटवाल इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। Well, Gopi, I have not really understand why Santosh Bantwal is going for that run because already they got 1 run and why there is one. Maybe Santosh Bantwal thinking about they wanted to get a second run after completing the first run. If he stays in the crease, it can come for the second again. And but Rizwan is absolutely his absence of mind. He's not trying for the run. They not only lost 1 extra run, but they lost the wicket of Rizwan. And more than big loss is Santosh Bantwal out of the strike. This is a huge difference in this last over, Gopi. बिल्कुल सतीश, यहां पर संतोष बंटवाल ऑफ द स्ट्राइक हो चुका है। संतोष की योजना यह थी कि पहला रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरे बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन पर सैक्रिफाइस करें। तो यहां पर उनकी योजना पूरी तरह इस वक्त विफल हो चुकी है और अक्रम इस वक्त स्ट्राइक पर आते हुए और इस बीच अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट। तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। 17 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 6 डिलीवरीज। 37 ऑन द बोर्ड और जहां तक सवाल है इस वक्त 6 गेंदें 17 रन चाहिए विजय के लिए और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। कार्तिक गेंदबाजी करते हुए अक्रम के लिए इस बार अक्रम ऑप्शन से बाहर एक बार फिर से शॉट फाइन लेके दिशा में गेंद पहुंच चुकी है वाइड। 1+1 2 runs added to their total. Straight away the bowler is now under pressure और अब the equation stands 15 to get from 6 deliveries and the main thing is that Santosh Bantwal is now back on strike. Well, Gopi, everyone is under pressure and the penultimate over ball by Ashwin Thaman is absolutely under pressure. And now the new bowler coming here from the far end, Karthik, is also feeling some tremendous pressure. This is what the pressure is built by Santosh Bantwal. The ability of his hitting the ball has been outstanding. Now he's back in the strike, Gopi.
Again, the match is widely open here for the team Red Wings Rangers Kunjat Bail. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर मैच में लगभग वापस आ चुका है। जहां तक सवाल है कार्तिक का, तो इस वक्त उन्हें फेंकने हैं 6 बेहतरीन गेंद और देखना है कि वो इस वक्त इस ओवर में संतोष बंटवाल पर नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। 15 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी, 15 टू गेट फ्रॉम 6 डिलीवरीज और ओवर की पहली गेंद अगली गेंद लेकर इस वक्त कार्तिक इस वक्त तैयार, पहली सही गेंद की तलाश में, अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट संतोष के लिए, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा इस वक्त अपील, लेकिन जहां तक सवाल है रनों का, तो रन्स मिलेंगे 1 और संतोष बंटवाल इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े। इंटेलिजेंट थिंकिंग, एब्सोल्युटली इंटेलिजेंट थिंकिंग इस वक्त गेंदबाज द्वारा। विकेट कीपर के हाथों में गेंद फेंका था, वहां पर रन आउट होने की संभावना थी, लेकिन विकेट कीपर चुके और जहां पर 2 रन मिले। Satish, funny things is happening here. Absolutely, Gopi. It's a comedy of error from the team KGF Kings. What really doing they here? They are absolutely looks like they're tremendous pressure they're feeling. Everything is going wrong, but everything is right here for the team Red Wings Rangers. What could be a certain chance of run out? They not only missed the chance of run out, but they got given away 2 runs and brought again Santosh Bantwal into strike. He is the danger man. बिल्कुल सतीश, अब इक्वेशन स्टैंड्स 13 टू गेट फ्रॉम 5 डिलीवरीज और संतोष बंटवाल इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद है। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, 5 बेहतर गेंदें इस वक्त कार्तिक को यहां पर फेंकने हैं इस ओवर में। और जहां तक सवाल है संतोष बंटवाल का, तो इस वक्त 13 रन चाहिए 5 गेंदों पर, 5 balls 13 runs required. So 13 runs required from 5 deliveries. Here we go. Ugly can लेकर तैयार. Left and misses. They go through a kick single. In fact, this could be in trouble. In fact, they come back for the second and get it comfortably at last. 2 runs once again added. The pressure is now building up on fielder. Now, once again, Santosh Bantwal back on strike. 11 to get from 4 deliveries now. What a match. What a fantastic match is now progressing here. और इस वक्त खिलाड़ी जो कि डरते हुए यहाँ पर विकेट कीपर को, क्योंकि उन्होंने विकेटों के पीछे गेंद को गैदर क्यों नहीं किया। और जहां तक सवाल है 11 रन, 10 for tie, 11 for win। तो जहां तक सवाल है 11 रन चाहिए, 10 रन बनाते हैं तो मैच टाई होगा, 11 रन बनाते हैं तो मैच जीत जाएंगे। गेंदें बाकी हैं सिर्फ 4 और संतोष बंटवाल अपना 100% 100% प्रयत्न यहां पर करते हुए अपनी टीम को सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए। जहां तक सवाल है केजीएफ किंग्स का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए 4 बेहतर गेंदें और कार्तिक को ये 4 बेहतर गेंदें यहां पर फेंकने होंगे अगर बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त करना है तो। और इस बीच दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ संतोष बंटवाल गेंद की परीक्षा करने के लिए इस वक्त गेंद की मांग की उन्होंने, और गेंद की परीक्षा करने के बाद एक बार फिर से गेंद को गेंदबाज के हाथों में लौटाते हुए 11 टू गेट फ्रॉम 4 डिलीवरीज। द प्रेशर इज द बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। और इस बीच कार्तिक दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए संतोष बंटवाल के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची, फील्डर पीछे तैनात, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन पूर्ण कर चुके। यहां पर स्ट्राइकर पर मौका था रन आउट का, लेकिन नॉट सेकंड पर थ्रो करना चाहा अरशद बजाल ने और यहां पर 2 रन यहां पर मिल चुके हैं। अब 9 to get from 3 deliveries. What a match. This is an absolutely outstanding match is now progressing here. And संतोष बंटवाल इस वक्त जहां तक सवाल है स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। अब ऐसा कहना पड़ेगा 3 गेंदों में बनाने हैं 9 रन और मेरे ख्याल से इस वक्त संतोष बंटवाल कुछ हद तक थके इस वक्त नजर आते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त देखते हैं अगली गेंद पर किस तरीके की बल्लेबाजी वो यहां पर अपनाते हैं। तो 9 रन इस वक्त जरूरत, 3 गेंदें बाकी और गेंदबाज कार्तिक इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त संतोष बंटवाल के लिए। और इस बीच संतोष सामना करते हुए कार्तिक की गेंदों का, दाहिने हाथों पर विकेट अपनी ओवर की अगली गेंद, चौथी गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष के लिए। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त, गेंद थर्ड बॉल की दिशा में से बेहतरीन फील्डिंग, नहीं गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। 5 to get from last 2 deliveries। और ये स्ट्रोक जो था सतीश, absolutely magnificent stroke played by Santosh Bantwal। Well, what innings is playing here, Santosh Bantwal, absolutely playing the innings of his lifetime. This is certainly is going to be innings of lifetime if he's going to win this match for the team Avengers. Now, something is going on here. Santosh Bantwal, some arguing, having some conversation is going on here.
Now 2 balls remaining, 5 runs to get. और निश्चित रूप से इस ओवर में संतोष बंटवाल एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, क्यों सतीश? Exactly, what a batting display here from Santosh Bantwal. Absolutely outstanding. And this is a really interesting to watch. Maybe Santosh Bantwal claiming that the fielder, when he was turning for the switch, it maybe he's gone outside the circle. But wait and see. Here going to be a very, very interesting. Have a look at the crowd here. It's absolutely jam-packed stadium. And they're enjoying each and every moment of this prestigious cricket tournament. And qualifier number 1 is absolutely a memorable one in this KPL season 10. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर कुछ बातचीत जरूर जारी है संतोष बंटवाल और अंपायर के बीच में। शायद बल्लेबाज ये कहते हैं कि जब संतोष बंटवाल स्विच हिट खेलने के लिए इस वक्त बल्ले को तिरछा डाला था, तब शायद पॉइंट पर जो फील्डर थे उन्होंने पीछे की ओर दौड़ना शुरू किया। तो इस वक्त संतोष बंटवाल इस वक्त क्रीज पर मौजूद और जहां तक सवाल है, इस वक्त सब कुछ सही सलामत, 2 गेंदे बाकी, 5 रन चाहिए, 4 for tie, 5 for win। और सतीश ऐसा करना पड़ेगा। Still I must say now it could be anybody's game. Now it's going to be anybody's game, and what a comeback. And from nowhere they came into this match. This Santosh Bantwal is the one man is absolutely as a one-man army here. And 5.5 K viewers watching live telecast of this qualifier number. This shows that popularity of Underarm cricket and popularity of KUDLA Premier League. बिल्कुल सतीश, 5.5 के व्यूअर्स आर वाचिंग। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने फरमाया, ये बात यह दर्शाता है कि अंडरआर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता रखता है, खासकर इस लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट उर्वा क्रिकेट मैदान पर, यूसीजी पर। तो 2 गेंदे, 5 रन, 4 for tie, 5 for win, 2 balls left। क्या होगा वक्त ही बताएगा। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दर्शकों की दिल की धड़कनें यहाँ पर तेज होते हुए, संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, इस वक्त गेंद निकल चुकी है थर्ड बॉल की दिशा में, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े संतोष बंटवाल का वितेज, और यहाँ पर दौड़ पड़े दूसरा रन 2 रन प्राप्त कर चुके हैं, 2 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। और इंटेलिजेंट थिंकिंग इस वक्त अक्रम ने की, जब तक संतोष बंटवाल स्ट्राइक रन पर नहीं पहुंचे उन्होंने क्रीज नहीं छोड़ा। तो निस्संदेह सतीश, चतुर सोच, इंटेलिजेंट थिंकिंग मेड बाय अक्रम द अदर बैट्समैन। Very intelligent thinking by Akram Gope. Absolutely not in this time, but in every couple of runs we can see Akram is absolutely showing his presence of mind, and but the fielding team showing their absence of mind. The two things happen. The two thing is happening here. If Akram will going to left the crease, Gopi, definitely Santosh Bantwal need to be in the dugout. And what a thinking, Gopi, what a thinking. This has been outstanding cricket. We are only thinking about this display of the batting performance, but it's a display of the intelligent thinking is also displayed in this chasing, Gopi. Exactly, Satish. Now 3 to get, 2 for tie, 3 for win. Last ball remaining. 1, 2, 3 का सीक्वेंस यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और 1 ball left, 2 for tie, 2 runs for tie, 3 runs for win। और देखते हैं यहाँ पर अंतिम गेंद पर क्या संतोष बंटवाल 3 रन बना पाते हैं, या फिर कार्तिक अंतिम गेंद को नियंत्रित इस वक्त कर पाते हैं। इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, कार्तिक मैच निर्धारित गेंद, 3 to get, 2 for tie, 3 for win। Here we go, last ball, और गेंद इस बार गेंद को खेलना था, और क्या छूट चुका है, बल्लेबाज दूसरे के लिए दौड़ पड़े, साइकिल पर थ्रो पहुंचा, और इसी के साथ KGF Kings are lost the match by a single run. Absolutely fantastic match came to an end. KGF Kings won the match thrillingly। और यहाँ पर देखिए संतोष बंटवाल को दूसरे फील्डर जो कि KGF Kings के खिलाड़ी इस वक्त शुभकामनाएं देते हुए, उनका अभिवादन करते हुए बेहतरीन पारी के लिए। और निश्चित रूप से सतीश एक बेहतरीन मेमोरेबल यादगार पारी यहाँ पर संतोष बंटवाल ने खेली है, क्यों सतीश? Exactly, Gopi. They came from nowhere. No one thought that this match is going to be that kind of thriller. No one thinking that it is going to be a nail biter. But the way that Santosh Bantwal is played an innings is absolutely one of the best innings in the KUDLA Premier League. But unfortunately, he couldn't manage to win for his team. But he won the heart of all cricket lovers. The way that he is played, and even Akram, you have to appreciate Akram and other players. They absolutely did a great job. But one-man army, Santosh Bantwal, once again showing his courage, showing his the potential, and showing his dedication and determination towards the cricket, and try to take his team into the final. But unfortunately, is lost by just a single run. Congratulations for KGF Kings being the defending champion. Once again, they came into the mega final, winning this match by a single run.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏರ್ STC ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ STC ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯಜವಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆವೃತ್ತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು. KUDLA ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಭಾವನೆ, ಇದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಇರುವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಗಣಸಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರು ತುಂಬುವ ವೇದಿಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಆ ಪಿಲಂಗೂರು ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ KPL 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದರು. 10 ವರ್ಷಗಳ KPL ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿತು. ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ KUDLA ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆಟ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು, ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಾಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿರಾಟ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ STC ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಐಪಿಎಲ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓರ್ವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ KUDLA ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತು ಬಂಗಾಲ್ ತಾವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಂತೋಷ್ ಬಂಗಾಲ್ ತಾವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು.
ತನ್ನ ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿವಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. KPL ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂದಿನ್ ಗುಲ್ಶೇಖರ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ DXP ಅವರಿಗೆ ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಟರ್ಪುಡೋಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮರ್ ಸಿಂಗ್ರವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಓರ್ವ ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮರ್ ಸಿಂಗ್ರವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಸಲ್ಮಾನ್ DXC ದುಬೈ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಾವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. KPL ಅಂತರ ಪರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಯಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತಮಗೆ KPL ಪರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಶಿವಗಣಪ್ಪನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೂರ್ವ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ ಅವರ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬುವುದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ದಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇವರನ್ನ ಅಜ್ಮಲ್ ಇವರು ಸಾಲು ಓದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೂರ್ವ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಪರವಾಗಿ ತುಂಬುವುದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So thank you very much, Gopi, and welcome back once again for the eliminator of KUDLA Premier League 2026 Season 10, and the match will going to start here. Winning the toss, captain of United URWA, the rightly elected to ball first against team Planet Air STC Jaipur. And opening batters already came into bat here. It's a little bit changes in the opening pair along with Nawaz lefty. It looks like Altaf Basavanagudi will go into start the innings. Here comes the first ball and nicely played it down. Extra coverage, and Tanveer is the bowler brought into attack from the far end. And the first ball is first run. The previous match, man of the match, which is goes to Ranjit of KGF Kings for his outstanding bowling spell. 2 overs, 1 maiden, picked up 2 wickets for just 2 runs, and this is outstanding bowling spell. Outside the run, off stump, wanted to go for the sweep shot. If team Red Wings Rangers they lost the match by single run, suddenly it's the man of the match is definitely Santosh Bantwal. Even though he was finished with a losing side, but he is the man of the match for every cricket lovers. The way that he's fought the innings and built the innings, one of the best innings of the KPL. Again, played very nicely into the long on. And before the fielder will go and return the ball, ample time for the batter to complete the single. Both the batters are started to deal with the singles. Very important not to miss the deliveries in the power play overs. Have to convert each and every balls into the scoring one if they wanted to get a good score here. Again, the lovely shot played from Nawaz. They played it very nicely. You know exactly where the fielder is. The protection has been given in the deep mid wicket and long off. And he just played the cross pattern, shook very effectively. Have a look at that one. You know exactly the idea where to play the ball. And he almost drags it from the outside the line of off time and picked it away down to deep square leg boundary for 4 runs. So one more single has been added to total. With that single scoreboard moves on to 7 on the board. 7 for no loss. It's going to be a confident start here from the team. Again, outside the line of off stamp. Excellent delivery to finish the over number first.
So equal start for both the team. It's not a bad over. 7 runs came from this over. Even the net out, not a bad start. It's not a bad start for the team SJC. And they got a good start with the 7 runs in the first over. So over number second will going to start from the commentary box, and Sharan brought into attack. The talented bowler did a great job so far in this bowling department. It's not an easy job to come and bowl in the power play. Now this is going to be a do-or-die match for both the teams. Have to deliver one more better over. This time going for the big one. Chance here for the fielder and Rajesh Hubar making no mistake at all. This is what the wicket United were desperately wanted in the beginning. This is the wicket they desperately wanted in this eliminator. The danger man, Nawaz lefty back in the pavilion. Sharan, what a tournament he's having from the ball. Again, he got a very good start from the ball. First ball itself is picked up a wicket. Thank you, DJ. And well. This is a wicket what the team wanted. United URWA, the Nawaz lefties got a very good start. Picked up a boundary in the first over. Looks like he can be the very dangerous in the eliminator. But picking his wicket definitely is going to be a huge success for the team United URWA. But this man he can be one more big man for the team. This time he played an exquisite shape shot. But fielder has done a great job in the deep. Excellent job. Just I want to see the fielder. Tanveer is a man who runs very quickly to his back. Yeah, even Shakir can't believe his eyes. He thought it may at least a couple of runs if it is not going to be a boundary. He thought it might be a couple of runs. But the way that Tanveer runs back very quickly to his back and denying the second from this batter. Altogether, very good cricket is going on here. And scoreboard now moves on to 8 on the board. Altaf Basavanagudi is on strike. Left arm around the wicket, swept the ball, going for the quick single. Tanveer is a one-hand pick up and throw. The single hand pick up and throw, but ball is with the wide throw came from the fielder. Both the ball batters so quick to react to that single and completed that single as well. 9 for 1 in the over number second is in progress. Sharan changing his angle because right hand batter is in strike. Left arm around the wicket. Oh, this is going to be a big one. The huge mistake there from the bowler Sharan as he bowls the wide. Not only wide but extra another run in the form of wide. 2 wides added to total with that extra double figure. 11 for 1 in the over number second is in progress for the team STC. Again, lovely delivery. This is a line you need to try, especially for the right-handed batsman coming into the batter. Not a big deviation in the delivery, but